Good morning, everyone. Warm welcome to Regulatory Bodies YouTube channel by Testbook. My name is Madhav Sir. I welcome you all in this wonderful session. We call it as a marathon session where we will be discussing the finance current affair based 300 MCQs from month of May to September. So May, June, July, August, September 5 महीने के करंट अफेयर्स हम कवर करेंगे इस पर्टिकुलर सेशन में. लेकिन if you are waiting for the current affairs related to RBI circulars specifically, you're waiting for the current affairs related to reports as well as indices which are related or which are connected with the finance segment, so that will be included in your final marathon session which is going to be conducted on Thursday. तो आज मोटा मोटा फाइनेंस करंट अफेयर्स का जो रिवीजन है दैट विल बी डन विद द हेल्प ऑफ 300 क्वेश्चंस, और बाकी बचा जो आपका फाइनेंस का स्पेसिफिक आरबीआई सर्कुलर पार्ट है या फिर मैं कहूँ कि रिपोर्ट्स हैं, इंडिसेस हैं, even the RBI's annual report as well as the financial stability report and what not, वो सारी चीजें मैं मैराथन सेशन में इंक्लूड कर लूंगा क्योंकि रिसेंटली वी हैव कवर्ड these circulars as well as reports, तो कहीं ना कहीं वो भी आपको याद है, तो एक बार एग्जाम में जाने से पहले उसे हम रिवाइज कर लेंगे. सो देयर इज नथिंग टू वरी. ठीक है जी. सो आई गेस वी आर गुड टू गो. लेट्स गेट स्टार्टेड विद द डिस्कशन. और आज का जो सेशन है उसमें आई ट्रैवल लेवल बेस्ट कि मैं हर एक क्वेश्चन के जो इन एंड आउट्स है वो भी आपके साथ जल्दी जल्दी डिस्कस करूं, और उसके साथ साथ ये 300 क्वेश्चंस को अगले 3 से 4 घंटे में कंप्लीट करें. ऑब्वियसली बेयर मिनिमम 3 या 4 घंटे मुझे लगता है कि लग जाएंगे इस पर्टिकुलर सेशन में. सो स्टे विद मी, स्टे स्ट्रांग, एंड आई एम प्रीटी श्योर दिस सेशन इज गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट. इफ यू हैवंट liked the session yet, I would request you quickly hit the like button. If you haven't shared the link of this session, quickly share the session with your friends so that more and more students they can join us live. ठीक है जी. अब पॉइंट ये है कि अगर इस सेशन की पीडीएफ आपको डाउनलोड करनी है तो इस सेशन की पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, विच इज इकोनॉमिक्स बाय माधव अरोड़ा. हैंडल इज @माधव अरोड़ा. Let's get started, guys. May I have yes in the comment section? Let's get started. Give me yes, 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 everyone, so that we can begin quickly. ठीक है जी. चलिए तो शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से. 1 सेकेंड. Okay, let's go ahead with the first question. The first question says Banking Law Amendment Act 2025. रिगार्डिंग दी बैंकिंग लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2025 क्या क्या चीजें रिवाइज की गई हैं, क्या क्या चीजें चेंज की गई हैं, उसके ऊपर ये क्वेश्चन पूछा गया. हम सब जानते हैं कि सर ये जो बैंकिंग लॉ अमेंडमेंट एक्ट है, इट हैज बीन मेड एप्लीकेबल फ्रॉम 1 अगस्त 2025. टोटल 19 अमेंडमेंट्स इस पर्टिकुलर एक्ट में की गई थी, और उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट थी दैट वाज रिलेटेड टू दी CRR रिपोर्टिंग. तो जो टर्म फोर्टनाइट यूज किया जाता था विच वाज अर्लियर 2nd and 4th फ्राइडे of every month, now it has been defined कि 1st to 15th every month will be the first overnight and 16th to the last day of the month will be the second overnight. So इसके हिसाब से अगर हम चले तो हमारा जो फर्स्ट पॉइंट है दैट विल बी करेक्ट. दूसरे पॉइंट पे बढ़ते हैं. दूसरा क्या कहता है, बैंक्स नाउ कैन हैव 7 days टू सबमिट CRR रिटर्न्स आफ्टर फोर्टनाइट एंड. नहीं सर, पहले 7 दिन थे, लेकिन अब रिपोर्ट सबमिट करने के लिए जो दिन बचे हैं वो कितने हैं सर, 5. रिमेंबर दैट. मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, सब्सटेंशियल इंटरेस्ट थ्रेशोल्ड वाज इंक्रीज्ड फ्रॉम 5 lakhs to 2 crores. ये बिल्कुल सही है सर. जो सब्सटेंशियल थ्रेशोल्ड लिमिट थी दैट हैज बीन इंक्रीज फ्रॉम 5 lakhs to 2 crores, क्योंकि इसे एडजस्ट किया गया विद रिस्पेक्ट टू इन्फ्लेशन. ये इंश्योर कर रहा है कि बैंक शुड मॉनिटर ओनली दी मटेरियल स्टेक्स, नॉट दी माइनर स्टेक्स. सो दैट इज इंपॉर्टेंट. Directors in the cooperative bank can now serve up to 12 years. No sir, directors in the cooperative banks they can now serve up to 10 years. So the fourth statement is wrong. अगला पॉइंट क्या कहता है, डायरेक्टर्स ऑफ द सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स दे कैन ऑल्सो सर्व एज द डायरेक्टर्स ऑफ द स्टेट कोऑपरेटिव बैंक. तो जो हमारे डायरेक्टर्स हैं सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक के, दे कैन ऑल्सो सर्व
on the state cooperative bank. Is this point correct? So directors, they can serve on both central as well as state cooperative banks. That is true. So answer क्या बनेगा? So 135 is the correct answer for the given one. ठीक है जी, क्लियर हो गया पॉइंट, समझ आ गया। चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? नॉमिनेशन, IEPF एंड SBI एक्ट अपडेट्स क्या क्या थे इस पर्टिकुलर बैंकिंग लॉ अमेंडमेंट एक्ट में। तो बैंकिंग लॉ अमेंडमेंट एक्ट के अकॉर्डिंग कितने डिपॉजिटर्स हो सकते हैं? सर अगर हम डिपॉजिटर्स या लॉकर्स के नॉमिनी की बात करें तो नॉमिनी फॉर अ डिपॉजिटर और लॉकर कैन बी 4 पर्सन, जो कि पहले 1 था, अब वो 4 हो सकते हैं। और ये भी जो नॉमिनीज है, यू कैन हैव सक्सेसिव or even you can have sequential. It's up to you the way you are going to include them. Next is proportions for multiple nominees must be specified clearly. Proportions जो है, you have to specify the proportions clearly. That is absolutely correct. इसका मतलब ये हुआ कि सर फॉर एग्जाम्पल वी हैव मदर, सन, डॉटर। तो एक तो है कि सक्सेसिव कर दिया कि अगर मदर है तो ठीक, नहीं तो उसके बाद सन, सन है तो ठीक, नहीं तो डॉटर। या फिर ये कर दिया कि तीनों के तीनों साइमल्टेनियसली नॉमिनीज है बट देयर परसेंटेज इज फिक्स। सो दिस इज करेक्ट। अनक्लेम्ड डिविडेंड एंड शेयर्स इन पब्लिक सेक्टर बैंक मस्ट बी ट्रांसफर्ड टू IEPF। दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। जैसा कि बाकी कंपनीज के केस में होता है, बैंक्स के लिए भी सेम है कि अगर आपके पास कोई अनक्लेम्ड डिपॉजिट, अनक्लेम्ड डिविडेंड है, unclaimed shares है, that will be transferred to IEPF, लेकिन अगर unclaimed deposit है, that will be transferred to DEF. I hope you remember. SBI and public sector banks still require government approval to appoint auditors. नहीं सर, अब ऑडिटर्स को अपॉइंट करने के लिए गवर्नमेंट के अप्रूवल की जरूरत नहीं है। IEPF is not managed by Ministry of Finance, it is managed by Ministry of Corporate Affairs. So keeping that in mind, 1, 2, 3 are correct. समझ आ गया? चलो अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। The question says Google data center project, which of the following statements are correct? Google is investing around $6 billion to set up first data center in India. अगर मैं गूगल की बात करूं तो गूगल ऑल ओवर द, अगर हम गूगल की बात करते हैं, गूगल इज गोइंग टू इन्वेस्ट $6 billion in India for setting up its first ever data center, and that will be set up in Visakhapatnam, Andhra Pradesh. That will be set up in Visakhapatnam, Andhra Pradesh, not in Hyderabad, Telangana. Moving to the next, the project is a part of Alphabet $75 billion global data center expansion. बिल्कुल सही है सर, $75 billion का इन्वेस्टमेंट हो रहा है ग्लोबल लेवल पर। सिंगापुर, मलेशिया, थाईलैंड are the other focus region except India, or including India you can say. The next point is plant capacity. We talk about the plant capacity of Visakhapatnam facility is going to be 1 gigawatts. That is correct. This will be the largest center in Asia in terms of size and capacity. क्या ये एशिया का largest center होगा in terms of size and capacity? Give me the answer. Give me the answer quickly. Is this point correct? Absolutely correct, sir. This is going to be the largest one. So answer is going to be 1, 3, 4 and 5 are the correct options. Got it? 2 million नहीं है, $2 billion है। $2 billion for renewable energy. अगर कोई लिख रहा है तो दैट शुड बी $2 billion. टोटल जो प्रोजेक्ट है दैट इज ऑफ $6 billion. रिमेंबर दैट। क्लियर हो गया? अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन पे अगर हम बढ़े, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, रिन्यूएबल एनर्जी एंड ग्लोबल सिग्निफिकेंस के कॉन्टेक्स्ट में ये क्वेश्चन बनाया गया। आइडेंटिफाई द ट्रू स्टेटमेंट रिगार्डिंग द गूगल्स विशाखापट्टनम प्रोजेक्ट। $2 billion will be invested in is basically dedicated to the renewable energy infrastructure. That is correct. Facility aims to run on sustainable power to comply with carbon neutral goals. That is correct. India is the first country in Asia where the Google is building its data center. ये point मैं आपको intentionally अब यहाँ पे सही करूंगा सर. This is the largest data center in India. This is correct. लेकिन किसी ने लिखा था, आई गेस प्राची ने लिखा था, प्राची, आई एम मेकिंग यू करेक्ट ओवर हियर, दिस इज द फर्स्ट फैसिलिटी or the first country in Asia where the Google is building it. No sir, this is not the first country, but yes, it is the largest center in the Asia. The project will boost India's cloud computing as well as AI capabilities. That is correct. Investor Education and Protection Fund will manage the renewable energy for the projects. नहीं sir, इसका renewable energy से कोई लेना देना ही नहीं है. So the answer will be which all options? So 1, 2, 4 is correct. Clear हो गया? समझ आ गया? चलो अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं. अगला क्वेश्चन देखो. Fortune 500 global rating was given recently, and related to the Fortune 500 global rating, I have a question for you. The question says the 2025 Fortune Global 500 list is the 71st
edition. Check it out. Walmart retained the top spot globally with over $680 billion in revenue. Okay. US had the highest number of companies, represented 138 out of 500. Okay. Saudi Aramco was the world's most profitable company. Okay. Last is Amazon ranked 4th in the 2025 ranking. Let's try to identify the correct answers. Pehla point is correct. It is the 71st edition. Walmart retained a top spot with $680 billion. That is correct. US has recorded 138 companies out of 500. That is also correct. Saudi Aramco is the most profitable company. That is correct. और अगर हम इसके profitable की बात करें तो it was around $138 billion. Sorry, $105 billion. If we talk about profit, up coming back to the Amazon, sir, Amazon is not on the 4th rank. Amazon is rather on the 2nd rank globally. But if you ask me in terms of revenue, the 4th rank is taken by Saudi Aramco. On the 4th rank, we have Saudi Aramco. ठीक है जी, clear है, समझ आ गया. Answer is going to be 1, 2, 3, 4. That is correct, but the 5th statement is wrong. चलो अगले पॉइंट पे बढ़ते हैं. अगला पॉइंट क्या कहता है? फॉर्च्यून 500 की अगर हम इंडियन कंपनीज के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो विद रिस्पेक्ट टू इंडियन कंपनीज, Reliance is on the top at 88th place. That is correct. ICICI Bank entered the list for the first time at a rank of 464. That is also correct. अगर हम बात करते हैं RBI slipped down from 163 to 790. So it's opposite. RBI has climbed from 178 to 163. So this is a wrong statement. HDFC Bank made the biggest jump among the Indian banks, moving 48 spots. Is this point correct? Yes, sir. That is absolutely correct. Moving 48 spots. And if you ask me, this time HDFC is on the 258th rank out of 500 top Fortune global companies. Next we have is LIC. Sir, LIC is ranked 95th. That is also correct. तो यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे आंसर्स क्या बनेंगे? 1, 2, 4, 5 आर करेक्ट. थर्ड स्टेटमेंट क्यों रॉन्ग है? दैट शुड बी इन द ऑपोजिट फॉर्मेट. नेक्स्ट, बैलेंस अकाउंट्स एंड ट्रांजैक्शन रूल्स. Which of the following statements are true with respect to the NPCI's new guidelines? तो NPCI की अगर हम new UPI guidelines की बात करें, there has been a limit set by RBI, by NPCI regarding the balance check, regarding the review of your account, regarding the check which account is linked to which mobile number. So all these limits have been revised. Regarding API requests, that means you will be having a limited number of requests every day in order to avoid overburdens on the UPI network because of the immense exposure to n number of transactions on regular basis. तो अब उस context में अगर हम बात करें, first point talks about UPI user can check their balance maximum 100 times per day. No sir, you can check balance maximum 50 times per day, not 100 times. So this is wrong. Automated background balance are no longer permitted. Yes sir, जो automatic balance आपका update हो रहा था background में, that will not be done. Next point is, if a user exceed 50 balance check, the app block visibility for next 24 hours. That is correct. UPI apps can use the list of account API a maximum 25 times. तो अगर आप check करना चाहते हैं कि which all list of accounts are linked to your given mobile number, you can check it 25 times per day per user. The next is, apps can retry loading accounts even without user consent. Retry allowed only with explicit user consent. It will not be done without user consent. So this is wrong. So answer is going to be 2, 3, 4. अगला point क्या कहता है? Pending transactions, auto pay and compliance. Which of the following points are correct? सर अगर हम पेंडिंग यूपीआई ट्रांजेक्शन्स की बात करें, यू कैन चेक मैक्सिमम 3 times a day and at least there should be a gap of 90 seconds among one and the second check. Next is, user can get 6 attempts in total to complete a failed transaction. So total 4 attempts, not 6. Total 4 attempts are allowed to complete a failed transaction. Auto pay mandates are only allowed during the non-peak hours. This is correct. Non-peak hours की बात करें before 10 a.m. Between 1 to 5 p.m. and after 9:30 p.m. Recipient full name and transaction summary must be displayed before confirming the payment. That is correct.
PSPs failing to comply may face penalties like restricted API access and pause on new onboarding. That is also correct. So answer to this particular question is going to be what? 1, 3, 4, 5 are correct, but the second statement is wrong क्योंकि यहाँ पे 6 नहीं 2 attempts ही आपको मिलेंगे. Next, which of the following statement about the सक्षम निवेशक कैंपेन are correct? सक्षम निवेशक कैंपेन के कॉन्टेक्स्ट में इनमें से कौन कौन सी स्टेटमेंट्स करेक्ट है? So the first statement talks about it's a 100-day initiative launched by SEBI. Is it a 100-day initiative launched by SEBI? So it's a 100-day initiative launched. That is true. 100 day ही है, लेकिन sir it is not launched by SEBI, rather it is launched by IEPFA. तो ये गलती मत करना. It is not launched by SEBI. अरे भाई उठ जाओ उठ जाओ उठ जाओ उठ जाओ जल्दी. Good morning. It's not launched by SEBI, it is launched by IEPFA. That is the reason first statement is wrong. Second, campaign duration is July 28 to November 6, 2025. Campaign की अगर हम duration की बात करें, this is correct. Aims to create awareness about unclaimed dividend and unclaimed shares. That is also correct. Nothing wrong in that. Next point we have is it also helps shareholders to update KYC as well as nomination details. Correct. Companies are advised not to engage with shareholders during this campaign. नहीं sir, companies are advised to get engaged with the shareholders ताकि उनके जो issues हैं उन्हें resolve किया जाए. So 2, 3, 4 is the correct answer. अगला question देखो. What does the next question says on the same news? Unclaimed dividend are transferred to IEPF after 10 consecutive years. नहीं sir, it is transferred to IEPF after 7 consecutive years, not 10. 10 is with respect to the bank deposit, not with respect to the unclaimed dividend or unclaimed shares. ठीक है जी. अगला point है. IEPFA was established in 2016 under section 125 of Companies Act 2013. That is absolutely correct. IEPFA runs Niveshak Didi, Niveshak Panchayat. That is also correct. Lack of nomination or outdated KYC often leads to unclaimed dividends. ये भी है सर, अगर आपका डेट एड्रेस सही नहीं है, बैंक की डिटेल सही नहीं है, तो उस केस में it will result in unclaimed dividends. So that is correct. IEPFA is administered by Ministry of Corporate Affairs. That is also correct. So answer is going to be 2, 3, 4, 5 are the correct answers. ठीक है जी. क्लियर हो गया? कोई पॉइंट है यहाँ पर? तो यहाँ पे क्या क्या फीचर्स थे? टारगेट ग्रुप, रिटेल शेयर होल्डर्स with unclaimed benefits, awareness about the dormant or unclaimed corporate benefits, KYC update होगा for the missing details, nomination के लिए it will help the customers to add or modify the nominees, assist investors to recover unpaid dividend, as well as urge to proactively contact shareholders. Companies were asked to proactively connect with the shareholders in order to service the unclaimed dividends. ठीक है जी. क्लियर होगी बात? तो ये क्यों हुआ? क्योंकि सर बिकॉज द अनक्लेम्ड अमाउंट, आउटडेटेड बैंक केवाईसी इज इंक्रीजिंग, जिसकी वजह से अनक्लेम्ड अमाउंट बढ़ता जा रहा है. अब उसे क्लेम कराने के लिए ये सारी चीजें इंट्रोड्यूस की गई है. गाइज आई होप द स्पीड इज फाइन. मेरी स्पीड तो तेज हो ही नहीं सकती भाई. मनीष सर के सामने मैं तो बहुत स्लो हूं. तो अगर आपको उनकी क्लासेस बहुत अच्छे समझ आ रही है तो मुझे तो लगता नहीं कि मेरी स्पीड में कोई प्रॉब्लम होगी. हाँ, ये आपको प्रॉब्लम हो सकती है कि शायद मैं स्लो हूं, ये प्रॉब्लम हो सकती है. बट आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट दैट आई शुड पेस अप सो दैट वी कैन कवर मोर एंड मोर क्वेश्चन इन लेस टाइम. ठीक है. ओके 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 फाइन. अब जिसको तेज लग रहा है फिर वो आप ऐसा कीजिए, वापस जाइए, शुरू से शुरू कीजिए और वहां पर अपनी स्पीड को चेंज कर लीजिए इफ इट इज अलाउड. चल अगला, क्रेडिट ग्रोथ ट्रेंड्स, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इंडियाज बैंक क्रेडिट ग्रोथ आर करेक्ट. तो इंडिया के बैंक क्रेडिट ग्रोथ की कौन कौन सी स्टेटमेंट्स करेक्ट है फॉर जुलाई 2025 के कॉन्टेक्स्ट में, सॉरी जून 2025 के कॉन्टेक्स्ट में. अगर हम जून 2025 के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो बैंक क्रेडिट ग्रोथ हैज स्लोड डाउन. बैंक क्रेडिट ग्रोथ हैज स्लोड डाउन टू 10.2%. अगर हम बैंक क्रेडिट ग्रोथ की बात करें, इट हैज स्लोड डाउन टू 10.2%. It was 13.8% in June 2024. It was 13.8% in June 2024. This is wrong. Agriculture credit fell sharply to 6.8%, which was earlier 17.4%. Remember that. Industrial credit growth was supported by MSMEs. So in case of industrial credit growth, it was supported by MSMEs despite weaker corporates. तो corporate loan तो अभी भी weak हुआ है. Corporate credit has weakened down, but still we are witnessing strong in context of
strong in context of industry growth because of MSMEs. Service sector slowdown was largely due to the reduced lending to NBFCs. True. Personal loan growth slowed to 14.7% as household become cautious about big ticket spending. ये बड़ा important point है सर. जब से ये global uncertainty आई है, जो big ticket spending है houses पे या फिर गाड़ियों पे या फिर कोई भी बड़ा खर्चा आज की डेट में households avoid कर रहे हैं in order to avoid any kind of scenarios in the near future, क्योंकि everyone is aware कि economy is very uncertain. Moving on to the next one, causes and policy outlook. Which of the following factors correctly explain the credit slowdown? So what are the reasons because of which we have witnessed credit slowdown in from I would say till June 2025? So till June 2025 it was because of tight monetary policy. मैं मानता हूँ monetary policy was or repo rate was revised in February as well as in April, but still its penetration, its transmission has not been done till now. We are still expecting that it will be transmitting in over a month or so. So keeping that in mind, it will be considered as high situation. So this is correct. Second is strong rural consumption boosted agriculture credit growth. Strong rural consumption boosted agriculture credit growth. No sir, that is not the case. मैं तो अभी आपको क्या कह रहा था, एग्रीकल्चर सेक्टर के केस में आपका क्रेडिट ग्रोथ स्लो हुआ बिकॉज ऑफ वीक रूरल कंजम्पशन. अब देखो ना, यहाँ पे एक क्वेश्चन आया था लास्ट टाइम भी कि सर अभी आप कह रहे हो वीक हुआ है, फिर आप कहोगे स्ट्रांग हुआ है. बताता हूँ, यहाँ जो वीक और स्ट्रांग का कंपैरिजन है ना, वो कुछ ऐसा है कि लास्ट ईयर जो क्रेडिट ग्रोथ था एग्रीकल्चर सेक्टर में दैट वाज 17.4%. उसके हिसाब से इस बार जो क्रेडिट ग्रोथ है दैट इज ओनली 6.8%. तो क्रेडिट ग्रोथ हैज स्लो डाउन with respect to the previous year, but in the current year the credit growth in comparison to the other sectors it has done well. समझ आई बात? तो अगली बार जब मैं कहूंगा एग्रीकल्चर सेक्टर has performed well due to the rural demand, तब आप कहोगे सर अभी तो आपने कुछ और कहा था. That is in comparison to the previous year, but in comparison, if I'm comparing the sectors of the current financial year, then agriculture sector has performed well in terms of the credit growth. ठीक है जी, क्लियर हो गई बात? तो ये कुछ और कह रहा है और ये पिक्चर कुछ और है. आई होप नाउ इट इज क्लियर. Household pulled back on auto and housing loans due to higher EMIs. That is correct. A global slowdown hurt external demand for industries. जो global slowdown है, it will hurt the external demand. अब external demand तो hurt होगी. That is correct. RBI is expected to immediately cut rates to revive demand. नहीं सर, RBI expect, we were expecting, but अक्टूबर में भी RBI ने ऐसा नहीं किया. Now RBI is in a wait and watch situation because of the uncertainties. Let's see what will be the decision taken by RBI during the December monetary policy. लेकिन current situation is not taking an instant step or immediate step. Rather, RBI is in a wait and watch situation, which we have discussed in the earlier sessions as well. अगला क्वेश्चन देखो. Doorstep banking and प्रधानमंत्री Jan Dhan Yojana. Which of the following statement about the RBI's doorstep re-KYC initiatives are correct? तो RBI के री-इनिशिएटिव या री-KYC इनिशिएटिव्स के कॉन्टेक्स्ट में क्या सही है? सबसे पहली बात तो ये सर, आफ्टर द थर्ड बाई मंथली मॉनेटरी पॉलिसी, थर्ड का मतलब क्या हुआ सर? पहली होती है अप्रैल में, फिर हुई जून, थर्ड हुई अगस्त में. तो अगस्त की मॉनेटरी पॉलिसी के बाद ये अनाउंसमेंट की गई कि डोरस्टेप री-KYC कैंपेन एज वेल एज प्रधानमंत्री जन धन योजना आउटरीच. ड्यूरेशन है इसका 100 डेज अगेन. दैट इज फ्रॉम 1 जुलाई टू 30 सितंबर. सर अगर सर ये 1 जुलाई टू 30 सितंबर है तो फिर ये थर्ड मॉनेटरी पॉलिसी कैसी हुई सर? ये थर्ड मॉनेटरी पॉलिसी अगर आप कहेंगे तो दैट विल बी थर्ड मॉनेटरी पॉलिसी अनाउंसमेंट विद रिस्पेक्ट टू दी कैलेंडर ईयर, यानी कि जून के बाद ये अनाउंसमेंट्स किए गए. ठीक. अब उसका अगला पॉइंट क्या आता है सर? अगला पॉइंट आता है पंचायत लेवल पे, नेशन वाइड लेवल पे इसे इंप्लीमेंट किया जाएगा. ओपनिंग न्यू प्रधानमंत्री जीवन ज्योति अकाउंट्स, एनरोलमेंट इन द प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, एनरोलमेंट इन प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना एज वेल एज अटल पेंशन योजना. ग्रीवेंस रेजोल्यूशन भी किए जाएंगे. इसमें क्या क्या एक्टिविटीज है? इट विल इन्वॉल्व इन दी grievance resolution at doorstep. Along with that, what was the impact? अब बात आती है दोबारा
अब इसको ध्यान से सुनना सर, ये जो अनाउंसमेंट है ना, ये अनाउंसमेंट तो पहले की गई थी, लेकिन मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की जो 3rd मीटिंग थी जो कि अगस्त में हुई, उस मीटिंग में इसके रिजल्ट्स पे बात की गई थी। सो रिजल्ट्स क्या है सर, ये 100 डेज का इवेंट है, 1 महीना हो चुका है और 1 महीने में कैसे परफॉर्म किया इसने, वो पॉइंट जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम 1 मंथ के परफॉर्मेंस की बात करें, अराउंड 105 लाख कैंप सेट किए गए थे, 14.22 लाख अकाउंट्स री केवाईसी की गई थी, 6 लाख से ज्यादा नए प्रधानमंत्री जनधन अकाउंट्स ओपन किए गए थे और 22 लाख से ज्यादा सोशल सिक्योरिटी एनरोलमेंट्स की गई थी। सो कीपिंग दैट इन माइंड, एक्टिविटीज इंक्लूड री केवाईसी, ओपनिंग प्रधानमंत्री जीवन ज्योति अकाउंट्स, एनरोलिंग इन द इंश्योरेंस और पेंशन स्कीम्स, दैट इज करेक्ट, ये भी करेक्ट हो गया। इट वॉज लॉन्च ऑन द 15th, it was launched on the 15th anniversary, was it correct? कैसे 15th anniversary पे ही लॉन्च किया गया था? Give me the answer. Was it launched on the 15th anniversary? एक बार सोच के बताना सर। अगर आपको याद हो, प्रधानमंत्री जनधन योजना को इंट्रोड्यूस किया गया था 2014 में, so it's not the 15th anniversary, it was the 11th anniversary, so that is wrong. Over 105 campaigns, 22 lakhs, this is correct. It aims to reduce account dormancy and promote फाइनेंशियल इंक्लूजन, बिल्कुल सर, इसका एम यही है, पब्लिक को अवेयर करना रिगार्डिंग दी बैंकिंग सर्विसेज एंड डिक्रीज द काउंट ऑफ इनऑपरेटिव अकाउंट्स और अनक्लेम्ड अकाउंट्स। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? द नेक्स्ट क्वेश्चन से सिंप्लीफाइड क्लेम एंड रिटेल डायरेक्ट अपग्रेड, विच स्टेटमेंट्स आर करेक्ट रिगार्डिंग द न्यू रिफॉर्म्स। अब न्यू रिफॉर्म्स के कॉन्टेक्स्ट में क्या क्या करेक्ट है? सिंप्लीफाइड क्लेम सेटलमेंट कवर्स डिपॉजिट्स, लॉकर्स एंड सेफ कस्टडी कंटेंट्स ऑफ डिसीज कस्टमर, बिल्कुल सर, दैट वाज अ प्रपोजल गिवन, that was a proposal given during this particular campaign ki now faster as well as simplified settlement of the deceased customers claim will be done. So faster settlement for nominees or legal heirs, reduce legal disputes as well as build trust in the banks as well as the customer sensitivity approach. So in that matter, this is correct. The framework is being issued under RBI Act 1934. So the entire framework जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, these changes are not done under RBI Act, it is done rather under Banking Regulation Act 1949, it is not RBI Act 1934, this is incorrect. देखो ना, जब भी कभी बैंकिंग ऑपरेशन से रिलेटेड कुछ चेंजेस होंगे ना, बैंकिंग ऑपरेशन से रिलेटेड कुछ चेंजेस होंगे, दैट विल नॉट बी डायरेक्टली डन बाय RBI, उसमें कहीं ना कहीं बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट का इन्वॉल्वमेंट होगा ही होगा। सो दिस इज रॉन्ग। Retail direct platform now allows systematic investment in treasury bills. बिल्कुल सर, this is allowed. The new SIP feature will help small investors automate and diversify. Now you have a new SIP feature with the help of which you can invest. So we call it as a retail direct scheme, which was launched back in November 2021, which enabled the retail investors like you and me to buy and sell government securities, treasury bills directly via RBI platform, that is EcoWare. New feature is now you have an SIP option for T-bills, which will allow you to invest in the treasury bills in a systematic automated investment format. So that is what has been discussed. These reforms, they align with the RBI broader financial inclusion and market development goals. This is correct. So answer to this particular question would be what? So it would be 1, 3, 4, 5 is the correct answer. Agla question dekho, which of the following are correct regarding the special rupee Vostro accounts? So special rupee Vostro accounts are held by Indian banks on the behalf of foreign banks denominated in Indian rupees. This is correct. They were introduced by RBI in August 2025. No sir. So special rupee Vostro accounts, they were not introduced in August, rather they were introduced in July 2022. Their primary purpose is to allow international trade in INR, that is correct, which we call it as internationalization of INR. It will reduce the dependency on US dollars as well as euro, this is correct. They increase exchange rate risk. No sir, for the Indian exporters यहाँ से तो exchange rate risk zero हो गया. You are paying in INR, you are receiving in INR, आपकी तो कहानी खत्म हो गई. So answer to this particular question will be 1, 3, 4, that is correct. अगला question देखो, which of the following statements are correct about RBI's August 2025 relaxation on SBRA? RBI removed the requirement of prior approval for opening SRVAs, that is correct. अब आपको RBI की prior approval की जरूरत नहीं है. Banks can open the SRVAs without RBI prior approval. This aims to encourage wider adoption of INR in the global trade, that is correct. It will delay trade settlement. No sir, it will increase, sorry, I would say it will
make the settlement process easier and faster, not it will delay. Countries like Russia, Sri Lanka are already using this because of the sanctions or because of, I would say, scarcity of US dollar holdings. The move aligns with India's goal of rupee internationalization. That is correct. So answer क्या बनेगा? 1, 2, 4, 5 are correct. Only third option is wrong. Next, RBI approval and IRCTC payments. Which statements are correct regarding RBI's note to IRCTC Payment Limited? तो recently RBI ने allow किया है IRCTC Payment Limited, which is IRCTC subsidiary, to operate as a payment aggregator. What type of payment aggregators? Are online payment aggregators. So let's try to identify the correct statements. So in this particular format, the first is RBI granted the final operational. RBI granted the final operation. No sir, final operational approval was not granted. Please make it correct. In principle approval is given. Final operational approval is not given in August. Approval was under the Payment and Settlement System Act. That is correct. IRCTC payment is wholly owned subsidiary of IRCTC, which is under the Ministry of Railways. That is correct. The approval allows IRCTC payments to act as an online payment aggregator. Yes, मतलब अब IRCTC payments ना सिर्फ टिकट बुकिंग के लिए funds आपसे collect करेगा, but it will be capable to provide these services to the other marketplaces as well. It will be provided to other as marketplaces as well. So that is also correct. The next is IRCTC is classified as Mini Ratan as of March 2025. It was classified as Mini Ratan as of March 2025. It is not Maharatan. If you know, Maharatan are some of the largest companies, public sector units, which include SAIL, GAIL, NTPC. They all are the part of Maharatan criteria. ठीक है जी, क्लियर हो गया, डन हो गया. शैल आई मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन? नो डाउट टिल नाउ? नो डाउट टिल नाउ. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट. अगला क्वेश्चन क्या कहता है? रोल एंड सिग्निफिकेंस ऑफ IRCTC एज अ पेमेंट एग्रीगेटर. IRCTC पेमेंट्स विल पूल फंड्स इन एस्क्रो एंड सेटल विद मर्चेंट्स. बिल्कुल सही है. आप IRCTC पेमेंट भूल जाओ. यू जस्ट फॉरगेट अबाउट IRCTC पेमेंट. यू जस्ट रिमेंबर पेमेंट एग्रीगेटर. अच्छा, यहाँ पे कंफ्यूजन चल रहा है. एक सेकंड, पहले पिछले वाला कंफ्यूजन सॉल्व कर लेते हैं. Many of you are saying that IRCTC is now included in the category of Maharatan. In the category of Maharatan. Please give me the answer, guys. Could you please help the other students to remember it? मैं आपको बता दूं, guys. गवर्नमेंट ने रिसेंटली IRCTC को अपग्रेड किया बिकॉज ऑफ विच इट इज इन न्यूज. पहले ये मिनी रतन कैटेगरी 1 था. मैं इसको क्लियर कर देता हूं. अर्लियर इट वाज मिनी रतन कैटेगरी 1, बट नाउ इट हैज बीन इंप्रूव्ड फ्रॉम कैटेगरी 1 टू नवरत्न. तो अभी भी इट्स नॉट महारत्न, इट्स इन द कैटेगरी ऑफ नवरत्न, नॉट इन महारत्न. याद कर लेना, मैंने एग्जैक्टली बता दिया. 25th महारत्न CPSE कैसे हो गया यार? ये 25 महारत्न है ही नहीं. 25 महारत्न है ही नहीं इंडिया में. प्लीज आप चेक करो एक बार. वो 25th नवरत्न बनी है, महारत्न नहीं बनी. 25th भी नहीं, मैं 26th कहूंगा. आई वुड गो विद 26th. 25th कह लो तो IRCTC को. अगर IRCTC 25th नवरत्न है तो 26th नवरत्न भी कुछ ऐसा ही है. IRFC. If I say IRFC stands for, guys, any idea? IRFC stands for Indian Railway Finance Corporation. ठीक है जी, अब क्लियर है. आगे बढ़ो. Please allow me to move ahead. Okay. Moving on to the next. So IRCTC already operates as a payment gateway. Yeah, एक payment gateway is already being operated by IRCTC and it is called as IRCTC Pay. That is correct. The payment aggregator license will restrict IRCTC's operations to only railway related transactions. नहीं सर, payment aggregator के license का मतलब ही ये है that you will be allowed to provide these services to the other companies as well. For example, मैंने एक नई e-commerce बनाया, let's say e-commerce. उस पे मैंने पेमेंट एग्रीगेटर को हायर किया. दैट कुड बी IRCTC. दैट इज अलाउड.
Payment aggregator license ensures compliance with the data security and settlement norms. That is correct. RBI recognition enhance trust among users and merchants. So इसीलिए RBI will provide the license, and once the RBI has provided license, then only a company can operate as a payment aggregator. Agla question. Which of the following statement is correct regarding the RBI co-lending agreements? So if I talk about the RBI's co-lending agreements, कौन सी statements correct है? The first one we have is applicable to small finance banks and RRBs. पहली statement ही wrong है sir. These norms which we are talking about, that is co-lending agreements. So these co-lending agreements, they are applicable to all the commercial bank except small finance banks as well as local area banks, RRBs. It is applied on NBFCs. It is applicable on all India financial institutes. It is even applicable on housing finance companies, but not on the given list. Next is each regulated entity must retain at least 10% of loan in its book. That is correct कि sir हर एक regulated entity का जो input in the loan है that should be at least 10%. Originating regulated entity का भी as well as partner regulatory entity का भी. This is correct. Borrower level asset classification is mandatory. Borrower level पे asset classification होगा, standard, substandard, NPA, everything. Blended interest rate charged to the borrower. Blended interest rate means regulated entities, they will come together and then they will decide the lending rate. और lending rate decide होगा किसके basis पे? Sir, lending rate decide होगा on the basis of, it will be decided on the basis of what, sir? It will be decided on the basis of individual lending rate and individual share in the total lending amount. Default loss guarantee is capped at 5% of the loans. This is correct. Default loss guarantee की capping कितनी है? 5%. अगला question, identify the features distinguish co-lending from syndicated or custodian loan. Custodian loan से या syndicate loan से कैसे अलग है? कैसे अलग है co-lending? So co-lending is used generally for retail, MSME and housing loans or housing finance. That is correct. Lead arranger handles admin, reporting and payments. Lead arranger will not handle anything like admin, reporting and payments in co-lending. Documentation will include CLA as well as key fact statement. ये correct है. Transfer to partner regulated entity must reflect in the books within 15 days. Pricing is blended weighted rate based on based on regulated entities. That is correct. तो ये सारी statements correct है, लेकिन B option wrong है क्योंकि because this B option is more relevant with respect to the syndicated loan. So answer is going to be ACDE. अगला question देखो. Which of the following statement about SEBI's स्वागत FI framework are correct? अगर मैं स्वागत FI framework की बात करूं, it stands for single window. It stands for single window, automatic and generalized access for trusted foreign investors. I repeat, single window, automatic and generalized access for trusted foreign investors. Applies to all the foreign investors regardless of the risk profile. Is it applicable to all the foreign investors? No, sir. It is not applicable to all the foreign investors. Rather अगर हम इसकी बात करें, this has been launched for low risk foreign investors. KYC review for eligible funds is required only once in 10 years. ये सही है. In this case, only once in 10 years review will be done. KYC के बाद NRI, overseas Indian citizens participation cap is removed for eligible स्वागत FI funds. ये बिल्कुल सही है कि सर अब आपकी कोई participation cap नहीं है under the स्वागत FI. That stands for single window. That stands for what? Sir, that stands for single window, automatic and generalized access for trusted foreign investors. वहाँ पे कोई capping नहीं है. Next is registration for FP and FVCI, that is foreign portfolio investors and foreign venture capital investors. Registration is unified into a single process. Yes sir, it's an option, you can do it. Demat account must remain separate. No sir, जरूरी नहीं है, आप इसको भी एक ही account maintain कर सकते हैं. So answer is going to be BCD is correct. ठीक है, mandatory नहीं है, option है, you can choose. Next, identify the benefits and features of स्वागत FI framework. Reduces operational complexity by merging registration and KYC process. बिल्कुल सही है सर. रजिस्ट्रेशन और KYC प्रोसेस को अब आपने मर्ज कर दिया. मेंटेन मल्टीपल डीमैट अकाउंट्स फॉर ईच इन्वेस्टमेंट टाइप. नो सर, यू विल हैव ओनली वन अकाउंट टाइप फॉर ईच टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट, और you can have single account for both the types of investment. Lower compliance cost for large funds managing billions of assets. This is true. Increase flexibility in fundraising by removing participation cap for eligible investors. हाँ, अगर participation cap
फॉर इन एलिजिबल इन्वेस्टर्स कम होगा, तो ऑब्वियसली इट विल रिजल्ट इन इंक्रीज इन फ्लेक्सिबिलिटी. अप्लाइज ओनली टू द एफपीआईज विद लेस देन 1 ट्रिलियन असेट्स अंडर कस्टडी. ऐसा कुछ नहीं है सर, ऐसा कुछ नहीं है. अब कोई पूछे कि ये किस पे एप्लीकेबल है, तो मेरा आंसर क्या होगा सर? इफ आई टॉक अबाउट द एप्लीकेबिलिटी, it basically targets the government owned investment funds, central banks, sovereign wealth funds, multilateral financial institutions, highly highly regulated public retail funds. So these groups, they account for greater than 70% of the total FP assets under custody in India. So उसी को target किया गया under this particular context. ठीक है जी. तो I hope it is clear. Moving to the next one, ACD is correct. अगला क्वेश्चन देखो क्या कहता है. Which of the following statement regarding the RBI's penalty on ICICI Bank are correct? RBI ने ICICI बैंक के ऊपर penalty charge की. penalty value was 75 lakhs. That is correct. Penalty was due to lapses in the loan provision norms only. नहीं सर, loan provision norms में lapse था, लेकिन दूसरा रीजन था valuation of properties. आपका जो empanelment valuers थे, they have not done the valuation of the security. That is the first one. Second is opening of current accounts. ओपनिंग ऑफ करंट अकाउंट से रिलेटेड इश्यूज थे, तो आईसीआईसीआई ने लैप्स किया ओपनिंग एंड मेंटेनिंग द करंट अकाउंट इन वायलेशन ऑफ आरबीआई रिस्ट्रिक्शंस. तो यहाँ पे दो पॉइंट्स आएंगे. दैट इज द रीजन. वैल्यूएशन इन्वॉल्व, वायलेशन इन्वॉल्व improper valuation of properties, ये करेक्ट है. वायलेशन इन्वॉल्व ओपनिंग एंड मेंटेनिंग करंट अकाउंट इन वायलेशन ऑफ आरबीआई. दिस इज करेक्ट. इंस्पेक्शन रिवीलिंग violation was ISE. ISE means statutory inspection for survey evaluation as of 31st March 2024. This is correct. So answer is going to be ACDE. अगला क्वेश्चन देखो. Identify the risk implication of ICICI Bank non-compliance. तो risk implication में अगर हम बात करें ICICI Bank के कॉन्टेक्स्ट में, पहला inflated property valuation, affected collateral adequacy. बिल्कुल सर, ज़्यादा वैल्यू अगर आपने वैल्यूएट कर दी तो उससे इम्पैक्ट होगा आपकी इकोनॉमी में. करेक्ट. नेक्स्ट इज इंक्रीज क्रेडिट रिस्क. यस, क्रेडिट रिस्क इंक्रीज होगा. पॉसिबिलिटी ऑफ फंड डाइवर्जन वाया करंट अकाउंट. सो पॉसिबिलिटी ऑफ फंड डाइवर्जन वाया करंट अकाउंट इज करेक्ट. रिड्यूस रेगुलेटरी ओवरसाइट बाय आरबीआई. सर इससे आरबीआई की रेगुलेटरी ओवरसाइट कैसे रिड्यूस होगी? इट इज नॉट द केस. सर्कमवेंशन ऑफ क्रेडिट डिसिप्लिन नॉर्म्स, ये बिल्कुल सही है. क्रेडिट डिसिप्लिन नॉर्म्स को पूरा नहीं किया गया. सो कीपिंग दैट इन माइंड, ABCE इज करेक्ट. डी ऑप्शन इज रॉन्ग. नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द की फीचर्स एंड बेनिफिट्स ऑफ स्पेशल रुपी वॉस्टो अकाउंट अंडर द न्यू डायरेक्शन. स्पेशल रुपी वॉस्टो अकाउंट रिड्यूस डिपेंडेंसी for trade settlement. That is correct. SRVA is now allowed to invest only in corporate bonds. No sir, they are not only allowed to invest in corporate bonds, rather now they are allowed to invest in government securities as well, but central government securities, remember that. So they are allowed to invest in the central government securities as well as treasury bills. So this is wrong. Treasury bills are short-term government securities issued at a discount. Yes sir. Dated government securities provide periodic interest payments. बिल्कुल सही है. Enhances liquidity and depth of India's government security market with the help of this initiative. This is correct. So answer is going to be A, C, D, E are the correct answers. Moving on to the next one. Guys, you just check it out and excuse me for a minute. I'll be right back.
Okay. So, continuous clearing and settlement. CCS reduces the float time, improving the liquidity. That is correct. A drawee bank have unlimited time to confirm. No, sir. It has a limited time to confirm. CCS replaces multiple batch sessions with a single continuous session 10 to 4. Correct. Customer credit occurs within 1 hour of settlement. Settlement होने के 1 घंटे के अंदर अंदर अकाउंट में पैसा क्रेडिट हो जाएगा. That is correct. Phase 2 requires drawee confirmation within 3 hours. लेकिन phase 1 जो कि जिसकी शुरुआत हो चुकी है, here the confirmation is need to be done within 10 to 7 p.m. अगला क्वेश्चन देखो. Identify the positive pay system under the check clearing system. So mandatory for checks greater than equals to 5 lakhs as decided by RBI. But RBI ने ये भी कहा कि as per board approved policy, bank can fix this limit for any check greater than 50,000. तो 50,000 से ज्यादा वैल्यू पे आरबीआई खुद डिसाइड कर ले, वरना आरबीआई ने जो मैंडेटरी बैंक को डिसाइड कर ले, वरना आरबीआई ने मैंडेटरी किया 5 लाख से ऊपर. ड्रॉई बैंक्स क्रॉस चेक्स details against pre-registered data. Sorry. Drawee banks cross check डिटेल्स अगेंस्ट प्री रजिस्टर्ड डेटा. जो ड्रॉई बैंक है तो आपका जो प्री रजिस्टर्ड डेटा है उसके अगेंस्ट इस डेटा को चेक करेगा. बिल्कुल सर, अगर डेटा आपने सबमिट किया होगा तो, अगर आपने सबमिट नहीं किया तो चेक वहां पे इन कैश नहीं होगा. सो दिस इज रॉन्ग. नॉन रजिस्ट्रेशन ऑफ चेक डिटेल्स ऑलवेज रिजल्ट इन रिटर्न ऑफ चेक. अगर आपके चेक की डिटेल्स registered nahi hai with the bank, if you are not share the details with the bank, in that particular case what will happen? So in that particular case, non-registration of check, in that case check may be auto updated agar वैसा हुआ, but drawee bank bears the loss. So in this particular case drawee bank automated PPS validation अगर आपको ये criteria को fulfill करना है. So drawer pre-register the check, drawee bank cross check the details. अगर नहीं होगा तो उस केस में it always result in return of check. No sir, it will not result in return of check, it will result in dishonor of check. PPS validation is automated and integrated with CCS deadline. That is correct. Failure of PPS check without drawee response may lead to auto approval. हाँ जी, अगर आपने कोई confirmation नहीं दिया, it will be considered auto approved. So answer is going to be A, B, D, E. अगला. Which of the following statement about NSIC MOU with private bank are correct? So basically I'm talking about the National Small Industries Corporation Limited under Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises signed MOU with private banks to strengthen the credit access for MSMEs. इसमें अगर हम बात करें NSIC signed MOU with Axis Bank, Dhanlakshmi Bank, as well as Karnataka Bank, AU Small Finance Bank and IndusInd Bank. This is correct. If I talk about this particular initiative, the initiative is a part of MSME credit facilitation. True. The program aims to replace public sector banks in MSME. ऐसा कुछ नहीं है sir. It's just to strengthen the last mile credit connectivity, which is a key objective. So NSIC is under the Ministry of Finance. No sir, it is under Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises. So answer is going to be ABT. अगला क्वेश्चन देखो. Identify the benefits of NSIC's MOU program. अगर मैं NSIC's के MOU program की बात करूं, MSMEs get easier access to working capital and expansion finance. This is correct. Bank gained wider outreach to micro and small businesses. बिल्कुल सर, बैंक का रीच भी बढ़ेगा, कस्टमर को भी एक्सेस बढ़ेगा, सप्लाई बढ़ेगी. Reduces formalization of MSMEs. नहीं सर, formalization of MSME का यहाँ पे कोई रोला ही नहीं है, बल्कि it will increase the formalization of MSMEs. It will increase the connect of MSMEs to the formal credit industry. It supports job creation and grassroots industrialization. Yes, that is correct. Encourage participation in the informal credit market. No, encourage participation in the formal credit market. So answer is going to be ABT. अगला question देखो. Which of the following statements about UPI growth in India are correct? Average daily transaction in August was 90,000 crore rupees. In September, it was 86,000 crores. And in October, for just these first 11 days, it has been recorded highest till now. If I'm not wrong, it is around 94,000 crores. If I'm not wrong, it is around 94,000 crores. So till now, the highest daily average transaction for UPI is recorded in the month of October.
That is because of the onset. That is because of the onset of the festive season. So keeping that in mind. So this is correct. Daily transaction volume has increased by 127 million from January to August 2025. That is correct. UPI share in the transaction value decreased. UPI share in the transaction value decreased from, so it has increased, not decreased. UPI का share decrease थोड़ा हुआ, increase हुआ है. Maharashtra leads in both UPI transaction and value as well as volume. UPI replaced cash and debit cards as a dominant payment mode. This is also correct. So answer to this particular question is ABDE. That is correct. Next, identify the correct bank or platform related to the SBI ERD report. अब अगर हम SBI के ERD report की बात करते हैं, regarding what is this ERD report? This is Economic Research Development, Economic Research Department of SBI, which has released this particular report. According to this particular report, SBI was the top remitter bank with 5.2 billion transactions. अगर हम बात करें remitter bank की, तो अगर हम बात करें remitter bank की in terms of UPI transactions, so in terms of UPI transactions, the largest remitter bank was SBI. That is correct. Top beneficiary bank is Yes Bank. तो ये भी आप याद रखिएगा, बेनिफिशियरी बैंक इज येस बैंक विद 8 बिलियन ट्रांजेक्शंस, ये भी करेक्ट है. गूगल पे हैड हायर ट्रांजेक्शन वॉल्यूम देन फोन पे. नहीं सर, वॉल्यूम की अगर आप बात करोगे तो फर्स्ट रैंक पे कौन है? फोन पे है. दैट इज करेक्ट. नेक्स्ट पॉइंट इज फोन पे, गूगल पे, पेटीएम डोमिनेट यूपीआई ट्रांजेक्शंस. दिस इज करेक्ट. प्राइवेट फिनटेक डोमिनेंस शोज बैंक्स कैन नॉट पार्टिसिपेट इन यूपीआई. देखो, बैंक्स कैन नॉट पार्टिसिपेट इन यूपीआई ऐसा तो नहीं है, बट हाँ ये है कि नॉन बैंकिंग इंडस्ट्री ने इस सेगमेंट को काफी अच्छे से कैप्चर कर लिया, इसीलिए आरबीआई ने कुछ इस पे कंडीशंस भी लगाई है विच विल बी इंप्लीमेंटेड फ्रॉम डिसम्बर ऑनवर्ड्स रिगार्डिंग दी वॉल्यूम लिमिट्स, रिगार्डिंग दी मार्केट शेयर लिमिट्स. वो लिमिट्स जो कि लगाई गई है ऑन द यूपीआई 30% market share will be applicable from December 2025 or December 2026? Give me the answer. December 2025 or December 2026? Give me the answer. उठ जाओ भाई, जवाब दो. बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे अभी तो आप लोग, आंसर तो दो. Is it December 2025 or December 2026 regarding the UPI player market limitations? कितना मार्केट कैप्चर करेगा यूपीआई का या यूपीआई सर्विस प्रोवाइडर? तो उस केस में आपका आंसर क्या होगा? व्हाट विल बी योर आंसर? It's December 2026. Remember that. That is correct. So answer is going to be ABD is the correct answer. अगला question. Which of the following statement about the settlement of deceased customer accounts are correct? अगर हम deceased customer account के statement regarding बात करें तो कौन कौन से points correct है? This question is on the basis of draft. I have one more question which is on the basis of the actual guidelines. We will be discussing that as well. Bank can release funds to nominees in account with survivorship clauses without succession rate. अगर हम इस पॉइंट की बात करें, दिस इज करेक्ट. बैंक कैन रिलीज द फंड्स इन केस ऑफ नॉमिनी, कोई सक्सेशन सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है. क्लेम अप टू 15 लाख विदाउट नॉमिनी कैन बी सेटल्ड विद डेथ सर्टिफिकेट, इंडेमनिटी बॉन्ड एंड लीगल ईयर. यस, क्योंकि ये थ्रेशोल्ड से नीचे है इन केस ऑफ कमर्शियल बैंक्स और कोऑपरेटिव बैंक्स में दिस लिमिट इज 5 लाख. क्लेम्स अबव दिस require succession certificate, affidavit as well as third party surety. Correct. Banks can settle dispute claims without court order. No sir, without court order dispute claims नहीं settle होंगे. Pipeline flows must always remain uncredited until court order. जो आपका pipeline flows है, जैसे pensions है या dividends है, they must always remain uncredited until the court order. नहीं सर, ऐसा नहीं है. उसे आप credit कर दो, it will be in the account but it will not be withdrawn until and unless the settlement is done or until and unless the dispute is resolved. ठीक है जी, तो ये पॉइंट याद रखिए. इट विल बी क्रेडिटेड बट इट विल नॉट बी विड्रॉन. दैट इज अ क्लॉज व्हिच यू नीड टू रिमेंबर. अगला क्वेश्चन क्या कहता है? ऑन द सेम वी हैव अ क्वेश्चन. नॉमिनी कैन एक्सेस लॉकर्स कंटेंट डायरेक्टली आफ्टर द डेथ ऑफ द सोल हियर. नॉमिनी कैन एक्सेस, यस सर.
इन्वेंट्री फॉर द लॉकर मस्ट बी रिकॉर्डेड इन प्रेजेंस ऑफ द नॉमिनी, होना चाहिए 2 इंडिपेंडेंट विटनेसेस और बैंक स्टाफ होना चाहिए, दैट इज करेक्ट। क्लेम विदाउट नॉमिनी ऑलवेज रिक्वायर थर्ड पार्टी श्योरिटी रिगार्डलेस ऑफ द डिस्प्यूट। अगर डिस्प्यूट है तो भैया कहानी अलग होगी, लेकिन अगर डिस्प्यूट नहीं है, यहाँ पे रिगार्डलेस आ गया ना, यहाँ पे अगर होता थर्ड पार्टी अप्रूवल और रिक्वायर थर्ड पार्टी श्योरिटी इफ नो डिस्प्यूट। अगर कोई डिस्प्यूट नहीं है तो उस केस में थर्ड पार्टी श्योरिटी रिक्वायर्ड थी, लेकिन अगर डिस्प्यूट है तो उसमें थर्ड पार्टी श्योरिटी से भी कुछ नहीं होगा। वी विल बी वेटिंग फॉर द कोर्ट ऑर्डर्स। नेक्स्ट, बैंक्स मस्ट सेटल डिपॉजिट अकाउंट क्लेम विद इन 15 डेज ऑफ रिसीविंग द कंप्लीट डॉक्यूमेंट्स, ये बिल्कुल सही है। एनआरआई फॉरेन डेथ सर्टिफिकेट्स कैन बी वेरीफाइड वाया बैंक अब्रॉड और एब्सोल्यूट, दैट इज करेक्ट। अच्छा एक चीज बताना, अगर आपने डिले कर दिया डॉक्यूमेंट्स आने के 15 दिन बाद भी, यू हैव नॉट गिवन द डिपॉजिट्स क्लेम, सो इन दैट पर्टिकुलर केस व्हाट विल बी द पेनल्टी? सो पेनल्टी विल बी 5,000 रुपीज पर डे इन केस ऑफ लॉकर, अगर 15 दिन से ऊपर हो जाता है, और इन केस ऑफ डिपॉजिट ये पेनल्टी कितनी होगी? सो दैट विल बी बैंक रेट प्लस व्हाट? सो बैंक रेट प्लस 4% विल बी द रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज एज अ पेनल्टी। तो आपको ये रेट ऑफ इंटरेस्ट बैंक पे करेगा ऑन योर डिपॉजिट फॉर द डिलेड नंबर ऑफ डेज। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है देखना जरा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट about RBI's neutral theme regulatory sandbox are correct? Theme neutral cohort allow applications from any financial domain under the RBI preview, correct? इसीलिए theme neutral है। Fifth cohort concluded in May 2025 successive exits, that is correct. On tap facility allows only pre-specified thematic applications. On tap का मतलब है कि जिसके लिए RBI ने बंद कर दिया या जो थीम कंप्लीट हो चुकी है उसके लिए भी नाउ RBI इज रिसीविंग और RBI इज एक्सेप्टिंग द एप्लीकेशन। सो ऑन टैप फैसिलिटी अलाउज ओनली प्री स्पेसिफाइड, नहीं सर प्री स्पेसिफाइड कुछ नहीं, सबके लिए अलाउड है आज की डेट में। सैंडबॉक्स टेस्टिंग एंश्योर कस्टमर प्रोटेक्शन व्हाइल प्रमोटिंग द इनोवेशन, दिस इज ट्रू। ओनली बैंक्स नॉट NBFCs और फिनटेक्स कैन पार्टिसिपेट, नहीं सर कोई भी पार्टिसिपेट कर सकता है विद रिस्पेक्टेड टू दी कंसर्न सिनेरियोस। हमने एक और पढ़ा था इंटर ऑपरेटेबल रेगुलेटरी सैंडबॉक्स, उसमें भी क्वेश्चन आएगा, वो भी सॉल्व करेंगे। स्टेटमेंट्स रिलेटेड टू IBDIC, क्या है ये IBDIC? सर इट स्टैंड्स फॉर व्हाट? सर इट स्टैंड्स फॉर गाइस IBDIC स्टैंड्स फॉर व्हाट? क्या है ये? नो आइडिया? It stands for Indian Banks Digital Infrastructure Company Private Limited, which is set up by ICICI, HDFC, Yes Bank, as well as Aditya Birla Capital Limited. So it's a blockchain-based deep tier supply chain finance. Remember that. So it uses invoice tokenization to enable financing for tier 2 and tier 3 suppliers. बिल्कुल सही है सर, यही इसका काम है। Second is anchor corporates are involved to verify credit worthiness of the supplier. True, the solution eliminates the need for blockchain और डिजिटल टेक्नोलॉजी, नहीं सर उसी पे तो बेस्ड है, उसके बिना कैसे चलेगा। इट रिड्यूसेस डिपेंडेंस ऑन इनफॉर्मल क्रेडिट, दैट इज करेक्ट। द प्रोडक्ट सक्सेसफुली एग्जिटेड द सैंडबॉक्स इज रेडी फॉर अडॉप्शन वंस द अप्रूवल इज गिवन बाय द रेगुलेटरी एंटिटी, दैट इज करेक्ट। सो ABDE इज करेक्ट। और इस कंपनी का नाम क्या है? सो द नेम ऑफ दिस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन इज इंडियन बैंक्स डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी प्राइवेट लिमिटेड. Partner banks are ICICI, HDFC, Yes Bank, Aditya Birla Capital Limited. Technology, blockchain-based, deep tier supply chain finance. Problem addressed is tier 2, tier 3 MSME face high borrowing cost और credit denial. उसके लिए ये किया गया invoice tokenization, token transfer, digital financing, which results in cheaper, faster and collateral-free finance, which will be eligible to the MSMEs. मजा आया? अगला क्वेश्चन देखो. Which of the following statement about RBI's NFB directions are correct? अब मैं RBI के अगर नॉन फंड बेस्ड क्रेडिट फैसिलिटी डायरेक्शंस की बात करूं तो इसमें क्या क्या पॉइंट्स हमारे सही होंगे. इसमें पहला पॉइंट है NFBs may be issued without a funded facility only in specified cases like derivatives or partial credit enhancement or fully collateralized exposure. This is correct. Guarantee must always revocable to provide flexibility टू रेगुलेटेड एंटिटीज. क्या गारंटी रिवोकेबल होती है? नहीं सर. इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटीज मस्ट
maintain standard of operations, integration, audit trials, that is correct. Co-acceptance can be issued for any type of trade bill, including those already funded by other regulated entities. सर अगर अदर रेगुलेटेड एंटिटीज द्वारा फंडेड है तो उस केस में कैसे होगा ये? दैट इज नॉट अलाउड. स्मॉल बैंक गारंटी कैप इज टोटल up to 5% of the total asset, unsecured 1.25%. This is correct. Small bank guarantee cap क्या है कि सर आपकी total asset का 5% can go for 5% can go for guarantee और उसमें भी जो unsecured होगा that will be 1.25%. मजा आ रहा है? Is it clear guys? Is it clear? Shall I move ahead? चलो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं. अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है. अगला क्वेश्चन कहता है रिगार्डिंग द पार्शियल क्रेडिट enhancement under the RBI non-fund based directions 2025, a partial credit enhancement enhances bond credit worthiness only if pre-enhanced rating is BBB minus. तो ये पॉइंट बड़ा सही है कि सर ये जो PCE है that will be allowed only in case of those instruments which already hold the rating greater than BBB negative, greater than BBB negative. So उस केस में ये पॉइंट सही हो जाएगा. PCE provider, PCE provider can invest in bonds they enhance. They can invest in the bonds they enhance. No sir, that is not allowed. Drawn PCE is treated as an on-balance sheet advance. Undrawn is contingent liability. जो drawn PCE है इसे treat किया जाता है as ऑनलाइन on balance sheet. बिल्कुल जो आपने draw कर लिया वो तो on balance sheet है, बाकी contingent liability है. NBFC's housing finance company bonds receiving partial credit enhancement must have a tenure of greater than 3 years with exposure less than or equals to 1% of the provider's capital. This is correct word by word. Partial credit enhancement covers 100% of the principal and interest. No, sir. It cannot cover 100%. It cannot cover 100%. That is not allowed. That is not allowed by RBI. Keeping that in mind. Next is, which of the following statement about the Aadhaar-based authentication framework for cooperative banks are correct? अगर आप कोऑपरेटिव बैंक्स की बात करते हैं, कोऑपरेटिव बैंक्स के लिए ये जो आधार बेस्ड ऑथेंटिकेशन फ्रेमवर्क है उसे रिसेंटली इंट्रोड्यूस किया गया, विच वाज नॉट earlier applied. So UIDAI under the Ministry of Electronics and Information Technology has launched a framework to onboard cooperative banks into the Aadhaar authentication ecosystem. इसमें अगर मैं बात करूं, this initiative aligns with the International Year of Cooperatives, that is 2025, and it promotes the digital financial inclusion in rural as well as semi-urban areas. It is designed by Ministry of Corporation, NABARD as well as NPCI. अब इसमें customers they can perform basic banking operations through Aadhaar authentication without बैंक ब्रांचेस. ये बिल्कुल सही है सर. डिस्ट्रिक्ट और सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स मस्ट इंडिविजुअली इन्वेस्ट इन सेपरेट आईटी. ना सर, इतना आपके पास पैसा ही नहीं, आप शेयर कर लो स्टेट के साथ, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक के साथ. द फ्रेमवर्क अलाउज बायोमेट्रिक KYC यूजिंग फिंगरप्रिंट्स, आइरिस और फेस रिकग्नाइजेशन. दिस इज करेक्ट. The framework is exclusively for urban cooperative banks and it is for cooperative banks, state, central, all. Aadhaar payment bridge facilitates direct transfer of government benefits into the Aadhaar linked cooperative bank accounts. Correct है, करेक्ट है. सो सर यहाँ पे आंसर क्या बनेगा? ACE. तो इससे क्या होगा, आपका जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर है गवर्नमेंट का, दैट विल बी डन इन अ मोर बेटर, इन अ मोर एप्रोप्रिएट मैनर. दैट इज समथिंग व्हिच यू नीड टू रिमेंबर. अगला क्वेश्चन देखो, रिगार्डिंग द आधार बेस्ड authentication framework for cooperative banks. UIDAI is the nodal agency for Aadhaar issuance and authentication. सही है सर. Aadhaar enabled payment system enables the financial transaction without requiring ATMs or traditional branches. बिल्कुल सर, आप बिना ATM पे जाए, बिना traditional branch पे जाए, आप अपनी जो ट्रांजेक्शन है उसे परफॉर्म कर सकते हैं. दैट इज करेक्ट. द फ्रेमवर्क इज अ स्टैंड अलोन इनिशिएटिव नॉट लिंक्ड विद एनी इंटरनेशनल ऑब्जर्वेंस. दिस इज करेक्ट. दिस इज रॉन्ग. इट इज लिंक्ड विद इंटरनेशनल ईयर ऑफ कोऑपरेटिव्स 2025. The initiative strengthens digital financial inclusion in rural and semi-urban areas. बिल्कुल सर, ऐसा ही होगा. आधार
पेमेंट ब्रिज कैन नॉट बी यूज, नो सर दिस इज रॉन्ग, इट विल बी यूज, इसीलिए तो इनिशिएटिव लिया गया। आंसर इज गोइंग टू बी एबीडी, दैट इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट about I. Bhattacharya appointed as the member of Monetary Policy Committee is correct? He has served for more than 28 years in the central bank, that is correct. He has previously served as governor of Qatar. नहीं सर, कैसे हो सकता, आप किसी और कंट्री के बैंक के गवर्नर होकर फिर वापस आप आरबीआई में आ जाए, ऐसा नहीं अलाउड है। सो बेसिकली हाउ इट इज लिंक्ड or how he was linked with this. Sir, he has been, he has served as economic expert at Qatar Central Bank. He replaces Rajiv Ranjan. This is correct. He worked as an economic expert. This is correct. He was appointed during the 618th central bank meeting. This is correct. So answer क्या बनेगा sir? 1, 3, 4, 5. So B option is the correct answer. अगला question देखो। अब 618th जो आरबीआई की मीटिंग थी उसमें क्या क्या बातें हुई उस पर बात करते हैं। फर्स्ट वन, द मीटिंग रिव्यू डोमेस्टिक एंड ग्लोबल इकोनॉमिक चैलेंजेस इंक्लूडिंग इन्फ्लेशन एंड कैपिटल फ्लो। बिल्कुल सर, ये डिस्कस किया गया। ऑम्बुड्समैन स्कीम परफॉर्मेंस वाज असेस्ड एंड इसीलिए वी हैव रिसीव्ड अ ड्राफ्ट फॉर इंटरनल ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म फॉर द बैंक्स फॉर इंटीग्रेटेड ऑम्बुड्समैन स्कीम ऑफ द बैंक, एंड इवन वी हैव रिसीव्ड अ गाइडलाइन which has said that under the integrated ombudsman scheme, now cooperative banks, that is state cooperative bank as well as central cooperative banks will also be included. Do you remember that? So next is Bhattacharya spent most of his career in RBI's financial market department. In RBI's financial market department नहीं सर, उनका जो ज़्यादा समय निकला है, अगर मैं उनके एक्सपीरियंस की बात करूँ तो उनका जो ज़्यादा समय निकला दैट इज विद द मॉनेटरी पॉलिसी डिपार्टमेंट। सो दिस इज रॉन्ग, इसीलिए उन्हें मॉनेटरी पॉलिसी डिपार्टमेंट का पार्ट बनाया गया। हिज अपॉइंटमेंट इंश्योर्स कंटिन्यूटी इन इंडियाज मॉनेटरी पॉलिसी डिसीजन मेकिंग। ही हैज इंटरनेशनल एक्सपीरियंस, दैट इज ट्रू। सो आंसर क्या बनेगा सर? ए ऑप्शन 1, 2, 4, 5 आर करेक्ट। अगला देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द सेबीज मार्जिन प्लेज रीप्लेज फ्रेमवर्क आर करेक्ट? प्लेज रीप्लेज फ्रेमवर्क के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम बात करें, इंप्लीमेंटेशन टाइमलाइन इज नाउ एक्सटेंडेड टू 10th of October 2025। क्या इसका कोई फर्दर एक्सटेंशन हुआ है? Is there any further extension done? Give me yes or no in the comment section, please. Framework allows brokers to hold client securities directly for margin purposes. No, sir. Now you will not be allowed to hold the client securities directly. Rather, वो client की security depository के पास ही होगी, demat account में होगी, but it will be pledged through the demat account only. Framework mandates all margin obligations to processed only via depositories. This is correct. Pay-in or invoked. Pay-in for invoked pledge is created manually by the brokers. Sir, kuch manually, it will be automatic. Framework ensures automated auditable processing of margin obligations. That is correct. So answer क्या बनेगा sir? 1, 3, 5 is the correct answer. So B option is the correct answer for the given question. अगला question देखो क्या कहता है? Which of the following highlights the SEBI? Which of the following highlights about the SEBI new pledge and repledge? SEBI issued the circular under the Section 11 of SEBI Act 1992. This is correct. This is correct. Regulation 30 of SEBI Regulation 1992 provides authority for this framework. यही power SEBI को मिलती है under this act, under this particular regulation. This is correct. Investor ownership of securities is transferred to the broker. No sir, ownership छोड़ो, securities भी transfer नहीं होगी broker पर. The system helps prevent misuse similar to Carvey stock ब्रोकिंग। सर हाँ, इसमें जो इशू हुआ था उसी वजह से ये चेंजेस किए गए। तुइन कांता पांडे इज द न्यू चेयरपर्सन ऑफ सेबी, दैट इज करेक्ट। सो ए ऑप्शन इज करेक्ट। 1, 2, 4, 5। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द निवेशक सेवा केंद्र in Hyderabad is going to be correct? So in August 2025, Investors Education and Protection Fund Authority has inaugurated 3 Niveshak Seva Kendras in Hyderabad, Telangana, which will operate from 10 a.m. to 4 p.m. It will facilitate transfer of unclaimed dividends pending for 3 to 4 years. It will facilitate transfer of unclaimed dividends pending for 6 to 7 years, not 3 to 4 years. Next point we have is it accept investor service report forms of investor service report of form of 1, 2, 3. That is correct. अगला पॉइंट है, it enables the updating of KYC and bank details with depository participants. SEBI, that is the regulator of capital market. CDSL and NDSL depositories, BSE, NSE stock exchanges, they are the collaborating authorities for these
टाई अप्स फॉर दीज काइंड ऑफ इनिशिएटिव्स. बट उन इनिशिएटिव्स के तहत ये जो क्वेश्चन हमसे पूछा गया रिगार्डिंग द केवाईसी वाला पार्ट, सो व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस केवाईसी वाला पार्ट? इफ आई गो विद द करेक्ट आंसर for this KYC wala part, then my answer to this particular question is fourth statement is correct. Establish under the Companies Act. Sir, nahi. This has been established. Niveshak Seva Kendra has been established under Investors Education and Protection Fund Authority under its own statutory norms, not under the Companies Act. So remember that. ठीक है जी, क्लियर हो गया पॉइंट, समझ आ गया. अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े. नेक्स्ट क्वेश्चन सेज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू आईपीएफए. आईपीएफए की बात करें सर, इट इज क्रिएटेड अंडर सेक्शन 125, दैट इज करेक्ट. एडमिनिस्टर्स द इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड, यस सर, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजिंग दैट. फंड्स include matured deposits, unclaimed dividend, unpaid debentures for greater than or equals to 7 years. बिल्कुल सर, उसी को हम unclaimed कहते हैं और वही ट्रांसफर होगा आईपीएफ में. Only partners with SEBI for investor protection. Only partners with SEBI for investors protection. नहीं सर, ऐसा नहीं है. IPFA has partnered with SEBI, even with IRDAI, even with PFRDA. So keeping that in mind, this is wrong. Conduct financial literacy and awareness programs for the investors. This is correct. So answer क्या बनेगा सर? 1, 2, 3, 5. A option is correct. अगला क्वेश्चन देखो. Which of the following statement regarding GST rate rationalization proposed by group of ministers is correct? Group of ministers ने क्या कहा सर? उन्होंने कहा कि जो GST का स्ट्रक्चर है उसमें 4 स्लैब्स की जगह अब कितनी स्लैब्स होंगी? 2 स्लैब. दिस इज करेक्ट. 5% proposed for merit goods. 5% is proposed for merit goods, not for the standard goods. For merit goods we have 5%. For standard goods we have 18%. For sin goods we have 40%. All sin goods we have 40% or luxury goods. 99% of items under 28% will move to 18%. That is correct. Exemption of health and life insurance proposed under GST. This is correct. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5 is correct. अच्छा 99 नहीं है, sorry, my bad. It is 90%. It was close, so it is 90%. And 99% जो है, that is 99% of items which were under 12% of rate will move to 5%. ठीक है जी, तो 99 वहाँ आएगा. So answer to this particular question is 1, 3, 5. That is B option is correct. Clear हो गया? My bad. Make it clear. Next, which of the following statement correctly describe group of ministers on GST rate rationalization? It was chaired by group of ministers was chaired by Samrat Chaudhary, Deputy Chief Minister of Bihar. This is correct. Group of ministers consists of 6 members, including the Finance Minister of Uttar Pradesh, West Bengal, Kerala. Correct. Recommendations to be forwarded to the GST Council chaired by Union Finance Minister. Correct. Health and insurance for corporates exempted from GST. Sir, health and life insurance for individuals will be exempted from GST. Rationalization aims to reduce classification disputes and simplify compliance. This is correct. So answer is going to be A option. 1, 2, 3, 5 are correct. Agla. Which of the following statement about Government of India's minority stake sale in the 4 public sector banks and Goldman Sachs role who has been appointed for this purpose is correct? The first statement says the stake sale is aimed at meeting SEBI's minimum shareholding requirement of 25%, that is public shareholding should be 25% by 1st of August 2026 is the criteria for the public sector banks. Goldman Sachs will provide valuation, deal structuring, investor education and regulatory compliance. यही काम है Goldman Sachs का. In this particular deal, the sale represent a full privatization of नहीं सर, full privatization का 5% के शेयर हर एक बैंक में से बेचे जाएंगे. Offer for sale allows government to sell new shares issued by the bank. Offer for sale allows to sell new shares. नहीं सर, offer for sale का मतलब है when you are issuing the shares which are in your hands. अगर आपके पास अपने shares हैं वो आप issue कर रहे हैं, that is offer for sale. New shares will be public offer. New shares will be public offer. Trench sales and green shoe option help
manage market stability and liquidity, that is correct. तो आंसर क्या होगा सर? बी ऑप्शन 1 to 5 are correct. अगला, which of the following statement correctly describes the roots, pricing and impact of public sector bank minority stake sale? तो पब्लिक सेक्टर बैंक के माइनॉरिटी स्टेक सेल के चलते कौन कौन से पॉइंट्स करेक्ट है? क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट्स की मदद से कॉमन इक्विटी टीयर 1 कैपिटल वाइल रिड्यूसिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्टेक, बिल्कुल सही है सर. क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट स्ट्रेंथन होगी, लेकिन जो आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का स्टेक है वो कम होगा, दैट इज करेक्ट. ऐसा तो किया गया. फ्लोर प्राइस इज मिनिमम एक्सेप्टेबल प्राइस इन द ऑफर फॉर सेल और एफपीओज, दैट इज फॉलो ऑन पब्लिक ऑफरिंग. ट्रू. फ्री फ्लोट इंक्रीजेस, फ्री फ्लोट इंक्रीज enhances liquidity and index inclusion, बिल्कुल सर. अगर आपके ज्यादा शेयर्स मार्केट में होंगे तो ज्यादा लिक्विडिटी होगी आपके शेयर्स के लिए. रिटेल इन्वेस्टर्स कैन बिड फॉर मोर देन 2 लाख रुपीज पर ट्रांजेक्शन इन ऑफर फॉर सेल. नो. रिटेल इन्वेस्टर्स के ऊपर अगर हम लिमिट की बात करें तो व्हाट इज द लिमिट ऑन द रिटेल इन्वेस्टर्स? सर, इन केस ऑफ रिटेल इन्वेस्टर्स दे कैनॉट बिड for greater than 2 lakhs. Is this correct? Is this point correct? Shall I move ahead, guys? Give me yes, sir. Okay. Next point, what does it say? It says that anchor investor help in price discovery and signaling quality to the market. Anchor investor help in price discovery, और इससे आपके क्वालिटी भी रिप्रेजेंट होगी. अगर एंकर ज्यादा मिल रहे हैं तो उसका मतलब अच्छा शेयर है, दुनिया भर भर के पैसा लगाएगी, तो ऑब्वियस ही बात है दिस विल रिजल्ट इन इंक्रीज. करेक्ट. अगला क्वेश्चन देखो. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द राजीव रंजन इज करेक्ट? सर, ही विल सर्व फॉर नेक्स्ट 5 years एज वाइस प्रेसिडेंट एंड चीफ रिस्क ऑफिसर starting from September 2025 for NDB, that is New Development Bank, which is set up by BRICS. This is correct. So remember that. Next is he will hold the post simultaneously serving as the member of RBI. ना सर, हटा दिया ना इनको तो रिप्लेस किया आई भट्टाचार्य. He brings 35 years of experience in the India's central bank. ये बिल्कुल सही है सर. He has more than 35 years of experience in the India's central bank. His role at NDB involves oversight, credit, operational and market risk frameworks. True. NDB is headquartered in New Delhi. No, sir. It is headquartered in Beijing, China. No, sir. It is headquartered in Shanghai, China. So answer is going to be B option 1, 3, 4 are correct. Now NDB पे ही बात कर लेते हैं. NDB पे कुछ अगर questions हमसे पूछे जाएंगे. NDB was established in 2014, BRICS nation to finance. This is correct. India is the founding member. That is correct. Dr. Rajiv Ranjan, CRO, involves setting monetary policy for. ऐसा कुछ नहीं है सर. The appointment enhances India's representation in the multilateral banking and project financing. बिल्कुल इससे इंडिया का जो representation है that will improve. NDB primarily focuses on domestic Indian projects rather than BRICS wide initiative. नहीं सर, इनका तो wide initiative है. So answer is going to be A option. 1, 2, 4 are correct. मजा आ रहा है? क्लियर हो रहा है? अगला क्वेश्चन देखो. Which of the following statement about LIC reclassification in IDBI bank are correct? SEBI approved the reclassification on 24th of August 2025. SEBI ने कहा कि LIC को we will not be calling as a promoter anymore. We will not be calling as a promoter anymore. We will be calling it as a public shareholder from 24th of August 2025. But there are certain conditions which you have to fulfill. LIC remain a promoter but reduced voting rights. LIC promoter रहेगा लेकिन उनके voting rights कम हो जाएंगे. This is wrong. LIC voting rights are capped at 10%. LIC must reduce its stakes to 15% or less within 2 years. तो आपको अपने stakes को 15% से कम करना है. Voting right आपकी क्लासिफिकेशन के बाद ही, भले आपके शेयर कभी भी कम हो, कल से ही आपकी वोटिंग राइट 10% से कम हो जाएगी. LIC ये अप टू 10% होगी. LIC कैन कंटिन्यू टू हैव बोर्ड रिप्रेजेंटेशन अंडर सेबी अप्रूवल. नहीं सर, बोर्ड रिप्रेजेंटेशन कैसे? LIC का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है इन द बोर्ड रिप्रेजेंटेशन, यानी बोर्ड में भी कोई LIC का मेंबर नहीं है. सो आंसर इज गोइंग टू बी बी ऑप्शन. अगला क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिस्क्राइब द स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट एंड बैकग्राउंड ऑफ IDBI बैंक? तो IDBI बैंक की अगर हम बात करते हैं, दिस बैंक वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1964 एज अ डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन. दैट इज करेक्ट. LIC acquired 51% stake in 2018. That is true. The strategic disinvestment involves selling of 60% shares to the private buyers by government and LIC collectively.
SEBI allows LIC to retain full control over the management, no control. IDBI exited IDBI exited prompt corrective action framework in 2021. This is correct. So answer is going to be C option. 1, 2, 3, 5 are correct. Agla. Which of the following statements about Dr. Urjit Patel is correct? He has been appointed as the executive director, India's executive director to IMF. He has replaced K. Subramaniam, whose term was actually not ended in April 2025, but he was removed before the completion of his tenure. He will represent only India at IMF. No, sir, he will not represent only India at IMF along with India. He will be representing Bangladesh, Sri Lanka, Bhutan. Appointment is done for 3 years and it is approved by Appointments Committee of the Cabinet. That is correct. His prior role as RBI Governor involved demonetization. True. He served as IMF Managing Director before appointment. No. So he has never served as the RBI IMF Managing Director. So answer is going to be B option. That is correct. Agla question dekho. What does the next question says? Which of the following is correct about Dr. Urjit Patel? He served as a governor 2016 to 18. He has not completed his tenure. He rather resigned before completion of his tenure. Oversaw demonetization and inflation targeting framework at RBI. So it has oversaw the demonetization and inflation targeting framework. This is correct. Served as vice president of served as vice president of Asian Infrastructure Investment Bank. That is correct. IMF Executive Board has 25 EDs plus Managing Director. This is also correct. IMF was established in 1954. Not, sir, not in 1954. Rather during the Bretton Woods Agreement. So answer is going to be what? That is C option. 1, 2, 3, 4 are correct. ठीक है जी. Clear हो गया point? समझ आ गया. Shall I move on to the next one? Guys, what do you want? You want me to discuss the news while sharing the details, or you just want me to give the answers in a rapid fire show types? Because the moment I have increased the speed, live count has decreased. That means you are looking forward for detailed revision. That means you want relevant detail for each and every question. Is that a case? Please let me know. Discuss. How many of you want me to discuss? If you want me to discuss, write discuss, or just write DDD so that I can do that. Brief discussion. Yes, brief discussion. Chalo. Moving on to the next question. Which of the following statement about ASI 2023-24 are correct? ASI stands for what? So this is the annual survey of industries. So in case of annual survey of industries, which of the following statements are correct? Tamil Nadu leads employment and number of factories. That is correct. So Tamil Nadu is on the first rank in terms of number of factories as well as employment. The next point is, if I talk about Maharashtra, so Maharashtra has topped in the category of gross value addition. This is correct. Gujarat was on second in terms of gross value addition, and Tamil Nadu is on the third rank. Okay, Gujarat ranked first in case of output as well as fixed capital. If I talk about the output as well as fixed capital, in case of invested capital, in case of fixed capital, in case of output, which state is on the top? So obviously Gujarat is on the top, so that is correct. Total employment has increased by approximately 10 lakhs in the financial year 2023-24. This is correct. Output growth is 5.80%, was lower than the input growth of 4.70%. Is it correct? देखो जरा, अगर आप output और input growth की बात करते हैं, if you talk about output as well as input growth, it is not correct. Why it is not correct? Any idea, guys? Give me the answers.
सो अगर हम आउटपुट ग्रोथ की बात करें दैट इज 5.80%. अगर हम बात करें इनपुट ग्रोथ की दैट इज 4.07%, बट इट वाज हायर देन, नॉट लोअर देन. इंग्लिश की गलती है, जीए की गलती नहीं है. सो आंसर इज गोइंग टू बी सी ऑप्शन. 1 2 3 4 आर करेक्ट. अगला क्वेश्चन देखो. Which of the following statement regarding the same annual survey of industries highlights and industry trends is correct? Fixed capital formation. If I talk about the fixed capital formation, it has increased to 46.24 lakh crores. And if I talk about the year-on-year increase, it has increased from 41.21 lakh crores. Next point is basic metal contributed the highest to gross value addition. Basic metal contributed to the highest gross value addition. तो उसमें आंसर क्या होगा? If I talk about the gross value addition, on the first rank we have the basic metals. On the second rank after basic metals we have motor vehicles and trailers. Then we have chemicals as well as chemical products. And then we have food products. ठीक है जी, ये याद रखना. Over the decade, manufacturing added 57 lakh jobs in the country. This is correct. Tamil Nadu leads GVA. No sir, GVA is led by Maharashtra, not by Tamil Nadu. Last is total number of factories in India is around 2.6 lakhs. This is correct. So answer to this particular question is B option. 1 2 3 5 are correct. Moving on to the next. Which statement correctly reflects India's growth projection in EY Economic Watch 2025? So according to the EY Economic Watch 2025, which of the following points are correct? India is projected to become second largest economy by triple P by 2038. Yes sir, this is correct. And India will surpass which nations? Sir, India will surpass US. Remember that. India will surpass US, not China. China तो already first में चला गया होगा with respect to triple P. India's market exchange rate based GDP will overtake Germany by 2028. That means India will become the third largest economy by 2028 in terms of market exchange rate. This is also correct. This is also correct. Average GDP growth for India is 6.5%. With respect to US, it is 2.1% for the given years. This is correct. Debt to GDP ratio is projected to increase. India की जो debt to GDP ratio है, it is projected to increase. No sir, it is projected to decrease. It will decrease to 75.8%. So it is projected to decrease. Median age in India in 2025 is 28.8. Median age आप सब समझते हैं. And what is the median age in India? So the median age in India is 28.8. Is it correct? Is it correct? Yes sir, is it correct? So answer is B option. 1 2 3 5 are correct. अगला देखो. Which statement correctly describe India's growth? Which statement correctly describe India's growth drivers and global positioning according to EY? EY के according India जो इतना अच्छा grow कर रहा है, it is because of what? So first is strong domestic consumption act as a buffer against external shocks. GST, IPC, that is Insolvency Bankruptcy Board, Insolvency and Bankruptcy Code, Production Linked Incentive Scheme, Unified Payment Interface are cited as the structural reforms which have been done by the government. That is correct. US tariff could affect 9% of India's GDP. US tariff की वजह से India की जो GDP है that will be affected by 0.9%. So US tariff impact 0.9% of India's GDP. And net growth effect की अगर मैं बात करूं, according to this particular report, net growth effect is going to be 0.1%. Net growth effect is going to be 0.1%. So this is wrong. China growth is slowing down due to aging democracy as well as property stress. That is correct. That is correct. Yes or no? 1 second. Okay, this is correct. So by 2030, India's PPP GDP is expected to be 20.7 trillion US dollars. अगर मैं ट्रिपल पी की बात करूं, so India's triple P will be $20.7 billion and China will be $42.2 trillion. Remember that. So keeping that in mind, this is correct. So I hope 1 2 4 5, that means A option is the correct answer. ठीक है जी, समझ आ गया, क्लियर हो गया. आगे बढ़ते हैं.
Which statement correctly describes SEBI proposed IPO changes? तो SEBI ने जो IPO changes प्रपोज किए इनमें से कौन कौन से वो चेंजेस करेक्ट है? पहला है एंकर इन्वेस्टर लॉक इन पीरियड मे बी एक्सटेंडेड बियॉन्ड 30%, 50%, 90%, 50% स्ट्रक्चर. मैं बताता हूँ ये क्या है एक्चुअली में. व्हाट डज इट सेज? If I talk about the extended lock-in period, so currently extended lock-in period 30%, 50%. Next is 90%, 90%, 50%. क्या मुझे आप बता पाओगे ये क्या है? What it basically means? Anyone? Important है. This question can be asked in the examination. So it's nothing to worry if we are taking some time on this. It's okay. What will be the answer? So the answer to this particular question will be, बोलो ना भाई क्या है ये 30%, 50%? हाँ ठीक है. तो ये 30% और 50% का क्या सीन है? चलो मैं बताता हूं इसमें क्या है. पहला द फर्स्ट पॉइंट इज extend the existing IPO lock-in framework currently prescribing 30-day lock-in period for 50% of the pre-issue shareholding and a 90-day lock-in period for the remaining 50% to a longer duration. समझ आई ये बात? तो ये जो 50% है, this is basically in this manner. This is for 30 days, 50%, 90 days, remaining 50%. So this is something which has been given. So this is correct. Number of anchor investors in large IPO greater than 250 crores should be at least 5. Should be at least 5. Institutional allocation may be increased, retail allocation may be reduced. तो इससे क्या होगा? इंस्टीट्यूशनल एलोकेशन जो है वो इंक्रीज हो जाएगी और रिटेल एलोकेशन मे बी रिड्यूस. दैट इज ट्रू. प्रपोजल इंक्लूड्स रिवाइजिंग रिटेल इन्वेस्टर कोटास टू कर्ब अंडर सब्सक्रिप्शन. ये सही है सर. प्रपोजल में रिव्यू करना होगा, रिवाइज करना होगा रिटेल इन्वेस्टर के कोटा को ताकि अंडर सब्सक्रिप्शन ना रहे आपके आईपीओस. एंकर एलोकेशन अप टू 10 करोड़ पर इन्वेस्टर आर डीम्ड सफिशिएंट. सर अगर आपका अगर आपका आईपीओ साइज इज अराउंड 300 to 500 करोड़, इज 300 to 500 करोड़, उस केस में दिस 10 करोड़ वाला पार्ट इज करेक्ट. अप टू 10 करोड़ वाला पार्ट. फॉर 3000 करोड़ इट इज नॉट करेक्ट. सो आंसर टू दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज गोइंग टू बी 134. सो बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर. ठीक है जी, समझ आ गया. अगला क्वेश्चन देखिए. What is the next question? The next question says which of the following correctly talks about the same? So in this case we have the first one. Average main board IPO size has exceeded 3000 crores in the last 5 years. बिल्कुल सही है सर. पिछले 5 सालों में जो एवरेज IPO साइज है on the main board has exceeded 3000 crores. Retail investors, they are expected to get larger share than institutional investors. नहीं सर, this is wrong. Retail investors को तो कम शेयर मिलने वाला अब. Including insurance firms, FPIs, pension fund and domestic funds are also allowed, or they are also taken into consideration by SEBI that they will be allowed to operate as a anchor investor. Anchor investor changes aim to reduce speculative selling post listing. Anchor investor changes aim to reduce speculative selling post listing. This is true. Current anchor allocation norms are fully adequate for large IPOs. No sir. Current anchor allocation जो है, जो आज की डेट में इंप्लीमेंटेड है इंडिया में, दे आर नॉट इन सिंक विद द लार्ज आईपीओस. दे आर ओके फॉर द स्मॉल एंड मीडियम आईपीओस बट नॉट फॉर द लार्ज वन. इसलिए सेबी ने प्रपोजल किया और सेबी हैज स्टार्टेड कंसिडरिंग द सेम. सो आंसर इज गोइंग टू बी 134. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्टली रिफ्लेक्ट्स सेबीज प्रपोज्ड green bond reviewer norms? Green bond reviewers must be independent of the issuer's management, directors and key personals.
सो ग्रीन बॉन्ड्स की अगर हम बात करें, ग्रीन बॉन्ड्स मस्ट बी इंडिपेंडेंट ऑफ द इशूअर्स, मैनेजमेंट, directors and key personnel. This is correct. Reviewers can be compensated in stock options instead of cash to avoid conflict of interest. No sir, this is not allowed. ये तो बिल्कुल allowed नहीं है. This is not allowed. Green bonds must appoint, green bond issuer must appoint reviewers independent of their management, directors and key managerial personnel. This is correct. Remember that. Second is it must process relevant ESG assessment expertise. It should offer documents which disclose the scope of review, second party opinion, verification, certification, ESG scores, everything. The next point is reviewer must possess relevant ESG assessment expertise. That is true. SEBI registered ESG rating providers can act as a reviewer under these norms. बिल्कुल जो SEBI के registered ESG है, ESG reviewers, they can be allowed. That is true. Scope of reviews need to be disclosed in the offer document. Need to be disclosed in the offer document. Correct. But यहाँ पे not है तो ये wrong हो जाएगा. Answer will be B option 1, 3, 4 are correct. ठीक है जी. Clear हो गया. अगला question देखते हैं. Which statement currently describes the purpose and impact of SEBI's proposed norms on green bond reviewers? SEBI's proposed norms on green bond reviewers. पहला, aim to align green bonds with ESG linked bond norms issued in June 2025. That is correct. Designed to mitigate conflicts of interest. Correct. Public comments on the draft were open until 21st of August 2025. Correct. Issuers are allowed to directly appoint internal audit teams as reviewers. No sir, you cannot appoint internal audit teams as reviewers. Enhances investor confidence. That is true. So answer क्या बनेगा sir? इसका आंसर बनेगा 1, 2, 3, 5. That means E option is the correct answer for the given one. ठीक है. Next. Which of the following reflects SEBI's proposed changes related to the related party transactions? So in case of related party transactions, the shareholder approval threshold for related party transaction is proposed to increase from 1000 crores to 5000 crores. This proposal is correct. Related party transactions below 15 crores will require detailed disclosure in the offer document. No sir, they will not require any kind of detailed disclosure. Scale based threshold applied depending on the company's annual turnover. बिल्कुल turnover पे वो scale depend करेगा. Transaction below the threshold do not need shareholder approval. अगर आपकी transaction है below the threshold value, in that particular case you do not need the approval. This is correct. Graded disclosure framework classifies related party transactions into comprehensive, limited and minimum disclosures. ये point ध्यान से सुनिएगा. ये point क्या कह रहा है सर? ये point कहता है graded disclosure जो है, framework जो है, that classifies related party transactions into a comprehensive, limited and minimum disclosures. This is correct. So answer to this particular question is B option 1, 3, 4, 5. अगला question काफी interesting है. अगला question क्या कहता है? What is the purpose and impact of this proposal? पहला, aim to reduce compliance burden for smaller related party transaction. बिल्कुल सर, जो small related party transactions है उसका जो burden है वो कम होगा. Introduce standardized reporting formats for all related party transactions. Introduce standardized reporting formats for all the related party transactions. That is correct. Next is enhance accountability and corporate governance in larger transaction. अब अगर आपकी larger transaction है तो उसमें accountability बढ़ गई, उसमें आपकी corporate governance बढ़ गई, उसका check बढ़ गया. That is a point. Remove shareholders approval requirement for all RPTs. नहीं सर, सब RPTs के लिए इसे रिमूव नहीं किया. हाँ, अगर आपकी बेसिक अगर हम बात करें, पहले जो लिमिट थी थ्रेशोल्ड फॉर शेयर होल्डर्स अप्रूवल 1000 करोड़ से बढ़ाकर कितनी कर दी? 5000 करोड़. स्केल बेस पे अगर मैं बात करूं, अगर आपकी टर्नओवर है अप टू 20,000 करोड़ तो 10% ऑफ एनुअल टर्नओवर यानी 2000 करोड़ या उससे कम, तो उस केस में अप्रूवल चाहिए.
20,000 करोड़ से 40,000 करोड़ की टर्नओवर है तो 2,000 करोड़ प्लस 5% ऑफ टर्नओवर, 40,000 करोड़ से ज्यादा की टर्नओवर है तो 3,000 करोड़ प्लस 2.5% ऑफ टर्नओवर और 5,000 करोड़ विच एवर इज लोअर। तो पहले जो अपर लिमिट थी 1,000 करोड़ उसे 5,000 करोड़ कर दिया, लेकिन इट्स स्केल बेस्ड। अगर आपकी कंपनी का टर्नओवर 20,000 करोड़ से कम है तो 10% ऑफ एनुअल टर्नओवर से ज्यादा की रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन होगी, तभी शेयर होल्डर अप्रूवल रिक्वायर्ड है, अनलेस नॉट रिक्वायर्ड। सो आंसर इज गोइंग टू बी ए ऑप्शन। Next, which statement correctly describes the features and compliance norms of India's first SIF? India's first SIF approved by SEBI. तो अगर हम इंडिया के फर्स्ट SIF की बात करें, what is this SIF? So that is securitized, that is specialized investment funds. When we use this word SIF, so this is basically securitized investment funds, and this approval has been done by Quant Mutual Funds. Sorry, I would say this issue has been done by Quant Mutual Funds. So the SIF will allow both long as well as short-term stocks, long as well as short-term positions in the stock. That is true. Minimum investment per investor is 1 crore. That is true. Units will be automatically redeemed at net asset value if the minimum threshold is not rectified within 30 days. बिल्कुल सही है। अगर आपने मिनिमम को नहीं रेक्टिफाई किया विद इन 30 डेज तो क्या होगा, इस पॉइंट को समझना जरा। सर मिनिमम इन्वेस्टमेंट जो है दैट इज ब्रीच ऑफ थ्रेशोल्ड, यूनिट फ्रोजन, नॉट रेक्टिफाइड इन 30 डेज, ऑटो रिडीम्ड एट नेट असेट वैल्यू। तो उससे क्या होगा, इट विल बी ऑटो रिडीम्ड एट नेट असेट वैल्यू। तो उसके हिसाब से अगर हम चले, थर्ड स्टेटमेंट इज करेक्ट। लेकिन ये जो 1 करोड़ वाला टर्म है, दिस इज नॉट 1 करोड़, दिस इज 10 लाख। आई एम सॉरी फॉर दैट, दिस इज 10 lakhs, so this is wrong. SIF can be structured only as open-ended fund. SIF को आप सिर्फ और सिर्फ open-ended fund बना सकते हैं, नहीं सर, it can be a closed-ended fund. Breach of investment threshold leads to temporary freezing of the units. Yes sir, इससे क्या होगा, temporary freezing होगी आपके units की। This is correct. So answer is going to be B option. अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन कहता है which of the following statements are correct? Marks the first regulatory approval for a specialized investment funds in India. बिल्कुल सर, ये पहला अप्रूवल है। किसने इशू किया सर? रिमेंबर द नेम, क्वांट म्यूचुअल फंड। क्वांट, ये आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड वाला क्वांट म्यूचुअल फंड इज करेक्ट। नेक्स्ट पॉइंट इज enables the strategies previously not permitted under the traditional mutual fund structures. बिल्कुल। Designed primarily for retail investors with low investment capacity. No sir, this is wrong. This is wrong. It is basically designed for in huge investors और for the large investors, जहाँ पे आपने मिनिमम क्राइटेरिया 10 लाख रखा है, वहां पे रिटेल की तो रोल ही खत्म हो गया ना। Aim to enhance risk adjusted returns in the volatile market. This is correct. Provide regulatory clarity and investor protection for high value investments. This is also correct. So answer to this particular question is B option is correct for SIF Quant Mutual Fund. Remember that. Which of the following statements are correct with respect to SEBI norms for related party transactions? तो related party transactions में हमने क्या क्या बातें की। पहला, related party transactions below 150 crores will not require disclosure. below 150 crores will not require disclosure. क्या ये पॉइंट सही है सर? थ्रेशोल्ड एग्जाम्पशन की अगर हम बात करते हैं तो थ्रेशोल्ड एग्जाम्पशन बेसिकली टॉक्स अबाउट दिस कि उसमें आपको एक एग्जाम्पशन मिल गया कि अगर 150 करोड़ से नीचे की ट्रांजैक्शन है तो कोई भी रिपोर्ट करने की जरूरत नहीं है। शेयर होल्डर्स अप्रूवल इज रिक्वायर्ड फॉर ऑल दी आरपीटीज अबव 2500 करोड़, फॉर ऑल दी आरपीटीज अबव 2500 करोड़। ये भी सही नहीं है, दिस इज ऑल्सो नॉट करेक्ट। ऑल आरपीटीज अबव 5000 करोड़ रिक्वायर शेयर होल्डर्स अप्रूवल, नॉट इन केस ऑफ आरपीटी। ये आरपीटी अगर आपका 2500 करोड़ से ज्यादा तो कंडीशन होना चाहिए क्या, कि आपका जो टर्नओवर है वो कितना होना चाहिए, दैट शुड बी ग्रेटर देन 30,000 करोड़, देन ओनली दिस इज इंपॉर्टेंट। ठीक है। एग्जिस्टिंग थ्रेशोल्ड मैंडेटरी जो है वो है 1000 करोड़ की, अब उसे प्रपोज करके बढ़ाकर कितना कर दिया, 5000 करोड़, जिससे क्या होगा 60% ऑफ द टॉप एनएसई लिस्टेड कंपनीज के लिए बार बार अप्रूवल लेना कम हो जाएगा। व्हेन कंपनीज टर्नओवर इज ओवर 30,000 करोड़, अप्रूवल only if 2500 crores, this is correct.
दिस इज करेक्ट. सेकेंड स्टेटमेंट गलत हो गई. फर्स्ट एंड थर्ड आर करेक्ट. Current threshold for mandatory approval is 5,000. No, sir. Current is 1,000 crores. This is also wrong. The proposal reduces 60% of the top. This is true. So answer is going to be B option. 1, 3, 5 are correct. Fourth गलत है ना बेटा. करंट क्या है? करंट तो 1,000 करोड़ है. नया प्रपोजल क्या है? 5,000 करोड़ का. So current is not 5,000 crore. It is 1,000 crore. ठीक है. Next. Which statement highlight the rationale and impact of SEBI's proposed related party transactions? So related party transaction encourage meaningful disclosure rather than procedural burden. बिल्कुल सर, बड़ी ट्रांजेक्शन है तो करो. जो ट्रांजेक्शन छोटी है तो उसमें क्यों बेवजह का प्रोसीजरल बर्डन बढ़ा रहे हो कंपनीज के लिए. अप्लाइज अ टर्नओवर बेस्ड graded system for shareholders approval. This is correct. Applies a turnover based graded system. यहाँ पे एक turnover based graded system है जो मैंने अभी आपको बताया था. 20,000 करोड़, 30,000 करोड़, 20,000 करोड़, 40,000 करोड़, 40,000 करोड़ से ज्यादा. आई हैव गिवन यू द करेक्ट आंसर्स, है ना. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट. अगला पॉइंट क्या कहता है? इट एम्स टू एलिमिनेट ऑल द शेयर होल्डर ओवरसाइट. नहीं सर, ऑल तो गलत हो गया, स्पेसिफिक सही है. बैलेंसेस कॉर्पोरेट गवर्नेंस विद ऑपरेशनल एफिशिएंसी. सही सर, कॉर्पोरेट गवर्नेंस भी है और उसके साथ साथ ऑपरेशनल एफिशिएंसी भी है. इंट्रोड्यूस अंडर द न्यू सेबी चेयरमैन, that is Tuhin Kanta Pandey. This is also correct. So answer is going to be B option. 1, 2, 4, 5. Agla. Which of the following statement correctly describes AU Small Finance Bank transition to Universal Bank? So AU Small Finance Bank is India's largest small finance bank. ये correct है. RBI has granted final approval to convert to a universal bank. Sir, अगस्त में जब ये न्यूज आई थी तब final approval नहीं आया था. That was in principle approval which was given. AU Small Finance Bank total business stands around 2.40 trillion rupees. This is correct. This is correct. और इसमें भी अगर हम बात करें तो हमें क्या याद रखना है? अगर हम इसमें बात करते हैं, what we have to remember is first point is market position में India's largest small finance bank with 40% market share as well as total business 2.40 trillion. Loan growth has witnessed अराउंड 1.09 ट्रिलियन रुपीज नाउ, जो कि पहले 13,000 करोड़ था. और डिपॉजिट है अराउंड 1.24 ट्रिलियन रुपीज. याद रखिएगा. लास्ट एसएफबी कन्वर्जन टू अ यूनिवर्सल बैंक वाज हेल्ड 11 ईयर्स अगो. या ये कहो कि 11 साल पहले से स्मॉल फाइनेंस बैंक हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया, लेकिन तब से कोई भी बैंक को यूनिवर्सल बैंक नहीं बनाया गया. दैट इज ऑल्सो करेक्ट. कन्वर्जन अलाउज ए स्मॉल फाइनेंस बैंक टू ऑपरेट इंटरनेशनली एंड ऑफर कॉर्पोरेट लेंडिंग. बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है. सो आई विल गो विद बी ऑप्शन. 1, 3, 4, 5 आर करेक्ट. नेक्स्ट. विच स्टेटमेंट हाईलाइट्स द सिग्निफिकेंस एंड इम्पैक्ट ऑफ एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक कन्वर्जन? इट रिफ्लेक्ट्स आरबीआई कॉन्फिडेंस इन द एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक. बिल्कुल, अगर आपको यूनिवर्सल बैंक का टाइटल मिला, इसमें इट मीन्स दैट आरबीआई इज हैविंग एन ट्रस्ट ऑन यू. एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक will expand its services beyond financial inclusion mandates. बिल्कुल. क्यों? क्योंकि जब स्मॉल फाइनेंस बैंक्स बनाए गए थे उसके पीछे का अल्टीमेट एम क्या था? सर, द अल्टीमेट एम वाज व्हाट? दैट वाज नन अदर देन financial inclusion as proposed by Usha Thorat committee, but it will be operating beyond that. Marks the first small finance bank to receive the approval as a universal bank in 11 years. That is correct. Allow EU small finance bank to bypass. नहीं sir, universal bank बने हो, बाप नहीं बने. That is not correct. Positions EU small finance bank for broader corporate lending and international operations. ये correct है. So answer क्या बन जाएगा? A option. So remember, EU small finance bank has been titled as Universal Bank of India. Next. Which statement reflects the RBI's panel recommendation on monetary policy operations? तो अगर हम panel recommendations की बात करें monetary policy operations में, उस केस में कौन कौन से statements correct होंगे? Retain weighted average call rate as a primary operating target. अब आपको मैं 10 बार बता चुका हूँ ये क्या है, दोबारा नहीं बताऊंगा. Discontinue all repo and reverse repo operations shorter than 7 days. नहीं sir, discontinue the repo and reverse repo operations of greater than 7 days, not less than 7 days. 14-day VRR, VRRR are discontinued. Correct. Minimum 1 day prior notice is required for liquidity operation, with same day allowed in case of emergency. This is also allowed. Existing instruments like open market operation, foreign exchange swaps are sufficient for durable liquidity management, which has been done since January 2025. RBI has
infuse around 9.5 lakh crore rupees in the economy, majorly with the help of open market operation as well as foreign exchange reserves. So answer will be 1, 3, 4, 5 are correct. So B option is the correct answer. अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं. Which statement correctly describes money market trends noted by RBI panel? Overnight money market turnover increased more than fourfold from financial year 2015 to 2025. इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि सर अगर हम बात करते हैं इंडिया के मार्केट ट्रेंड्स की, तो एज पर द इंडियाज मार्केट ट्रेंड्स जो ओवरनाइट मनी मार्केट की टर्नओवर है, इट हैज इंक्रीज्ड फ्रॉम 2015 टू 2025. तो 2015 से लेकर अभी तक इसका जो टर्नओवर है दैट हैज इंक्रीज फ्रॉम अराउंड 281 ट्रिलियन रुपीज से बढ़कर ये लगभग 1300 ट्रिलियन रुपीज हो गया, यानी 4 गुना इंक्रीज हुआ. दिस इज करेक्ट. Growth in overnight turnover was driven mainly by uncollateralized segment. Growth was in uncollateralized segment. नहीं सर, अगर आप ग्रोथ की बात करें, ओवरनाइट टर्नओवर was driven mainly by uncollateralized segment. नहीं, uncollateralized segment में तो बल्कि कम हुई है ग्रोथ. Uncollateralized call money turnover declined. This is correct. Turnover declined over the period of time. This is correct. Call money market remains dominant segment of the overnight transaction. This is wrong. Last point is collateralized market segment contributed significantly. Yes sir, जो collateralized है यानी जो सिक्योरिटी के आधार पर ट्रांजेक्शंस है, वहां पर कहीं ना कहीं आपका जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज हुआ. दैट इज करेक्ट. सो आंसर इज गोइंग टू बी 135. अगला क्वेश्चन देखो. Which statement correctly reflects SEBI's proposed changes to broker regulation? Algo trading is defined as automated trade execution using computer generated strategies. बिल्कुल सही है सर. Proprietary trading refers to trading client funds to maximize the returns. नहीं, this is wrong. Proprietary trading का मतलब क्या होता है? What do you understand by the word proprietary trading? Any idea guys? Anyone? मैं बताऊं. If you ask me, proprietary trading जो word है, that is basically related to what, अगर आपको याद हो लास्ट क्लास में मैंने ये डिस्कस किया था. yes, अपने फंड्स के own funds is proprietary trading. At least one designated director must reside in India for more than 182 days as for every financial year. That is true. SEBI proposes to define small investors strictly based on trade size. नहीं, this is not correct. SEBI is not going to do that. This is wrong. Broker must maintain records and meet net worth, fee, deposits and operational requirements. This is correct. So answer is going to be what? That is B option 135. That is B option 135. ठीक है जी, क्लियर हो गया. अगला क्वेश्चन देखो. Which of the following are the reasons SEBI proposed revisions to broker regulations? तो अगर आप ब्रोकर रेगुलेशंस की बात करते हैं तो उसमें से कौन कौन से प्रपोजल्स हैं? फर्स्ट इज अलाइनिंग विद द टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट लाइक एग्जीक्यूशन ओनली प्लेटफॉर्म एंड इलेक्ट्रॉनिक ऑर्डर्स. ये बिल्कुल सही है. इनकॉर्पोरेटिंग एल्गो एंड प्रॉप्रिटरी ट्रेडिंग इनटू रेगुलेटरी स्कोप. Incorporating algo and proprietary trading into the regulatory scope. This is correct. Increasing compliance burden. No sir, it will reduce the compliance burden. Harmonizing regulations with Companies Act. ये सही है, आपको harmonize करना होगा regulations with the Companies Act. Ensure at least 2 designated directors reside in India for the for eligibility. No sir, at least 1 is the criteria, not 2. So answer to this particular question would be 1, 2, 4. B option is correct. 2 नहीं चाहिए सर, 1 होगा तो भी चलेगा. So answer is B option. अगला देखो, which of the following statements correctly describes the recent Nifty 500 ownership trends? अगर हम लेटेस्ट निफ्टी ओनरशिप ट्रेंड्स की बात करें, आई गेस वी शुड इग्नोर दिस क्वेश्चन शुड बी इग्नोर्ड, क्योंकि ठीक है पहले तो हम बहुत डिटेल में कर रहे हैं तो ठीक है, अब लास्ट मिनट पे आप ऐसे क्वेश्चन को इग्नोर कर सकते हैं. नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग statements accurately describe SEBI's proposed pre-IPO trading platform? First, it aims to regulate trading of shares
of the unlisted companies. It aims to regulate trading of shares of unlisted companies. बिल्कुल सही है सर. ये जो प्री आईपीओ ट्रेडिंग का मतलब ही क्या है, जो कंपनी लिस्ट नहीं हुई उनके लिए इंट्रोड्यूस किया गया. दैट इज करेक्ट. द प्लेटफॉर्म सीक्स टू एलिमिनेट ग्रे मार्केट ट्रेडिंग. एंटायरली नहीं सर, एंटायरली तो ये ग्रे मार्केट ट्रेडिंग कभी खत्म नहीं हो सकती, लेकिन हाँ कहीं ना कहीं उसके डोमिनेंस को रिड्यूस करने की कोशिश की गई है. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मे बी यूज्ड, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस may be used for risk assessment and fraud detection. Artificial intelligence may be used for fraud detection as well as risk assessment. This is correct. Pre-IPO shares of new age unicorns are not currently traded in the grey market. किसने कहा? ऐसा तो गलत है, तो हो रहा है. The pilot was announced by SEBI at FICCI Capital Market Summit which was organized in August 2025. ये ठीक है. अब मुझसे कोई पूछे कि सर ये जो समिट थी, ये समिट कहाँ ऑर्गेनाइज हुई थी? एनी आइडिया गाइस? इट वाज अनाउंस्ड बाय सेबी चेयरमैन तुहिन कांता पांडे, और ये जो समिट थी इट वाज ऑर्गेनाइज इन मुंबई. से येस और नो? वाज इट ऑर्गेनाइज इन मुंबई? से येस और नो? और इंडिया की जो प्राइमरी मार्केट है इट हैज ऑलरेडी रेज्ड अराउंड 4.3 लाख करोड़ रुपीज इन द फाइनेंशियल ईयर 2024-25 व्हिच यू नीड टू रिमेंबर. अगला क्वेश्चन क्या कहता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्सपेक्टेड बेनिफिट्स ऑफ सेबीज प्री आईपीओ ट्रेडिंग? सो बेटर इन्वेस्टर एक्सेस. अब इन्वेस्टर के पास अच्छा एक्सेस होगा प्री आईपीओ या प्री लिस्टिंग ऑफ द कंपनी. इट विल रिड्यूस इन आईपीओ साइज फॉर मेजर कंपनीज. तो मेजर कंपनीज का जो आईपीओ साइज है क्या वो कम होगा? नहीं सर, कम क्यों होगा? कम तो नहीं होगा. दैट इज नॉट करेक्ट. इट विल इनहांस प्राइस डिस्कवरी. हाँ, प्राइस डिस्कवरी अच्छी हो जाएगी. अब आपको पता है कि प्री आईपीओ ये इतने में बिक रहा था, अब पोस्ट आईपीओ इसके आसपास बिकना चाहिए. दैट इज करेक्ट. इंक्रीज कॉस्ट ऑफ कैपिटल फॉर द कंपनीज. इट विल इंक्रीज कॉस्ट ऑफ कैपिटल. नो सर, इट विल रिड्यूस कॉस्ट ऑफ कैपिटल. पहले आपको घर घर जाना पड़ता था अपने शेयर्स बेचने बिफोर आईपीओ. नाउ यू कैन डू इट थ्रू द प्लेटफॉर्म. तो आपके ऊपर वो जो बर्डन था इन्वेस्टर्स को ढूंढने का वो कम हो गया. ग्रेटर इन्वेस्टर ट्रस्ट एंड पार्टिसिपेशन. सर इससे इन्वेस्टर का ट्रस्ट बढ़ेगा, पार्टिसिपेशन इंक्रीज होगा. दिस इज करेक्ट. सो आंसर इज गोइंग टू बी ए ऑप्शन 135. Which of the following statements correctly describe the proposed IBC amendments 2025? Insolvency application must be admitted within 14 days. Insolvency application must be admitted in 14 days. ये क्या है सर? अगर मैं बात करूं, recently IBC amendment bill 2025 was introduced by the finance minister Nirmala Sitharaman ji. Current challenge है average delay in case admission. 434 days का delay है. Delay होगा तो obviously it leads to increased cost and loss of value in the stressed assets. उस केस में अब proposals क्या proposed है? Educating authority should have prescribed time limits. पहला, committee of creditors can request bid approvals. तीसरा, insolvency application must be admitted within 14 days. तो तीसरा ऑप्शन जो है, तो पहला पॉइंट जो है that is correct. Committee of creditors can directly hand over the complaints to the resolution applicant. That is correct. Amendment cover cross border insolvency and group insolvency. सर इस amendment में ये सब covered है. बिल्कुल सही है. Educating authority will have indefinite discretion. नहीं सर, आपके पास कोई indefinite powers नहीं होगी, कोई indefinite discretion नहीं होगा. इस केस में you have to complete the process as soon as possible. Segmentation of resolution plans is proposed into implementation and distribution phases. Segmentation of resolution plan को आप implementation और distribution phase में divide करो. This is correct. So answer to this particular question is going to be A option. 1, 2, 3 and 5 are correct. अगला question देखो. What are the intended benefits of IBC Amendment Bill 2025? तो अगर हम इस intended benefits की बात करें, सर resolution fast हो जाएगा. correct. It will increase litigation at the admission stage. नहीं सर, litigation at the admission stage will decrease rather than increasing that. तो इससे क्या होगा, जो एडमिशन स्टेज है वो एक मेजर कंसर्न था जहां पे टाइम बहुत लगता था, उसी को आपने क्या कर दिया, ईज आउट कर दिया. इनहांस कॉन्फिडेंस ऑफ द बिडर फॉर स्ट्रेस्ड असेट. बिल्कुल सर, इससे आपके कॉन्फिडेंस बढ़ेगा बिडर का. मैंडेटरी आउट ऑफ कोर्ट रेजोल्यूशन फॉर इंसॉल्वेंसी. ना, कोई मैंडेटरी आउट ऑफ कोर्ट रेजोल्यूशन नहीं है. ऐसा कोई मैंडेटरी कंडीशन नहीं है. हाँ, प्रमोट करेगा कि आउट ऑफ कोर्ट कर लो, दैट विल बी बेटर.
Streamlined approval process for resolution plans. Yes, sir. It has streamlined the approval process. So answer is going to be A option. Next, which of the following statements correctly describe proposed changes to NPS investment? अब proposed changes to investment की बात करें, first one is PFM, that is pension fund managers may invest in gold exchange traded funds under the alternate assets. बिल्कुल सर, under the alternate asset. अब gold exchange traded fund को include किया गया, that is correct. Equity investment could be expanded beyond the 200 companies. अब ये जो equity investment है, which was earlier restricted only to 200 companies, now it can be extended beyond 200 companies as well. The allocation limit for alternate asset could rise from 5 to 10%. So जो allocation limit है for alternate assets, it is 5 to 10%. No sir, it is still 5%. तो अगर हम आज की बात करें तो आज के डेट में what is it sir? It is 5%. But क्या सर प्रपोजल है कि इसे इंक्रीज करेंगे? यस सर, प्रपोजल था इसे इंक्रीज करेंगे और फाइनली इसे इंक्रीज करने का ड्राफ्ट भी दिया गया. गवर्नमेंट सिक्योरिटी एलोकेशन इज कैप्ड एट 75%. सर गवर्नमेंट सिक्योरिटी एलोकेशन की अगर हम बात करें तो इसमें जो करंट एनपीएस की कहानी है, करंट एनपीएस में वी हैव गवर्नमेंट सिक्योरिटीज दैट वी कॉल इट एज जी क्लास असेट. इसमें अप टू 100% अलाउड है. सी क्लास असेट, that is corporate bonds, it is also up to 100%. लेकिन जो इक्विटी क्लास है, ई क्लास, उसका है अप टू 75%. जो आप करंट लिमिट्स की बात करते हैं, और जो ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड्स है उसकी लिमिट है अप टू 5%. तो उसके बेसिस पे अगर हम चले, ये गलत हो गया. एनपीएस सब्सक्राइबर्स दे हैव अर्न्ड 37% रिटर्न सिंस इंस्पेक्शन. जो रिटर्न मिला वो सिर्फ 9.3% मिला. इसीलिए तो ये सारे प्रपोजल्स आए हैं कि भैया उतना रिटर्न नहीं मिल पा रहा, और इसीलिए अब गवर्नमेंट ने यूपीएस की भी बात की है, यूनिवर्सल पेंशन सिस्टम, जिसमें आपको एक प्री डिसाइडेड रिटर्न जरूर मिलेगा. अगर एनपीएस पे अच्छा रिटर्न मिल जाता तो इसको लाने की जरूरत ही क्या थी. सो आंसर इज गोइंग टू बी ए ऑप्शन. 1, 2, 3 आर करेक्ट. अगला क्वेश्चन देखो. What are the potential benefits of including gold ETFs in NPS? So portfolio diversification increase हो गया. Now your portfolio is more diversified. Higher risk without additional return. नहीं सर, एक तो इसका रिस्क बाकी ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड से कम है, और इस पे रिटर्न काफी ज्यादा 37% का रिटर्न मिला जब से इसे इंट्रोड्यूस किया गया. इंक्रीज एलोकेशन फ्लेक्सिबिलिटी फॉर ऑल्टरनेट असेट्स. इंक्रीज एलोकेशन फ्लेक्सिबिलिटी फॉर ऑल्टरनेट एसेट. बिल्कुल सर, फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ गई फॉर ऑल्टरनेट एसेट. अलाइनमेंट विद ग्लोबल पेंशन प्रैक्टिसेस. यस, इट इज अलाइंड. लिमिटिंग एक्सपोजर्स. नो सर, इट हैज बीन नाउ एक्सपेंडेड बियॉन्ड इट. सो आंसर इज गोइंग टू बी ए ऑप्शन, दैट इज 1, 3, 4. अगला क्वेश्चन देखो. Which of the following statements correctly describe RBI's financial year 2025-26 private capital expenditure outlook? तो प्राइवेट कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात करें, प्राइवेट कैपिटल एक्सपेंडिचर इज expected to increase by 20% in the financial year 2025-26. This is correct. Total sanctioned project cost in the financial year 2023-24 amounted around 3.91 lakh crores. This is correct. Greenfield projects contributed 92% of the total projects. Correct. RBI cited declining capacity utilization as a driver for capital expenditure growth. No sir, RBI has not cited declining, rather increasing capacity utilization. 100 basis policy rate cut aided the liquidity for investment. ये correct है. So answer क्या होगा? A option कि भैया जो capital expenditure है, private capital expenditure, how it is going to perform in the economy. अगला question देखो. Which of the following are cited by RBI as supporting factors for the renewed private investment in 2025-26? First one, improved balance sheets. जो आपके corporates हैं उनकी balance sheet improve हुई है. This will increase their investment. That is true. Increased flows in corporate and bond market. अगर आपकी bond market में, corporate bond market में flow increase होगा तो obviously fund ज़्यादा की वजह से investment ज़्यादा. अगर आपको याद हो तो recently we have did a news where SEBI has allowed that against the shares now you can borrow loan up to 1 crore. याद है?
और अगर आप डेट इंस्ट्रूमेंट्स, कॉर्पोरेट डेट इंस्ट्रूमेंट्स के बदले में लोन लेते हैं जिसकी लिमिट पहले 20 लाख थी, अब उस लिमिट को हटा दिया, आप कितनी भी वैल्यू का लोन ले सकते हैं एज पर दी बैंक अप्रूवल्स। रिड्यूस गवर्नमेंट स्पेंडिंग ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर, सर इसका गवर्नमेंट स्पेंडिंग का कोई लेना देना नहीं, गवर्नमेंट की स्पेंडिंग इंक्रीज हुई है। राइजिंग इंपोर्ट्स ऑफ कैपिटल गुड्स, बिल्कुल अगर आपकी कंट्री में कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ेगा, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी, कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ेगा, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी, तो इससे आपका इंपोर्ट कैपिटल गुड्स के बढ़ेंगे, दिस इज करेक्ट। ग्लोबल अनसर्टेनिटी इज लीडिंग टू इन्वेस्टमेंट क्वेश्चन, नो। ग्लोबल अनसर्टेनिटी लीडिंग टू इन्वेस्टमेंट क्वेश्चन, यस और नो। ग्लोबल अनसर्टेनिटी की वजह से आपका प्राइवेट जो इन्वेस्टमेंट है, आई एम टॉकिंग अबाउट द डोमेस्टिक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, उस पर तो कुछ ज्यादा फर्क पड़ने के चांसेस नहीं है, उस पर तो कुछ ज्यादा फर्क पड़ने के चांसेस नहीं है। सो आई विल गो विद 1 2 4, सो आंसर इज ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखो, which of the following are the objectives or reasons behind RBI proposals or RBI proposed NBFC business overlap restrictions? Reduce systematic risk caused by duplicate lending structures. क्या है ये पॉइंट, ध्यान से देखो पॉइंट क्या कह रहा है। which of the following are the objectives behind RBI's proposal for NBFC business overlap restrictions? Reduce systematic risk caused by duplicate lending structures, बिल्कुल सही है सर, ये एक रीजन था। दूसरा रीजन है प्रिवेंट करना एनबीएफसी की सब्सिडीज को फ्रॉम competing with their own parent companies or their own parent banks. Encourage NBFCs to expand rapidly in the new sector, sir. Expansion of NBFC in the new sector has nothing to do with this. Harmonize regulations between banks and shadow lenders, this is correct. हार्मोनाइज करना कि जो आपके बैंक्स है और शेडो लेंडर्स है उनका जो ऑपरेशंस है दैट शुड बी डन इन अ सेम वे सो दैट इट विल अवॉइड सिचुएशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, Which type of NBFCs are likely to be the most impacted by proposed RBI directives? तो सबसे ज्यादा जो इम्पैक्ट होंगी NBFCs वो है हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज विद नो बैंकिंग एफिलिएशन। अगर आपकी हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज हैं जिनमें कोई बैंकिंग एफिलिएशन नहीं है, क्या वो इम्पैक्ट होंगी? नहीं सर, सब्सिडरी रिलेटेड है ना। NBFCs engaged only in corporate lending will be affected, no peer-to-peer lending platforms, no। सबसे ज्यादा जो impact होगा that will be gold finance companies and NBFCs with micro finance arms। तो वो गोल्ड फाइनेंस कंपनी जिनकी माइक्रो फाइनेंस आर्म्स है, वो NBFC जिनकी माइक्रो फाइनेंस आर्म्स है, उनमें डुप्लीकेशन, उनमें सारे इश्यूज आएंगे, तो आंसर विल बी बी ऑप्शन। अगला, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द प्री पेमेंट। प्री पेमेंट वाला पॉइंट याद है ना कि भैया अगर आप अपने लोन का प्री पेमेंट करते हैं, स्पेशली अगर आपका फ्लोटिंग लोन है तो उस केस में कोई पेनल्टी चार्ज नहीं होगी। अगर फिक्स लोन है तो पेनल्टी बैंक चार्ज कर सकता है। फ्लोटिंग के केस में भी बिजनेस लोन है तो चार्ज होगी पेनल्टी, दैट टू इन केस ऑफ स्मॉल फाइनेंस बैंक या आरआरबीज या एनबीएफसीज और कोऑपरेटिव बैंक्स। बट इन केस ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक्स, प्राइवेट बैंक्स, टीयर 4 अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स या फिर टॉप लेयर NBFCs, मीडियम लेयर, टॉप लेयर NBFCs, तो उस केस में कोई पेनल्टी चार्ज नहीं होगी इवन इफ द लोन इज गिवन फॉर द बिजनेस पर्पस। ठीक है, सो नो प्री पेमेंट चार्जेस आर अलाउड फॉर फ्लोटिंग रेट लोन्स टेकन बाय इंडिविजुअल्स फॉर नॉन बिजनेस पर्पसेस इवन इफ को ऑब्लिगेशंस आर प्रेजेंट। हाँ, अगर आपने नॉन बिजनेस लोन लिया तो कोई पेनल्टी होगी नहीं। फॉर बिजनेस लोन्स अप टू 50 lakhs sanctioned by small finance bank, pre-payment charges can be still imposed. Yes sir, this is true. सॉरी, फॉर बिजनेस लोन्स अप टू 50 लाख। हाँ, अगर 50 लाख से कम है तो कोई चार्जेस नहीं होंगे। इन डुअल और स्पेशल रेट लोन्स द चार्ज ऑफ प्री पेमेंट चार्जेस डिपेंड ऑन वेदर द लोन इज ऑन फ्लोटिंग रेट एट द टाइम ऑफ रीपेमेंट। अगर आपका ड्यूअल लोन है और अगर आपका लोन इज इन floating rate and at that particular moment you are making the prepayment, no charges, but if it is in fixed then charges will be charged. For cash credit or overdraft, prepayment charges, if any, can only be charged on the sanctioned limit, not on the outstanding balance. This is true, but in case of term loan, it will be on outstanding. In case of term loan, it will be on outstanding balance. Remember that. Old circulars on the prepayment charges automatically become invalid from 1st of January 2026. This is correct. So answer is going to be what? So C option 1, 3, 4, 5 are correct. अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा जरा। The next question says RBI's final guidelines on due diligence of Aadhaar-enabled payment system touchpoint operators. First one, the guidelines effective from 1st January 2026 are issued under the Payment and Settlement System Act 2007. This is correct.
एक्वायरिंग बैंक जो है इट शुड कंडक्ट फुल केवाईसी of all the AEPS touch points, even if they have already undergone KYC as a business correspondent. नहीं सर, अगर आप ऑलरेडी बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट की तरह KYC कंप्लीट कर चुके हैं तो दैट केस में दोबारा KYC नहीं करवाना पड़ेगा. If Aadhaar enabled payment system touch point operators remain inactive for 3 consecutive months, उस केस में KYC होगा. बिल्कुल सही है. एक्वायरिंग बैंक मस्ट इंटीग्रेट ऑपरेशनल पैरामीटर्स जैसे कि लोकेशन, टाइप, वॉल्यूम, वेलोसिटी ऑफ ट्रांजैक्शंस इनटू देयर फ्रॉड रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क. ये बिल्कुल ठीक है. APS transactions are facilitated through Aadhaar based biometric or OTP authentication for service like cash withdrawals, fund transfers and balance inquiry. APS जो है that can provide you with these facilities with the help of Aadhaar based biometric or OTP authenticated transactions. This is correct. तो आंसर क्या बन जाएगा? बी ऑप्शन. अब आप जाइए आधार कार्ड डिटेल्स और अपने बायोमेट्रिक फीचर्स की वजह से यू कैन कंप्लीट योर बैंक अकाउंट ट्रांजैक्शंस. करेक्ट. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन. अगला क्वेश्चन क्या कहता है? कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द रीसेंट changes announced by RBI regarding standing deposit facility, marginal standing facility, as well as market timings. So from 1st July 2025, the timing for SDF and MSF has been extended from 7 to 11:59. पहले ये 5:30 PM था. क्यों? क्योंकि आपने कॉल मनी मार्केट का टाइम अब 7 बजे तक कर दिया, 9 बजे से, जो कि पहले 5 बजे तक था. इस वजह से ये चेंजेस किए गए. रिमेंबर दैट. Call money market have been extended through market repo rate, market repo and tri-party repos. Hours have been extended till 5 PM. नहीं सर, इनके hours 5 PM तक extend नहीं किए. इनके hours extend किए till 4 PM. Remember this. Government securities, foreign exchange and interest rate derivative markets have no change in the timings. This is correct. These changes are based on recommendations of Radha Shyam Ratho working group. This is also correct. So answer is going to be B option. ये नाम याद रखना, राधा श्याम राठो वर्किंग ग्रुप. डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, फिर मत कहना बताया नहीं था. अगला क्वेश्चन सुनो. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द डिपॉजिटर्स एजुकेशन फंड and its revised guidelines which are effective from 1st of October 2025. The Depositors Education and Awareness Fund was established under Section 26A of Banking Regulation Act 1949 and is maintained by the Reserve Bank of India. Sir, इसे maintain किया जाता by Reserve Bank of India. This is correct. Bank must transfer unclaimed deposit to DEF quarterly through e-Cobase system, including interest accrued till the transfer update. No sir, it will be transferred on monthly basis. Refund claims by banks must be submitted, verified during the first 5 days or 10 days of the month. So during the first 10 days you can raise the claim, and in the last 5 days you will receive the claim. RBI pays simple interest on the deposits in the DEF. That is true. Udgam portal was launched in August 2023. Udgam portal was launched in 2023 by RBI, Rebit and IFTAS. तो इसको अगर हम ध्यान से देखें, Udgam portal was launched in August 2023, was jointly developed by RBI, Rebit and IFTAS. So participating banks to help the public locate claims unclaimed. This is correct. So answer इस क्वेश्चन का क्या बनेगा सर? इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा फर्स्ट इज करेक्ट, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ आर करेक्ट. तो इस हिसाब से हमारा जो आंसर बना दैट विल बी 1345. दैट विल बी 1345. अगला क्वेश्चन देखो. अगला क्वेश्चन क्या कहता है सर? अगला क्वेश्चन कहता है आरबीआई मास्टर सर्कुलर ऑन क्रेडिट फैसिलिटेटिंग टू एससीज एज वेल एज एसटीज under the differential rate of interest scheme. SC/ST borrowers are eligible for the loans up to 15,000 rupees at 4% and 20% in case of housing loan. This is correct. At least 40% of the beneficiaries should be, not 40%, so it should be at least 50%. Banks are required to set up special cell at head office to monitor SC/ST credit. This is correct. The Credit Enhancement Guarantee Scheme for scheduled caste provides guarantee
from 15 lakhs to 5 crores up to 7 years. This is also correct. Under the lead bank scheme, district level consultative committee is headed by lead bank zonal manager, reviews credit planning at the district level. This is also correct or not? No, sir, this is incorrect. Why it is incorrect? Please pay attention. Why it is incorrect? Anyone can give me the answer for this? Sir, it is headed by district collector. This is headed by district collector, not by the lead bank zonal manager. So it is headed by district collector, guys. Mark kar lena ye point. It is headed by district collector. Agla question. With reference to the $200 million Green Climate Fund, Asian Development Bank Clean Energy Initiative in India, consider the following statements. तो पहली statement क्या कहती है? GCF was established in 2010 under the Kyoto Protocol, and its headquarters is in South Korea. So GCF was established in 2010 under the UNFCCC, not in Kyoto Protocol. So it was not applicable. It was UNFCCC. Rest all is correct. $200 million approved by GCF will be implemented in India through the India's Green Finance. Through the India Green Finance facility, the first GCF ADB partnership in India. This is true. The ADB will channel the funds via line of credit to India development financial institutions, which will further develop clean energy project pipelines. This is correct. Technology जो है, that is targeting IGFF, which include the round the clock renewables, green hydrogen, compressed biogas, rural e-mobility, and decentralized renewable solutions. This is correct. Last point is a $65 million risk sharing facility has been built into IGFF to extend partial credit guarantees, especially supporting the developers in the CBG sector, that is compressed biogas sector. So answer will be 2, 3, 4, 5 are correct. Rest first statement is wrong. Clear हो गया जी? अगला क्वेश्चन देखो. अब अगला क्वेश्चन है with reference to the world banks, with reference to the World Bank Spring 2025 Poverty and Equity Brief. तो इसके बेसिस पे अगर हम पहला पॉइंट पे चले, Poverty and Equity Brief are released twice a year, aligned with spring as well as annual meetings. This is correct. As per the World Bank 2025 brief, India has been placed in the low inequality criteria. No, sir, India has been placed in moderate inequality, not low inequality category, moderate inequality, where the score is between 25 to 30. Among the countries such as Iceland, Norway, Finland, नहीं सर, ये तो पहला पॉइंट ही गलत हो गया, तो आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं है. India's consumption based Gini's coefficient has improved, falling from 28.8 to 25.5 in 2022-23. This is correct, but ये क्या है? So this is consumption based Gini's coefficient, not income based Gini's coefficient. ये important है. India's income based Gini's coefficient has declined from 62 to 52, showing convergence between rich and poor household. No, sir. Incorrect है. Income based Gini's coefficient 52 से या 0.52 से बढ़कर 0.62 हुआ है, कम नहीं हुआ. This is wrong. Between 2011 to 2023, around 171 million Indians are lifted out of the extreme poverty. This is correct. So answer क्या बनेगा? 135 are correct. B option is the correct answer. Next. India's income based Gini's coefficient has, ये word आएगा increased. It has increased from 62 to 52, means it has improved. 0.62 से 0.52 हुआ तो improve हुआ, तो statement is wrong. So answer is going to be B option 135. अगला देखो, which of the following statements
are correct with respect to the biofuel sector. Biofuel sector के हिसाब से अगर हम देखें, India became the world's fourth largest biofuel consumer in 2024, surpassing US for the very first time. This is correct. Is this statement correct? Is this statement correct? Give me the answer. नहीं सर, इंडिया ने फोर्थ लार्जेस्ट तो बना, ये तो सही है, लेकिन इंडिया ने सरपास यूएस को नहीं किया, चाइना को किया. यूएस तो टॉप पे है, दैट इज नॉट करेक्ट. इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम इन्वॉल्व्स ब्लेंडिंग इथेनॉल with diesel for trucks. So ethanol blending is done for petrol, not for diesel. तो ये भी गलत हो गया. India's biofuel consumption grew at compounded annual growth of 31.8%. This is correct. 1 barrel of oil equivalent equals to 1700 kilowatt hour of energy. This is also correct. Fifth statement क्या कहती है? India's biofuel production in 2024 exceeded China for the 10th consecutive year. No sir, India's biofuel production is still behind China despite of the growth. There is a growth, but it is still behind China. So answer is going to be B option. 3 and 4 statement are correct. Rest all are incorrect. अगला question देखो. Which of the following statement is correct about NDB and its recent developments? So in case of NDB and its recent development, तो पहला point क्या है? Colombia as well as Uzbekistan. With inclusion of Colombia and Uzbekistan, NDB has how many members? Or NDB has 11 members, not 12. Brazil, Russia, India, China, South Africa together retain 55% of the total voting rights. This is correct. The 10th annual meeting of NDB Board of Governors was held in Shanghai, China. Was held in Shanghai, China? No sir, it was held in Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. In Brazil. Next is all NDB funded projects are required to fulfill climate and social governance. This is correct. Anton Silonov, Russian finance minister, has been appointed as the vice president of NDB. No sir. No sir. Anton, पहले भी बताया था शायद मैंने, Anton Silonov was elected as the chairperson of Board of Governors. And if you talk about the vice president, so the vice president is VP is Roman Serov. VP is Roman Serov. ठीक है जी, क्लियर हो गया, याद रहेगा. आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखो. Which of the following statement about the Financial Service Institution Bureau and its recent appointments is correct? पहला क्वेश्चन, भानु प्रताप शर्मा term as FSIB chairperson has been extended till June 2026 and he is the first chairman of this organization. That is correct. FSIB select executives for public sector banks, private banks as well as insurance companies. No sir, public sector banks and public sector insurance companies, not private ones. FSIB was established in 2016 as BBB and it was restructured into FSIB in 2022. बिल्कुल सही है सर, पहले PPB था, BBB था, अब उसको रिप्लेस करके FSIB बना दिया. Appointment committee of the cabinet is chaired by finance minister. No sir, it is chaired by Prime Minister of India. FSIB act as primary headhunter for whole time director as well as non-executive chairperson. This is correct. So answer क्या बनेगा? A option 1, 3, 5 are correct. अगला क्वेश्चन देखो. Which of the following statement about Bulgaria joining Eurozone is correct? Bulgaria has joined as a country under the Eurozone. So Bulgaria becomes the 21st country to adopt Euro on 1st of January 2026. That is correct. The official conversion rate is set at this value. अगर मैं वैल्यू की बात करूँ, एक्चुअली में ये वैल्यू क्या है सर? दिस वैल्यू इज ऑपोजिट कैसे? अगर हम बात करें 1 यूरो जो है दैट इज इक्वल्स टू 1.95 लेफ्ट. तो बस आपको ये कंपैरिजन के लिए मैंने ये क्वेश्चन को इंक्लूड कर लिया इस ऑप्शन को. नेक्स्ट इज यूरोपियन सेंट्रल बैंक मैनेजेस द फिस्कल पॉलिसी फॉर द मेंबर कंट्रीज. नो सर, फिस्कल पॉलिसीज ECB manages monetary policy but the fiscal policy remains with the individual government. To join Eurozone, countries must maintain a government deficit less than 3%, debt less than 60% of GDP. This is correct. Croatia was the most recent
in January 2023. This is correct. So 1 to 4, 1 to 5, D option is correct. ठीक है जी, क्लियर हो गया पॉइंट, समझ आ गया? If it is clear, just give me yes sir. So we have done with 100 questions, 300 questions है, and we have already done with 2.5 hours. So I'm expecting कि we will be able to cover 100 more questions in next 1 hour to 1:30 hour, 1 hour और 1.5 hour. तो इसका मतलब लगभग 2 बजे तक we will be able to complete 200 questions. फिर देखेंगे उसके बाद what do you want. If you want me to cover rest 100 questions today or maybe in the next session, that will be decided. ठीक है, ब्रेक ले ले. Let's take a break for 5 minutes. I'll just have some water. So we will be meeting again at 12:35. बट जाने से पहले एक बार मुझे ज़रूर बताना, ब्रेक में जाने से पहले, आर यू एंजॉइंग द डिस्कशन? आर यू एंजॉइंग द डिस्कशन? मज़ा आ रहा है ना? यू आर लर्निंग न्यू थिंग्स, यू आर एबल टू रिटेन द डेटा. कॉन्फिडेंस आ रहा होगा कि आप अपने पुराने डेटा को रिटेन कर पा रहे हो. कहीं ना कहीं वो सिचुएशन है जहाँ पे आप चीज़ों को आंसर भी कर पा रहे हैं. सो जस्ट गिव मी द करेक्ट आंसर इन द कमेंट सेक्शन. ठीक है, ठीक है. अगर अभी तक आपने इस सेशन को लाइक नहीं किया, आई वुड रिक्वेस्ट यू क्विकली लाइक द सेशन एंड आई विल बी बैक इन 5 मिनट्स. चलेगा? विल इट बी फाइन? चलो, कैच यू ऑल एट 11:30, सॉरी 12:35.
Okay. What is the doubt, Harini? Please ask your doubt. I'll answer your doubt. अब डाउट ही लिख देते ज्यादा बेटर था, मैं आते ही आपको आंसर कर देता. चलो स्टार्ट करें. आई होप यू ऑल आर बैक. Do one thing, Harini, you can post your doubt in the comment section once the class is over. Then I will be replying in the comment section itself. ठीक है जी. So let's move to the next point. हाँ, that is true. अगर 15 करोड़ से कम है रिटेल रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन तो उसमें नहीं चाहिए अप्रूवल. दैट इज करेक्ट. 150 करोड़ का तो बिग बैरियर दे दिया, 15 करोड़ तो रैंडमली बोल दिया, तो रैंडमली इट इज करेक्ट. नेक्स्ट, which of the following statement about the RBI's eco-based system and new government payment rules is correct? Eco-based systems and the new government payment rules is correct. From 16th of January 2025, all central bank payments above 75 crores must be made using eco-based system. This is correct. Previously, payments over 100 crores were required to go through with eco-based. No, sir. Previous जो target था, that was 500 crores. प्रीवियस जो था दैट वाज 500 करोड़ कि अगर आपकी ट्रांजैक्शन 500 करोड़ से ज्यादा तो दैट विल गो थ्रू ई-कुबेर. सो दिस इज रॉन्ग. ई-कुबेर हेल्प्स डिपार्टमेंट्स ट्रैक पेमेंट इन रियल टाइम एंड रिड्यूसेस द फंड मैचिंग टाइम टू जस्ट 24 आवर्स. दिस इज करेक्ट. ई-कुबेर is a platform developed by Ministry of Finance to handle government to government bank transactions. No sir, it is a platform which is developed by RBI, not by Ministry of Finance. Government is considering lowering the threshold limit mandatory e-कुबेर payments to 50 crores from 75 crores. ये भी बातें चल रही हैं कि इसको और further reduce किया जाएगा. So answer is going to be A option. 1, 3, 5 are correct. अरे उठ जाओ, आ जाओ फॉर्म में. Come on, give me the answers. किसी ने आंसर नहीं दिया यार इस क्वेश्चन का. किसी ने भी आंसर नहीं दिया इस क्वेश्चन का. चले आगे. क्लियर है? चलो. Moving on to the next question. Which of the following statement is correct with respect to RBI's guideline on collateral-free loans and voluntary pledge of gold and silver is correct? Collateral-free agriculture loan have been increased. Limit has been increased from 1.6 to 2 lakhs. This is correct. MSMEs, they can access collateral-free loans up to 10 lakhs with an enhanced limit of 25 lakhs if they have good repayment. If they have good repayment track record, this is correct. Accepting voluntary pledges of gold or silver for loans within collateral limit violates RBI guidelines. नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं. अगर आप एक्सेप्ट कर रहे हो इट्स ओके, बट आरबीआई कहता है इट शुड नॉट बी सेट मैंडेटरी बाय द बैंक. PMEGP loans under KVIC are eligible for collateral free lending up to 10 lakhs. This is true. Banks are encouraged to use credit guarantee scheme for collateral free loans and its usage can be considered in staff performance evaluation. This is also correct. So answer to this particular question is 1, 2, 4, 5 are correct. Moving on to the next one. Which of the following statements about the strategic sale of IDBI Bank and related banking regulations is correct? Strategic sale of IDBI which is expected is 60.7% government or LIC का मिलाकर. This is correct. Second is under the Government Regulation Act 1949, no shareholder other than government can exercise more than 26% of the voting rights even if they own a higher stake. ये बिल्कुल सही है. RBI क्या कहता है? बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के अकॉर्डिंग नॉन गवर्नमेंट shareholder in a public sector bank cannot possess more than 26% of the voting rights. The strategic sale of IDBI is expected to conclude by December 2025. I think it was expected by October 2025. I'm not sure, but it was not December. Shortlisted bidders include Fairfax India, Emirates, MBD, Kotak Mahindra Bank. This is correct. The deal is likely to be the largest transaction in the banking, financial services and insurance sector and the largest overall transaction in the India's corporate history. This is also correct. सही है? नो सर. अगर आप इसको पढ़ेंगे तो ध्यान से सुनिएगा. सर ये जो डील है दिस इज लार्जेस्ट इन फ्रंट और इन केस ऑफ BFSI, बट
इफ यू टॉक अबाउट ओवरऑल इट इज सेकंड लार्जेस्ट। इससे पहली जो बड़ी डील हुई थी वो हुई थी फ्लिपकार्ट और वॉलमार्ट की इंडिया में। सो कीपिंग दैट इन माइंड 1 2 4 ए ऑप्शन इज करेक्ट, फिफ्थ ऑप्शन इज नॉट करेक्ट। ठीक है जी, क्लियर हो गया, क्लियर हो गया। ओके, moving on to the next, which of the following statement about NVIDIA and its role in AI and computing is correct? NVIDIA has become the first publicly listed company to reach a mark of $4 trillion. This is correct. NVIDIA's GPU power almost 90% of AI chips which are used in data centers. True. NVIDIA's Blackwell Ultra AI chip launched in March 2025 primarily targeted कस्टमर लैपटॉप्स एंड स्मार्टफोन्स। नहीं सर, ये चिप्स तो टारगेट की है, इन चिप्स ने टारगेट किया क्लाउड जायंट्स को, रिसर्च इंस्टीट्यूशंस को, एंटरप्राइज एआई यूजर्स को। सो दिस इज रॉन्ग। देन द नेक्स्ट इज NVIDIA's GPUs are essential for training large language models like ChatGPT. True. Microsoft Corporation has higher market valuation than NVIDIA. No sir, NVIDIA is on the top. So answer is going to be first option. Answer is going to be first option. Microsoft was around $3.75 trillion. So it was not on the first rank. NVIDIA is on the first. Moving on to the next one. अगला question क्या कहता है? Which of the following statement is correct about India's MedTech initiative and global recognition? The World Health Organization Forum at AMTZ Visakhapatnam is the only global health initiative to join BRICS plus manufacturing working group. That is true. That is absolutely true. ये एक मात्र ऐसा is the only global health initiative to join BRICS plus manufacturing working group. Second is AMTZ is Asia's first medical technological manufacturing park. This is also correct, which is located in Visakhapatnam. WHIF focuses solely on domestic healthcare innovation. No sir, it is focusing, or it will engage in global collaboration connecting governments, industry as well as startups. BRICS plus manufacturing working group aims to promote joint manufacturing technology sharing and localization of supply chain. This is correct. Next is AMTZ provides facilities such as 3D printing centers, electronic labs, India's first detected medical device testing labs. This is also correct. So answer is 1, 2, 4, 5. That means B option is the correct answer. Only the second option is wrong. Sorry, third option is wrong. क्यों गलत है वो मैंने आपको बता दिया। अगला क्वेश्चन देखो। Which of the following statement about RBI recent enforcement action against HDFC Bank and Shriram Finance is correct? तो RBI ने recent एक action लिया। उस केस में HDFC Bank has been charged with a penalty of 4.88 lakh rupees for breaching foreign investment related norms while sanctioning a term loan. This is correct. Shriram Finance was penalized 2.7 lakhs for routing loan repayment through a non-compliant accounts. This is also correct. RBI stated that these violations had significant impact on the overall health. नहीं sir, कहाँ इतना कोई overall impact नहीं हुआ. Next is the objective of RBI's penalty includes promoting compliance, ensuring customer protection and maintaining trust in the banking and NBFC ecosystem. ये सही है. Next is RBI imposed penalties to reduce capital adequacy ratio. नहीं sir, RBI सिर्फ और सिर्फ penalty charge करता है in order to implement or in order to have its regulatory compliance and accountability in effect. So answer is going to be A option. 1, 2, 4 are correct. अगला question देखो. Which of the following statements about India and Namibia UPI licensing agreement is correct? So with respect to India and Namibia relationships, if we talk about which of the statements are correct, it is the first country in the world to sign licensing agreement with India's NPCI to adopt UPI platform as it is in Namibia. That is correct. The agreement allows real-time person-to-person and person-to-merchant payments in Namibia. That is correct. NPCI International Payment Limited and Bank of Namibia are the signing parties. Who are the signing parties? Yes sir, these two are the signing parties. The deployment of UPI in Namibia is the first instance of UPI being used via an open source model abroad. No sir. This deployment in Namibia is not an open source model, rather it is a license model.
ओपन सोर्स मॉडल में तो बहुत सारी कंट्रीज है, लाइसेंस मॉडल में पहली है, दैट इज अ पॉइंट. द इनिशिएटिव स्ट्रेंथन इंडियाज डिजिटल डिप्लोमेसी and promotes financial inclusion, obviously in Namibia. This is correct, so answer is going to be B option. 1, 2, 3, 5 are correct. अगला क्वेश्चन देखो, which of the following statement about India's UPI and its global impact is correct? India's UPI and global impact की अगर हम बात करें, UPI processed over 18 billion transactions in June 2025. I would suggest you कि इस न्यूज को इग्नोर कर देते हैं because it is related to, या मैं ये कहूंगा कि फर्स्ट स्टेटमेंट को इग्नोर कर सकते हैं. इफ यू डोंट रिमेंबर द फर्स्ट स्टेटमेंट, इट्स ओके, बट इट इज करेक्ट. इन फाइनेंशियल ईयर 2024-25 यूपीआई अकाउंटेड फॉर 48.5% ऑफ द ग्लोबल रियल टाइम पेमेंट्स. दिस इज करेक्ट. IMF lauded UPI for interoperability, enabling users to transact across different apps as well as banks. This is correct. UPI require both sender and receiver to use same payment app. नहीं sir, phone pay to Google, Google to phone pay. Countries like Bhutan, Mauritius, Nepal already using UPI active via QR or payment bridge. This is correct. So answer is 2, 3, 5. 1, 2, 3, 5. So 1, 2, 3, 5 means D option is correct. ठीक है जी. 1, 2, 3, 5. फोर्थ ऑप्शन क्यों रॉन्ग है? आई होप इट इज क्लियर टू यू. इंडिया सिंगापुर यूपीआई पे नाउ क्रॉस बॉर्डर पेमेंट लिंकेज, उसके कॉन्टेक्स्ट में कौन कौन से पॉइंट्स करेक्ट है? तो पहला, यूपीआई पे नाउ इज द वर्ल्ड्स फर्स्ट रियल टाइम क्रॉस बॉर्डर रिटेल पेमेंट लिंकेज. यूपीआई इंडिया का, पे नाउ सिंगापुर का, इनको लिंक कर दिया. पे नाउ वाले इंडिया में पे नाउ वाले पे नाउ की मदद से पे करेंगे इंडिया में, और यूपीआई से इंडिया वाले पे करेंगे सिंगापुर में, और वो ऑटोमेटिकली सिंगापुर तक पहुंचेगा पे नाउ की तरफ, पे नाउ की थ्रू, और इंडिया में वो पहुंचेगा थ्रू यूपीआई. ठीक है. अगला पॉइंट क्या कहता है? एज ऑफ जुलाई 2025 19 इंडियन बैंक्स पार्टिसिपेट इन यूपीआई पे नाउ लिंकेज. ये पॉइंट भी करेक्ट है. दिस पॉइंट इज करेक्ट. The system allows fund transfer from India to Singapore and vice versa using the mobile number and virtual payment address. बिल्कुल सेम प्रोसेस पे आप कर सकते हैं. UPI पे नाउ ट्रांजेक्शंस आर लिमिटेड टू बैंकिंग आवर्स. नो सर, अगर UPI 24/7 है तो ऑब्वियसली ये ट्रांजेक्शन, ये टाई अप भी 24/7 होगा. द सिस्टम स्ट्रेंथन्स इंडियाज फिनटेक डिप्लोमेसी एंड प्रमोट्स फाइनेंशियल इंक्लूजन फॉर डिसअपॉर्टर्स. दैट इज करेक्ट कि सर इससे क्या होगा? इस इनिशिएटिव से इंडिया का जो फिनटेक डिप्लोमेसी है वो प्रमोट होगी, फाइनेंशियल इंक्लूजन प्रमोट होगा. दिस इज करेक्ट. सो आंसर इज गोइंग टू बी 1, 2, 4, 5. 1, 2, 3, 5. 1, 2, 3, 5 मीन्स बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर. ठीक है जी, क्लियर हो गया, पॉइंट समझ आ गया. आगे बढ़े. अगला क्वेश्चन देखो. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू सेबीज July 2025 regulatory reforms? According to this, the startup founders, they can now retain employee, they can now, one second, coming back to the question, startup founders, they can now retain ESOPs. What is this ESOP? Sir, ESOP stands for what? ESOP stands for what? Give me the answer. Sir, ESOP stands for Employee Stock Option Plan. मैं पता नहीं क्या सोच रहा हूँ. ठीक है, कमिंग बैक, शुरू से शुरू करते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द सेबीज जुलाई 2025 रेगुलेटरी रिफॉर्म्स? इन द रिफॉर्म्स, आउट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर करेक्ट? स्टार्टअप फाउंडर्स, दे कैन रिटेन एम्प्लॉई स्टॉक ऑप्शन प्लान ग्रांटेड एटलीस्ट 1 year बिफोर फाइलिंग द रेड हेयरिंग प्रोस्पेक्टस. दैट इज करेक्ट. ये बिल्कुल सही पॉइंट है. नेक्स्ट पॉइंट सेज PSUs with 90% or more government stake can now delist via fixed price route without mandatory public shareholding approval. ये बिल्कुल सही है कि सर आप फिक्स प्राइस रूट के जरिए डीलिस्ट कर सकते हैं विदाउट मैंडेटरी गोइंग फॉर पब्लिक शेयर होल्डिंग अप्रूवल. सो दैट इज नॉट अ केस. फॉरेन फंड्स इन्वेस्टिंग ओनली इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज नाउ फेस stricter KYC norms under the SEBI reforms. नहीं sir, this is wrong. SEBI reforms have been relaxed
for the KYC norms for foreign investors or foreign funds investing in the government securities. Alternate investment funds can create separate co-investment vehicles to allow high net worth individuals, family offices, and pension funds to invest in the unlisted companies. This is correct. Equity shares issued from conversion of compulsory convertible securities. Equity shares which are issued from the conversion of compulsory convertible securities remain subject to 1 year minimum public holding before offer for sale. Nahi sir. Shares from conversion of compulsory convertible securities, they are now exempted from 1 year minimum public minimum public holding requirements before it is going for offer for sale. पहले वो required था, but अब उस criteria को remove कर दिया. So keeping that in mind, what will be the answer? So 1, 2, 4. That means the B option is the correct answer. ठीक है जी, clear हो गया point, समझ आ गया. Moving on to the next one. अगला point देखते हैं क्या कहता है. अगला क्वेश्चन कहता है which of the following about the State Bank of India which has been recognized as world's best customer bank is correct. तो आया सेबी को SBI को वर्ल्ड का बेस्ट बैंक टाइटल दिया गया. So which of the following are correct? SBI was recognized for its digital innovation including AI powered hyper personalized banking and vernacular voice banking. This is correct. ये एक reason था. The award ceremony will take place on 18th of October 2025 during the annual meeting of World Bank as well as IMF. This is also correct. SBI currently has 52 crore customers with a total deposit of 53 lakh crore rupees. This is correct. The recognition was given solely based on the financial performance metrics. No, sir. This recognition was not only on the financial metrics. It emphasized digital transformation, customer engagement as well as inclusion. So this is wrong. SBI efforts in rural and semi-urban areas providing 24/7 support were highlighted as a key reason for award. Yes, so you can say that it was one of the important reasons जिसकी वजह से SBI को ये report किया गया, ये award दिया गया, because SBI has done really very well in order to achieve the financial inclusion targets. और अगर हम बात करें पब्लिक सेक्टर बैंक्स में सबसे ज़्यादा प्रॉफिट कमाने वाला बैंक SBI ओवरऑल इंडिया में बैंकिंग सेक्टर्स में से सारे बैंक्स में से प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर बैंक्स में सबसे ज़्यादा प्रॉफिट कमाने वाला बैंक अगेन कौन है? SBI with 70% with 70,000 crore rupees of profit. If I'm not wrong, एक बार चेक करना. I'm not very sure about this particular figure, but I think it is around 70,000 crores. Moving to the next. Which of the following statement about India's financial inclusion and digital economy trends were highlighted in the World Bank Global Findex are correct? So Global Findex जो आया World Bank का, उसमें इंडिया से रिलेटेड कौन कौन सी टर्म्स हैं जो कि करेक्ट है? पहला, इंडिया अकाउंट ownership has increased to 89% in 2024 up from 77.5% in 2011. This is correct. 54% of Indian account holders, they use digital payments, while 48.5% of all adults made or received digital payments in the past years. This is correct. अगला पॉइंट क्या कहता है? Only 38.3% of Indians have password protected phones posing digital security risk. This is correct. In India, more adults save money formally or informally than borrow money. क्या ये सही है? क्या ये सही है? अगर मैं इस पॉइंट पे बढ़ूं तो इस पॉइंट का आंसर क्या होगा? इन इंडिया अगर आप सेविंग्स की बात करेंगे दैट विल बी 38.6%. So in India, 38.6% of adults reported savings. 38.6% of adults reported savings and 63.3% of adults reported borrowings. तो ये उल्टा होगा. ठीक है जी. So this is wrong. India mobile money account ownership is 23.1% higher than the global average of 15% in 2024. बिल्कुल सही है सर. इंडिया में जो मोबाइल मनी ओनरशिप है that is 23.1%, which is way higher than global average, which is 15%. This is true. So answer is going to be 1, 2, 3, 5, which means B option is the correct answer. अगला क्वेश्चन देखो. Which of the following statement about NABARD's initiative
about NABARD's initiative and announcements during the 44th Foundation Day are correct. तो NABARD के Foundation Day की बात करें, Rural Tech Collab is an open collab innovation platform launched to foster technological solutions, especially for rural India, focusing on agriculture, financial services, and climate resilient innovations. This is correct. Next is Nivaran is NABARD's grievance redressal platform for rural cooperative banks. Correct. NABARD launched a new sub-office in Leh, Ladakh to extend financial services in the remote region. Correct. Graduated Rural Income Generation Program provides non-returnable grants to ultra-poor households along with capacity building supports. Sir, it is not a non-returnable, rather it is a returnable grant. ये non-returnable नहीं है, it's a returnable grant. NABARD's new WhatsApp channel is intended for real-time communication with farmers, FPOs, dissemination of market advisories. That is correct. So answer will be 1, 2, 3, 5. B option is correct. लेकिन ये जो प्रोग्राम है इसमें जो आपको ग्रांट मिलेगी that is returnable. बहुत बड़ी हारी नहीं. That is a correct answer. Next. Consider the following statement regarding SEBI's Venture Capital Fund Settlement Scheme and the old Venture Capital Fund Framework. So in that particular case, which statement is correct? Venture Capital Fund Scheme 2025 allows venture capital funds that have already migrated to alternate investment fund framework but have not yet wound up to regularize their past violations. They are included. That is true. Under the old SEBI VCF regulations to 1996 to 2012, there was no mandatory sunset clause. हाँ सर, वहाँ पे कोई mandatory sunset closure नहीं था. It lacked a mandatory closure timeline, leading to some funds overstaying and investors' capital being locked. This is correct. Next is the penalty under VCF settlement scheme is borne by fund manager or sponsor. बिल्कुल not by the investor. Investor की क्या गलती है? Investor की कोई गलती है ही नहीं. अगला पॉइंट है VCF under 1996 regulation could invest in both unlisted and listed companies. नहीं सर. Old VCF could invest only in the early startups or unlisted companies, not in the listed companies. The one-time settlement scheme was launched in July 2021. In July 2025 with applications open till January 2026. This is true. So answer क्या बनेगा? 1, 2, 3, 5 is correct. तो जो भी schemes pending है जो 2012 से पहले आई थी उनको resolve करने के लिए SEBI ने initiative लिए. जाओ register करो, resolve करो, खत्म करो. Consider the following statement regarding the NSDL Payment Bank and Schedule Bank in India. So in 2025 July, NSDL Payment Bank was included in Schedule 2nd of RBI Act 1934, officially termed as a Schedule Bank of the country. This is correct. Schedule Bank must maintain a minimum paid up capital of 5 lakhs and they are automatically eligible for clearinghouse membership. That is correct. As per the Schedule Bank, NSDL Payment Banks can participate in liquidity adjustment facility and borrow under the MSF. This is also correct. NSDL Payment Bank is the 5th payment bank to get Schedule Bank status after Post Payment Bank, Fino Bank, Airtel Payment Bank, as well as Jio Payment Bank. This is also correct. Last point, schedule banks are exempted from maintaining CRR. This is wrong. Schedule banks, they have to maintain CRR. They are not exempted. Please, Pranav, check karo. So the answer to this particular question is A option. That is correct. Pranav has given the correct answer. Very good. Moving on to the next one. Consider the following statement with respect to Asian Development Bank. क्या कहता है? Asian Development Bank has approved a loan of 975 crore rupees, around $85.4 million to Tripura for industrial infrastructure development. This point is correct. Absolutely correct. Next says the project aims to build. ये जो project है, it is basically aiming to build industrial sheds, power stations, underground electrical infrastructure, fire stations, and develop 34 road across the industrial zones, basically to develop the industrial sector. That is correct. The loan will cover 9 industrial areas. 9 industrial areas. True. Land for new industrial development has been recovered and reallocated by Tripura Industrial Development Corporation. True. Tripura currently has no plywood manufacturing potential or rubber plantation. This is wrong. Tripura has significant plywood manufacturing potential with around 1,10,000 hectares of rubber plantation, including 10,000 hectares of
senile tree suitable for plywood production. So this is wrong. Answer is going to be 1, 2, 3, 4. Agla. Consider the following statement with respect to RBI's recent penalty on a cooperative banks. तो उस केस में क्या है? RBI has imposed a penalty under section 47 and section 46 of Banking Regulation Act 1949. देखते हैं सर, पता नहीं अभी. Mandvi Nagarik Sahakari Bank was penalized for violation related to the management of advances by urban cooperative banks. ये सही है, ये सही है. This penalty has been charged. This is correct. Next point says what? Sarvodaya Nagarik Sahakari Bank was charged penalty due to breach in security, cyber security, turnaround time, failed transaction compensation. True. Lakshmi Vishnu Sahakari Bank was fined for lapses in know your customer compliance. Yes, these all charges are charged under Banking Regulation Act 1949. That is correct. Thane District Central Cooperative Bank was penalized for lending to directors' relatives. No, sir. So it is basically penalized for KYC lapses. For KYC lapses, not for providing a loan to the directors. So keeping that in mind, fifth statement is wrong. B option is correct. 1, 2, 3, 4 are correct. कोई बात नहीं, अगर आपको कोई क्वेश्चन आप आंसर नहीं कर पा रहे, don't worry. It's not a class where I'm checking your knowledge. It's a class which is giving you a platform to learn as well as revise whatever you have studied in the past. Consider the following statement about the SEBI and NSE सामूहिक प्रतिवेदन मंच प्लेटफॉर्म. सामूहिक प्रतिवेदन मंच प्लेटफॉर्म से रिलेटेड क्या क्या पॉइंट्स है? ये जो प्लेटफॉर्म है, दिस हैज बीन रोल्ड आउट इन फेजेस स्टार्टिंग फ्रॉम 1st of August 2025. दैट इज ट्रू. इट अलाउज ब्रोकर्स टू सबमिट कंप्लायंस रिपोर्ट वंस विच आर देन शेयर्ड अक्रॉस द मल्टीपल एक्सचेंजेस. तो भैया आप जो रिपोर्ट शेयर करेंगे एक बार, वो बाकी सारी एक्सचेंजेस पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी. दैट इज करेक्ट. Initially 40 companies report are included in phase 1. नहीं sir, this is wrong. Phase 1 applies to stock brokers, not commodity brokers. So there will be so these will be included later phases. So commodity brokers की अगर हम बात करें, sorry मैंने point अगला पढ़ लिया. The platform currently applies to stock brokers, not to the commodity brokers. Initially 40 companies are reported. Yes sir, 40 companies report होंगी पहले phase 1 में, फिर बाकी होंगी in phase 2. The initiative aims to reduce duplication, manual errors and compliance cost. बिल्कुल सही है सर, इससे वो जो manual errors थे वो सब हट जाएंगे, उसकी वजह से इसे इंट्रोड्यूस किया गया. So 1, 2, 3, 5 are correct. B option is correct. But the fourth statement is wrong. अगला क्वेश्चन देखो. Consider the following statement about GST trend in India as per SBI's 8-year GST research report. तो 8-year GST की जो रिसर्च रिपोर्ट आई उसके अकॉर्डिंग कौन कौन सी स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं? पहला, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु, कर्नाटका अकाउंट फॉर अराउंड 50% ऑफ द एक्टिव रजिस्ट्रेशन. बिल्कुल सही है. सबसे ज्यादा जीएसटी रजिस्ट्रेशंस एक्टिव जीएसटी रजिस्ट्रेशंस एक्टिव यूपी में, सबसे ज्यादा जीएसटी रेवेन्यू महाराष्ट्र. Women constitutes 14% of all the GST registration and 20% of the registration include at least one woman. Women includes 14% of all GST registration. ये तो सही है. Women constitution क्या है? 14% total का जो 14% है, that is women registered, and 20% include at least one woman. तो जो 20% registrations है, they include at least one woman. This is also correct. Telangana, Tamil Nadu, Andhra Pradesh, Karnataka are underperforming states with respect to gross state domestic product share. This is correct. अगर आप इनके GDP को कंपेयर करेंगे with respect to their GST collection, तो वो आप नोटिस करेंगे कि it is poor. अब वो क्यों poor है, उसका रीजन है सर, GST जो है that is a consumer और consumption tax है ना, तो वो पे होगा किसे, कहाँ सर? वो पे होगा कंज्यूमिंग स्टेट में. लेकिन ये जो स्टेट्स हैं, दीज आर दी लार्जली मैन्युफैक्चरिंग स्टेट्स, तो इनका जीडीपी तो बड़ा है बिकॉज ऑफ देयर मैन्युफैक्चरिंग, बट यहाँ पे कंजम्पशन जो यहाँ प्रोड्यूस हो रहा है, इट इज कंज्यूमिंग आउटसाइड देयर स्टेट, जिसकी वजह से ये मिसमैच देखने को मिलता है. एवरेज मंथली जीएसटी कलेक्शन was 2 lakh crore rupees. Yes sir, average monthly GST collection for the financial year 2024-25 can be considered 2 lakh crores. So D option is correct. All the options are correct. बढ़िया. अगला क्वेश्चन देखो.
Consider the following statement regarding the decline in gross non-performing assets of the public sector banks in India. The gross non-performing assets of the public sector banks have fell down from 6.16 lakh crores to 2.83 lakh crores, from 9.11% to 2.58%. This is absolutely correct. Fresh NP addition dropped below 1% of standard advances from 8.35% in March 2018. ये भी ठीक है. Insolvency and bankruptcy code helped recovery 3.6 lakh crores by rescuing 3171 distressed companies. ये भी ठीक है. The DRT threshold has increased from 20 lakhs to 50 lakhs. No sir, DRT का threshold आज भी इतना ही है, that is 20 लाख. 20 लाख से 50 लाख नहीं किया. आंसर क्या होगा? A option is correct. अगला देखो. Consider the following statement about the India's financial inclusion index. इंडिया के फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स की बात करें, 0 to 100 सही है. 0 to 100 के बीच में आपका रेट होगा. दिस इज करेक्ट. फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स में जो वेटेज है, एक्सेस को वेटेज मिली है 35%, यूसेज को वेटेज मिलती है 45%, क्वालिटी को 20%, तो ये गलत हो गया. FI इंडेक्स यूजेस 97 इंडिकेटर्स, बैंकिंग, डिजिटल पेमेंट, इंश्योरेंस, पेंशन इंडिकेटर्स. दिस इज करेक्ट. इन मार्च 2025 इंडिया का जो फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स था, दैट वाज 67, which has improved a lot, and जो major improvement हुई है that is in usage and quality. This is correct क्योंकि excess तो already doing well from the first day itself. Financial inclusion index methodology incorporates Guinea's based inequality tracking to measure regional disparities in the financial infrastructure. बिल्कुल सर, इसका मतलब क्या हुआ? जैसे जैसे आपका inequalities बढ़ेगा, उस inequality के बेसिस पे ये कैलकुलेशन होगा कि कितना एक्सेस है आपको बैंकिंग सर्विसेज की, कितनी नॉलेज है आपको बैंकिंग सर्विसेज की या फाइनेंशियल सर्विसेज की, उसके बेसिस पे इस इंडेक्स को फ्रेम किया जाता है. सो आंसर टू दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज 1, 3, 4, 5, यानी कि बी ऑप्शन इज करेक्ट. ठीक है जी, क्लियर हो गया पॉइंट. आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखो. अगला क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा, यू आर गोइंग टू एंजॉय दिस. Regarding the MOU between National Urban Cooperative Finance and Development Corporation and Institute of Internal Auditors, India, consider the following statement. तो ये consider करनी है statement on the basis of these facts. First one, the MOU which has been signed between National Urban Cooperative Finance and Development Corporation as well as Institute of Internal Auditors, India. So this is basically to enhance governance and internal audit practice of urban cooperative banks. This is correct. Next point is NUCFDC is under Ministry of Finance and act as central coordinating body for cooperative banks across India. This is wrong. Sir, अगर हम इसकी बात करें, Ministry of Corporate Affairs is the correct answer. NUCDFC is operated by Ministry of Corporation, not Ministry of Corporate Affairs, rather Ministry of Corporation. Next is IIA India will provide access to AI powered audit tools, ESG framework. True. The MOU also focuses on improving capital adequacy, asset liability management and NP reductions directly through NUCFDC intervention. That is correct or not? No sir, this is wrong. Why this is wrong? Because NUCFDC will support financial modernization and risk mitigation, capital adequacy, asset liability management and NPA reductions are broader functions, not directly as a part of specific MOU. NUCFDC supports urban cooperative banks in digital enablement, including UPI adoption, CBS implementation. ये correct है. So answer क्या बनेगा सर? 135, यानी कि सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन वन. अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं. अगला क्वेश्चन देखो क्या कहता है. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू अजय सेठ. ही हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ IRDAI और ही इज द retired IAS officer, Karnataka cadre. That is correct. His appointment was made directly. No sir, it was not made directly by the financial sector regulatory appointment search committee. बस आप ये कहो कि इस कमेटी ने शॉर्टलिस्ट किया, अपॉइंटमेंट किया, अपॉइंटमेंट्स कमेटी of the cabinet ne, chairman, prime minister. He previously served as the secretary of Department of Economic Affairs under the Ministry of Finance. True. Appointment committee of cabinet approved the appointment based on recommendations given by financial sector regulatory appointment search committee. True. Last point is FSRASC is chaired by finance secretary
includes domain experts from financial institutions? Sir, it is chaired by cabinet secretary. It is chaired by cabinet secretary, not the finance secretary. It includes domain experts and secretaries like Department of Economic Affairs, Department of Financial Services, but chairperson is the cabinet secretary. So this statement is wrong. Answer will be 134. B option is the correct answer. ठीक है जी, क्लियर हो गया. अगला क्वेश्चन देखें. अगला क्वेश्चन क्या कहता है, देखो जरा. Regarding the biometric authentication system launched by Federal Bank for e-commerce card transaction in July 2025, consider the following statement. इसमें अगर हम बात करें, the system allows approval of card payments using fingerprint or face ID instead of OTP. ये बिल्कुल सही है. Biometric authentication takes roughly 3 to 4 seconds to complete. Enrollment for the service require one-time consent during the checkout on support merchant apps. ये सही है सर, one time consent जरूरी है. Next is RBI's two-factor authentication rules are compiled with OTP as a fallback if biometric fails. अगर biometric fail होगा तो OTP use करोगे, ये सही है. The initiative is a collaboration between Federal Bank, M2P FinTech as well as Minkasu Pay. That is correct. So answer will be 1345. B option is the correct answer for the given one. बहुत बढ़िया जो correct answers दे रहे हैं. Moving on to the next. Consider the following statement regarding the corrective action plan withdrawn by RBI for Religare Finvest Limited in July 2025. So in that particular case, what will be the correct answer? So CAP is a part of RBI's prompt corrective action framework for NBFCs. So CAP is a supervisory tool used by RBI for NBFCs. It is considered as a part of prompt corrective action for NBFC, but it is not 100% true, but we'll still say it's okay. Second is the Berman family takeover of Religare Enterprises Limited in early 2025 contributed to governance improvement at RFL. That is correct. CAP imposed only when institution capital adequacy falls below the regulatory limits. बिल्कुल सही है सर. ये cap जो है ये trigger होगा when the prudential norms are violated, such as capital adequacy falling below regulatory limits, along with other issues like poor governance or high NPS. They are also included. Following cap withdrawal, RFL is exempted from complying with prudential norms. ये तो गलत है ना सर. Prudential norms तो आपको comply करनी पड़ेंगी. CAP measures can include restrictions on fresh lending, board changes, and strengthening the internal audit. This is correct. So answer will be 1, 2, 3, 5. B option is the correct answer. Moving to the next one. Consider the following statement regarding the RBI's digital payment index. Base year 2018, base value saw. This is correct. Nothing wrong in this. Payment performance contribute the highest weightage. Payment performance contribution is 45% true. UPI share in digital transaction has increased from 34 to 83% in 2024 and 92% in 2025. This is also correct. Customer centricity has high weightage than payment infrastructure. Demand side 10%, supply side 15%, लेकिन customer centricity 5%. So this is wrong. ठीक है. Next is total DPI growth since 2018 exceeds 345, reflecting 4.5x growth. बिल्कुल सर, क्योंकि latest जो data था, score was 445.50 for March 2024. Now you give me the answer. What was the score for March 2025? Guys, what was the score for March 2025? Any idea? Is it crossed 500 mark? No sir, it has not yet crossed 500 mark. That is not correct. तो वैल्यू 500 से तो कम है. वैल्यू 500 से तो कम है, लेकिन कितनी है वो बात करना. Waiting. Think and give me the answer.
Is it correct? Yes, sir, that is absolutely correct. That is absolutely correct. It is 493.22. That is a correct data. So answer is going to be exceeds 345 till March 2024. तो March 2024 के अगर कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो ये सही है. March 2025 के लिए इट विल बी 493.22. उस हिसाब से अगर हम देखें तो 493% का 393% का इंक्रीज हुआ और इट हैज ऑलमोस्ट बिकम 5 टाइम्स. नेक्स्ट, consider the following statement with respect to the daily financial condition index which is proposed by RBI. So keeping that in mind, a positive FPI value indicates tight financial conditions with cheaper credit and higher liquidity. तो याद रखना, positive indicates tight financial conditions with costly credit as well as low liquidity. FCI uses 20 crore indicators covering FCI uses 20 core indicators covering money market, government securities. That is correct. तो अगर हम बात करें कितने कोर इंडिकेटर्स हैं सर, हमारे पास यहाँ 20 कोर इंडिकेटर्स हैं फ्रॉम मनी मार्केट, गवर्नमेंट सिक्योरिटी, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स, इक्विटी एंड फॉरेक्स मार्केट. ठीक है जी. India witnessed the tightest financial inclusion in July 2023 due to taper tantrum and it was plus 2.82. That is correct. And India has witnessed easiest foreign condition index in which year and what was the score? ये मैंने आपको डिस्कस किया and recently discuss किया, expecting the answer. Next is daily frequency financial condition index allows policymaker to monitor real-time stress. Quite obvious. Countries like US, Eurozone, they already maintain financial condition index similar to proposed in the Indian model. Is it correct? No, sir. They are already holding weekly and monthly models. और अगर इंडिया डेली पे चला गया तो that will be a good improvement. That will be a good jump. That will be a good improvement with respect to the rest of the world. So आंसर क्या बनेगा सर? A option. 2, 3, 4 are correct. ठीक है जी, क्लियर हो गया. अगले पे बढ़े. अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कहता है consider the following statement with respect to unclaimed deposits. Accounts with no transactions for 10 years unclaimed. True. Public sector banks hold over 87% of the total unclaimed deposits. That is true. And 13% is with the private bank. True. ये बड़ा important है, याद रखना. The top bank with highest unclaimed deposits is ICICI Bank. No sir. Top bank with highest unclaimed deposit is SBI. और अगर SBI की बात करें तो SBI के पास लगभग 20,000 करोड़ का लगभग 20,000 करोड़ का unclaimed deposit है. RBI's उद्गम portal allows individuals and legal heirs to track unclaimed deposits across multiple banks. This is correct. Unclaimed deposits indicate issues in financial awareness, accessibility and claim procedures reflecting gaps in the financial inclusion. बिल्कुल सही. So आंसर क्या बनेगा सर? 1, 2, 4, 5. A ऑप्शन इज करेक्ट. समझ आ गया जी, क्लियर हो गया. अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं. LIC की न्यूज है. व्हाट इज दिस? LIC's $1 billion फॉरवर्ड रेट अग्रीमेंट विद JP Morgan एंड बैंक ऑफ अमेरिका. उसके बेसिस पे आई हैव क्रिएटेड दिस न्यूज फॉर यू. उसके बेसिस पे I have created this news for you. Please pay attention. क्या कहती है ये न्यूज? LIC has entered into a forward rate agreement to hedge against falling interest rate and secure stable returns on its bond portfolio. That is correct. The total FRA transaction volume undertaken by LIC represent 38% of India's total value. This is also correct. इंडिया का जो टोटल है वो $2.6 billion का, उसमें से $1 billion LIC कर रहा है, 38% हो गया ना. FRA allows buyers to lock in future equity price. FRA deals is not future equity, it is related to interest rates, not equity. Counterparties JP Morgan and Bank of America take on interest rate risk and may earn a premium
for may earn a premium for providing this hedge. बिल्कुल sir, they will earn a premium or they will earn pricing benefits for providing the hedge. That is correct. LIC's FRA transaction signals deepening of India's bond derivative market and increased sophistication in the institutional risk management. बिल्कुल ठीक है कि सर इंडिया भी अब बड़ा हो रहा है. That is a प्रमाण पत्र of this. So answer is going to be 1, 2, 4, 5. That means A option is correct, but the third statement is wrong क्योंकि वहां पर lock-in will be related to the interest rate, not with the equity prices. Not with the equity prices. अगला question देखो. With reference to RBI's Alternative Investment Fund Directions 2025, effective from 1st of January 2026, which of the following statements are correct? Which of the following statements are correct? तो इसमें अगर हम बात करें, a single regulated entity cannot invest more than 10% of their total corpus value. ये बिल्कुल सही है सर. If a regulated entity in an alternative investment fund exceeds 5% of its corpus, AIF has downstream debt exposure to regulated entity debtors company, then the regulated entity must make 100% provisioning, including exposures. नहीं sir, 100% provisioning, excluding exposures through equity shares, compulsory convertible preference shares, as well as convertible corporate bonds. Investment by regulated entities in subordinated units of alternative investment funds with a priority distribution model must be fully deducted from tier 1 and tier 2. No sir, it will be fully deducted from tier 1 and tier 2 capital. That is correct. तो अगर आपने इन्वेस्टमेंट की सबऑर्डिनेटेड यूनिट्स में और वहां पे प्रायोरिटी डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है तो उस केस में योर कैपिटल विल बी, और वो जो अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट है दैट विल बी डिडक्टेड आउट ऑफ योर कैपिटल वैल्यू टियर 1 टियर 2. ठीक है. Legacy alternative investment fund investment made with RBI's prior approval are exempted from 10% and 20% caps. हाँ, जो existing है उनके लिए अब कोई cap नहीं है, वो तो जो चल रहा है वो चलेगा. For commitments made before 1st January 2026, regulated entities may selectively apply provisions of both old and new directions depending upon the convenience. No sir, 1 जनवरी के बाद सिर्फ और सिर्फ न्यू लगेगा. उससे पहले जब तक आप ऑप्ट नहीं करते, you can go with the older one. So answer is going to be 1, 3, 4 are correct. Next, with reference to the IMF's July 2025 World Economic Outlook report, उसके हिसाब से अगर हम चले, India's financial year growth forecast was revised upward to 6.4%. IMF के according 6.4%, OECD के according 6.7%, RBI के अकॉर्डिंग 6.8%, पिच के अकॉर्डिंग 6.9%, है ना. ADB के अकॉर्डिंग 6.5%. वर्ल्ड बैंक का एस्टिमेट क्या है इंडिया के लिए? वर्ल्ड बैंक का एस्टिमेट क्या है इंडिया के लिए, बताना जरा. क्वेश्चन आपके लिए, मैं आगे पढ़ रहा हूँ. विच इज स्लाइटली बिलो द रिजर्व बैंक्स ऑफ इंडियाज प्रोजेक्शन. तब सही था, अब चेंज हो गया. ग्लोबल ग्रोथ फोरकास्ट फॉर बोथ calendar year 2025 and 26. Calendar year 2025 and 2026 has been upgraded in comparison to the April data. ये भी सही है. This is correct. The IMF cited stronger demand despite tariff hikes, lower than feared US tariffs and easing financial condition as reason for the global growth upgrade. तो ये पॉइंट सही है, बिल्कुल सही है सर. IMF ने कहा कि सर जो डिमांड है, स्ट्रॉन्गर डिमांड होगी डिस्पाइट दी टैरिफ हाइक्स, lower than featured or lower than the fear which you were having due to US tariff, और ease होगा financial conditions में global level पे. That is correct. The global inflation outlook for the calendar year 25 was revised downward in comparison. No sir, it was revised upwards. It was revised upwards in comparison to April, while for financial year was projected in the other way around. So remember that. अगर आप इन्फ्लेशन की बात करेंगे, सो हेडलाइन इन्फ्लेशन रिवीजन फॉर कैलेंडर ईयर 2025 इज 4.2, फॉर कैलेंडर ईयर 2026 इट इज 3.6. ठीक है जी, क्लियर हो गया पॉइंट, समझ आ गया. कोई दिक्कत, कोई परेशानी मुझे लगता होगी. अगला पॉइंट है इंडियाज कैलेंडर ईयर 2025 ग्रोथ प्रोजेक्शन 6.7% हायर देन इट्स फाइनेंशियल ईयर 2020. नहीं सर, दिस इज रॉन्ग, दिस इज नॉट करेक्ट, दिस इज रॉन्ग. यहाँ तो 6.4 है ना, हो तो गई ये बात, अब इस पे कोई डिस्कशन की जरूरत नहीं है. सो आंसर इज गोइंग टू बी 1, 2, 3. बट क्या फिफ्थ स्टेटमेंट करेक्ट है?
फिफ्थ स्टेटमेंट करेक्ट है सर, ये कैलेंडर ईयर है और ये क्या है सर, ये फाइनेंशियल ईयर है, तो कैलेंडर ईयर के लिए ग्रोथ एक्सपेक्टेड 6.7%, दैट इज करेक्ट. सो आंसर टू दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज बी ऑप्शन सर, कैलेंडर ईयर नॉट फाइनेंशियल ईयर. अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, विद रेफरेंस टू दी सेबीज रिवाइज्ड इनहांस सर्वेलेंस मैकेनिज्म फॉर स्मॉल एंड माइक्रो कैप कंपनीज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. स्मॉल एंड माइक्रो कैप कंपनीज के केस में कौन कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट है. स्टेज 1 क्राइटेरिया नाउ इंक्लूड एनालिसिस ऑफ sustained upward close to close price trend over the last 3 months in addition to extreme price violation. ये बिल्कुल ठीक पॉइंट है सर, ये बिल्कुल ठीक पॉइंट है, याद रखना. इसमें ये कहा गया सेबी इन कोलैबोरेशन विद द स्टॉक एक्सचेंज दे हैव रिवाइज्ड द एनहांस्ड सर्वेलेंस मैकेनिज्म फॉर स्मॉल कैप कंपनीज विद मार्केट कैप बिलो 1000 करोड़. इस पे अगर हम बात करें तो क्या क्या है, स्टेज 1 क्राइटेरिया क्या था, इट वाज अर्लियर बेस्ड मेनली ऑन एक्सट्रीमली हाई low price variation, but now it will include 3 months sustained upward close to close price trend, capture usual relies or artificial build-ups, which is important. Next point is stage 2 criteria की बात करें तो stage 2 के केस में introduce PE ratio filter for acceleration from stage 1 to stage 2. तो acceleration कब होगी from stage 1 to stage 2, now conditional upon PE ratio. और PE ratio कितना होना चाहिए, so PE ratio should be less than or equals to, should be less than, stock can move to stage 2 only if PE ratio is 2 times, PE ratio is 2 times the Nifty 500 PE ratio, 2 times the Nifty प्राइस रेशियो. तो उसके हिसाब से अगर हम चले, इट शुड बी अप टू, नॉट एटलीस्ट, इट शुड बी अप टू ट्वाइस द पीई रेशियो, तभी होगा स्टेज 2, वरना नहीं. ट्रेड फॉर ट्रेड सेटलमेंट अंडर स्टेज 1 इंश्योर्स कंपल्सरी डिलीवरी देयर बाय कर्बिंग स्पेकुलेटिव इंट्राडे एक्टिविटी. दिस इज करेक्ट. अंडर स्टेज 1 प्राइस बैंड इज फिक्स्ड एट 10% फॉर स्मॉल कैप कंपनीज. अंडर स्टेज 1 द प्राइस कैप इज फिक्स्ड. अंडर स्टेज 1 price cap is fixed for the small cap companies at what percent? Any idea? Any idea sir? I guess ऐसी कोई बात की ही नहीं गई, प्राइस कैप फिक्सिंग पे तो कोई बात हुई नहीं. SEBI conducts weekly review to decide whether a stock should move from ESM stages or exit the framework. This is correct, तो review करना होगा. So answer is going to be 135. B option is the correct answer. अगला क्वेश्चन देखो. Based on the Ministry of Stats and Program Implementation Comprehensive Modular Survey Telecom 2025, consider the following statement about online banking and internet usage in India. तो अगर हम internet usage in India की बात करें, online banking की बात करें, in rural India 30% of women reported online banking capable in 2025, nearly double the previous year. That is true. Next point is rural men's participation in online banking reached 73.3%, up from 59.5%, अगर मैं इसकी बात करूं 73% तो ठीक है, लेकिन it is not up from 59%, it is up from 40.2%. It is up from 40.2%, तो उस हिसाब से गलत हो जाएगा. Next is among the young rural women, over half, that is 51%, are capable of making the online banking transactions. ये correct है. This is correct. Next is UPI accounts for majority of online banking with rural usage 86.7%, higher than urban. क्या ये point correct है? ये सही है, याद कर लेना. UPI dominance rural में 86.7%, urban 74.7% of users rely only on UPI, so that is the case. Over the last 30 days, 24.5% of rural household made online purchases. Over the last 30 days, 24.5% household purchase online in last 30 days. उसमें जो rural है, this is overall. This is overall. Rural की बात करें तो rural household ने कितना purchase किया? 16% of rural household purchase online, and
अर्बन में अर्बन हाउस होल्ड परचेज वॉज अराउंड 39.6%. सो दिस इज रॉन्ग. आंसर इज 134. बी ऑप्शन इज करेक्ट. समझ आ रही है बातें? समझ आ रहा है? मजा आ रहा है? चलो अगले क्वेश्चन में बढ़े. अगला क्या कहता है? कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट एडीबीज 5-year प्लान फॉर इंडिया. एडीबी का 5 साल का क्या प्लान है इंडिया के लिए, उस पर बात करते हैं. Plan will mobilize up to $15 billion, including third-party capital, focusing mainly on RRTS and metro projects. Is this correct? So यहाँ पे ये तो correct है, RRTS metro projects भी correct है, लेकिन यहाँ जो mobilization है ना, that is up to $10 billion. That is up to $10 billion, not $15 billion. अगला point क्या कहता है? ADB will provide 3 million technical support. $3 million technical support. This is correct. ADB current urban portfolio includes 27 loans of around $5.15 billion with additional $4 billion for metro. That is correct. Under its country partnership strategy 2023-27, ADB is prepared to provide over $5 billion annually, including $1 billion in the non-sovereign operations. ये बिल्कुल सही है सर. CPS के थ्रू अगर हम बात करें 5 बिलियन एनुअली आएगा और एक्सक्लूसिवली 1 बिलियन आएगा फॉर दी नॉन सॉवरेन ऑपरेशंस. एज ऑफ अप्रैल 2025 क्यूमुलेटिव कमिटमेंट इन इंडिया स्टैंड्स एट 59.5 बिलियन सॉवरेन लेंडिंग. ये एडीबी ऑलरेडी कर चुका है, जिसमें से नॉन सॉवरेन लेंडिंग अलग से कितनी है? 9.1 बिलियन. दिस इज ऑल्सो करेक्ट. सो आंसर इज गोइंग टू बी 2, 3, 4, 5. ओनली द फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग. अगला क्वेश्चन देखो. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू आरबीआई फॉर योर क्रेडिट रिस्क, सॉरी फॉर क्लाइमेट रिस्क इनिशिएटिव विच हैज बीन टेकन बाय आरबीआई. और अगर हम इस क्लाइमेट रिस्क इनिशिएटिव के कॉन्टेक्स्ट में बात करें, आरबीआई CRIS कंसिस्ट ऑफ पब्लिक वेब बेस्ड डायरेक्टरी एंड रिस्ट्रिक्टेड एक्सेस पोर्टल फॉर द रेगुलेटेड एंटिटीज. हाँ जी सर, एक होगा ओपन सबके लिए, दूसरा होगा रिस्ट्रिक्टेड. द सिस्टम फोकसेस ऑन फिजिकल रिस्क अराइजिंग फ्रॉम नेचुरल डिजास्टर. अलॉन्ग विद दैट इट फोकसेस ऑन ट्रांजेक्शन रिस्क. दिस इज ऑल्सो करेक्ट. सो इट फोकसेस ओनली गलत हो गया. इट फोकसेस ऑन फिजिकल रिस्क. It focuses on transaction risk. Transaction risk का मतलब है policy, technology, market shift. That is correct. उसके बाद hazard and vulnerability data required to estimate physical risk. सर अगर हम hazard और vulnerability के data की बात करें, इससे आपको physical risk का पता चलता है. That is correct. RBI CRIS was first proposed during Monetary Policy Committee meeting in October 2024. ये भी correct है. So आंसर क्या बनेगा? 1, 3, 4, 5 is the correct answer. We call it as CRIS. इसको बहुत डिटेल में भी हमने डिस्कस किया था few days back. Consider the following statement regarding the RBI's initiative to internationalize Indian rupee. RBI proposes that domestic banks and their foreign branches lend in INR to non-residents, initially focusing on Bangladesh, Bhutan, Nepal, Sri Lanka. क्या ये point सही है? So this is absolutely correct. Currently जो आपके foreign branches of Indian banks they are not allowed to provide INR loan, but now as per the rule they are now allowed to provide loans to the foreigners in Indian rupees. That is correct. Non-residents are now allowed to open INR account outside India. Yes sir, they are allowed to open. RBI has removed caps on foreign banks with Vostro account for buying short-term Indian sovereign debts. They can even invest in central government securities, central government short-term securities, and even they are allowed to invest in the corporate bonds out of the surplus funds from their special rupee Vostro accounts. India has local agreement with countries such as UAE, Indonesia and Maldives to demonstrate feasibility of INR transactions abroad. ये बिल्कुल सही है. तो 1, 3, 4, 5 correct answer बन जाएगा. B option is the correct answer for the given one. अगला देखो. Consider the following statement regarding digital payment frauds in India. अगर हम इंडिया में डिजिटल पेमेंट फ्रॉड्स की बात करें ऑफ वैल्यू ग्रेटर देन 1 लाख, तो डिजिटल फ्रॉड्स ऑफ वैल्यू ग्रेटर देन 1 लाख रिपोर्टेड आर 63,315 which have been reported in last 10 years. अगर हम टोटल लॉस की बात करें, टोटल लॉस इज अराउंड 733 करोड़ रुपीस. RBI has issued the digital security norms in February 2021 mandating common minimum security standards across various payment channels. This is correct. NPCI and RBI has developed AI-based tool known as Mule Hunter to identify the fraud accounts. This is correct.
डिजिटल पेमेंट फ्रॉड्स इन इंडिया आर मोर अलार्मिंग? नो सर, दे आर नॉट अलार्मिंग. यही किसी ने कहा था कि अलार्मिंग है, तो भैया फिर ministries they came in front in the parliament and they have presented this report in front of the parliament that they are not alarming in India. Agla question, consider the following. One second. हाँ जी, क्या हो रहा है? एक सेकंड देना, मैं वो सेट कर लूं. ठीक है जी. Consider the following statement with respect to the penalties charged by RBI. So RBI has imposed 353 penalties. RBI has imposed 353 penalties of total value of 54.78 crores. That is correct. That is correct. Cooperative banks, they have received the highest number of penalties. That is correct. Private banks were penalized with 11.11 crore, fewer than public sector banks. This is also correct. This is also correct. Yes or no? So private banks, they were penalized 14.8 crores, which is more than, greater than public sector banks. So this is wrong. Enforcement actions covered areas including cyber security, KYC, CRICL, CIC. That is correct. Agla point है, RBI has charged penalty on 37 non-banking finance companies or asset reconstruction companies totaling a value of 7.29 crores. ये बिल्कुल सही है. So answer is going to be 1245. B option is correct, but the third statement is wrong. Private banks पे जो penalty value थी, that was greater than public sector banks. Next, निवेशक शिविर. Consider the following statement regarding the Niveshak Shivir. Niveshak Shivir was launched by IEPFA in partnership with SEBI in Pune, Maharashtra. ये बातें हैं पहले निवेशक शिविर की, ये बिल्कुल सही है. More than 450 claimants participated. 19 offered KYC updates. 19 machines offered KYC updates, nomination changes. That is true. Dividend unclaimed for 7 years is transferred to IEPF. NSDL provided a brochure detailing claim process and required documents like PAN and all. Unclaimed dividend may arise due to reasons such as shareholder neglect, death without a nominee, or change in address which is not nominated, which is not updated. इसकी वजह से आपका जो claim है वो या dividend है वो unclaim हो जाएगा and it will go into the IEPF which is managed by IEPFA. ठीक है जी, अगला क्वेश्चन देखते हैं. Consider the following statement regarding the insured Indian banks as of September 30, 2024. I guess इसे अब डिस्कस करने की जरूरत नहीं है because we have already discussed the data with respect to March 2025. Yes or no? क्या हमने March 2025 का insolvent DICGC का डेटा डिस्कस किया है? से yes or no? बिल्कुल किया, बिल्कुल किया. तो उसके हिसाब से अगर हम चले, as of September, insured reaches 96.7%, up from 7.11 with respect to the previous year. Is this point correct? So this is correct. 286.9 crore accounts, they were fully insured, covering 97.7% total accounts insured under the limit, that is 5 lakhs as of March 2025. That is correct. अगला पॉइंट है, the improved amount now constitutes 47.5% of total assessable deposits, up from 46.3%. This is wrong. अब जो आपकी insured amount है, that is 46.3% of the total assessable deposit, जो कि last year 47.7% था. This was according to March 2025. DICGC has deposit insurance fund which has a growth of 15.2%. Right now it is 2.29 lakh crores. This is correct. RBI suggested that periodic revision of 5 lakh insurance cap may be necessary
that is true, may be done, that is true. So इसके हिसाब से 1, 2, 4, 5 सही होगा, but the third statement is wrong. I hope it is clear. Next, consider the following statement regarding RBI CRR reduction in 2025. CRR was reduced by 100 basis points in 4 tranches to 3% of NDTL by November 29, 2025. That is correct. This cut will result in increase in liquidity in the market by 2.5 lakh crores. That is correct. WACR is the overnight call money market rate chosen as the operating target of monetary policy in India. True. A decrease in CRR increases, no, it will decrease the cost of funds for the banks क्योंकि negative carry on CRR कम हो जाएगा, बैंक के पास जो cost of funds है वो कम हो जाएंगे. That is true. RBI liquidity corridor comprises marginal standing facility, the upper or the roof limit, ceiling limit is your SDF, and the mid limit is your repo rate. So answer क्या बनेगा? 1, 2, 3, 5, 1, 2, 3, 5. B option is correct. Oh, answer already screen पे था. I'm sorry for that. चलो अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं. Consider the following statement with respect to Adani Airport, $750 million external commercial borrowing. तो external commercial borrowing के context में external commercial borrowing refers to the loan raised by Indian entities from the non-resident lenders with minimum average maturity of 3 years. बिल्कुल सही है. ECB proceeds can be used. ECB proceeds can be used to invest in Indian stock market or real estate sector. That is correct. Can be invested in Indian stock market. Can be invested in Indian stock market? No, sir. Sorry, this is wrong. This is wrong. It cannot be invested in Indian stock market or real estate. Adani Airport plans to use part of ECB to refinance existing debt and a part of infrastructure upgrades at 6 airports. Yes, sahi hai. Loan was raised at an interest of approximately 7.5%. Correct. ECB in India are monitored solely by Reserve Bank of India without involvement of Ministry of Finance. This is wrong. This is wrong. So ECBs are monitored by DEA and RBI. It is done by DEA and RBI. DEA is under Ministry of Finance, so it cannot be done without Ministry of Finance. So answer will be 1, 3, 4 is the correct answer. So B option is the correct answer. Agla question देखो. Consider the following statement about AU Small Finance Bank Climate Risk Advisory Program. So physical risk assessment will include evaluating AU Small Finance Bank exposure to the natural hazards like this. This is correct. Transition risk will be also reviewed. That is also correct. Agla point is stage 1 to stage 2. Finance emission will be calculated for scope 1 and scope 2 emissions using PCAF methodology. No. Financed emission are scope 3. Finance emission are not scope 2. They are rather scope 3. They are rather scope 3 category 15. Category 15. So that is a point. This is wrong. Step change. A Bengaluru-based firm will assist in analytical modeling. This is correct. The program aims to integrate climate risk into governance framework, strategic planning, risk management, most important, and ESG disclosures. This is correct. But most important target is your risk management part. Climate will be taken into consideration. Climate risk will be taken into consideration. ठीक है जी. Consider the following statement regarding the RBI's regulatory framework for microfinance loans. Household income microfinance capped at 3 lakh rupees per annum. ये बिल्कुल ठीक है. Maximum repayment obligation of household can be 50% of the monthly income. Key fact statement must include annual percentage rate. That is true. First cycle microfinance loans can be up to 75%. True. NBFC Microfinance Institute must maintain 75% of total assets. No sir, this has been revised. 60% of the total asset as qualifying assets. That is a point. So answer is going to be 1, 3 and 4. A option is correct. Agla question देखो. Consider the following statement regarding the SBI and Indian bank sector. So as we said, SBI has paid a dividend of 8,000 crore rupees to Government of India at a dividend of 15.90 rupees per share. Government owned bank recorded a profit of
Government owned banks collectively, they have recorded a profit of 1.83 lakh crore rupees. 1.83 lakh crore rupees. Is it correct? Okay. Growing 26% year on year, while private banks has witnessed a growth of 14%. ये गलत है सर यहाँ पे. Private bank growth was 7%. Private bank growth was 7%, not 14%. Government profit has grown by 26%, so this is correct. NP in the Indian bank sector fell to 2.4% as of March 2025, that is correct. SBI contributed over 40% of the total profit, 70,000 crores, that is correct. Punjab National Bank recorded highest profit growth of 102%, that is correct. So answer is going to be B option. 1, 2, 3, 5 are correct. 1, 2, 3, 4, sorry, 1, 3, 4, 5 are correct. D option is correct. मार्क ऊपर सही किया तो ऑप्शन गलत मार्क कर दिया नीचे. ठीक है जी. यस, मैंने आपके दोनों कमेंट्स पढ़ लिए, अम्मी एंड ऑल. दिस इज करेक्ट. सही है जी. मैं आगे बढ़ूं. Shall I move on to the next question? अगला क्वेश्चन क्या कहता है? Consider the following statement. At least 50% of urban cooperative banks aggregate loan and advances must be small loan, defined as up to 25 lakhs or 0.4% of tier 1 capital, which is capped at 3 crores per borrower. तो first point क्या कहता है? Sir, as per the first point, this statement is correct that urban cooperative banks, their minimum paid up capital, they should maintain a minimum paid up capital of 5 lakhs and maintain greater than equals to 5% of NDTL as average daily balance with RBI also. That is a point which you need to remember. Second point which you need to remember with respect to the same is small value loans must comprise 50% or greater than 50% of the total loans, defined as 25 lakhs up to 25 lakhs or 0.4% of tier 1, capped 3 crore rupees per individual or per borrower. That is correct. Board of urban cooperative banks are required to periodically review portfolio behavior under different loan size categories and may consider lower ceilings for small value loans. That is correct. Urban cooperative banks aggregate exposure to housing loan for non-priority sector individuals cannot exceed 25% of the total loan and advances. ये भी बिल्कुल ठीक है सर. Aggregate exposure of urban cooperative banks to real estate, excluding housing loans, can go up to 10%. No sir, it can go maximum to 5%. Maximum loan per dwelling unit for tier 2 urban cooperative bank is 1.40 crores for tier 2 urban cooperative banks, and for tier 4 urban cooperative bank it is up to 3 crores. ये भी सही है. तो आंसर क्या बनेगा सर? 1, 2, 3, 5. दैट मीन्स बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर फॉर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स रिलेटेड रिविजन्स. सो याद रखना, ये मैंने कुछ इंक्लूड कर दिया. 25 लाख, 3 करोड़, 0.4% ऑफ टियर 1 कैपिटल. इसमें अगर हम बात करें बैंक्स की, टियर 1 बैंक है तो लिमिट है पर डिवेलिंग यूनिट 60 लाख, 1.40, 2 करोड़ एंड 3 करोड़ इन केस ऑफ टियर 4 अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स. दिस कैलकुलेशन इज ऑफ टियर 1 कैपिटल, तो कंफ्यूज मत होना. ठीक है जी, don't get confused. Residential mortgage maximum 25%, real estate 5%, previous overall cap was 10%. ये याद रखना, यहाँ पे 5% का अब relaxation दिया गया. Next question. Which of the following statements are correct regarding the RBI's 2025 amendments on inoperative accounts and KYC updations? तो अगर हम inoperative account and KYC updations की बात करें, banks they must transfer the funds from account inactive for 10 years or more into the DEF, which is maintained by RBI. Next is updating KYC through video customer interface is also allowed, or video call interface is also allowed. Low risk customers must be updated
KYC must be updated every 2 years. In case of low risk, it will be updated, every 10 years. For high risk, 2 years. For moderate risk or medium risk, 8 years. Self-declaration regarding no change or only address change permitted through the business correspondent. That is correct. Bank must update KYC records in CKYCR within 30 days. No, sir. Within 7 days. It's within 7 days, not 30 days. So answer will be 1, 2, 4. So B option is correct. 1, 2, 4 is the correct answer. Agla question देखो. Which of the following statement about strips in state government securities are correct? Stripping refers to the breaking of bond into principal and interest cash flows, creating zero bond coupon bonds. बिल्कुल सही है कि सर आपने क्या किया, एक तरफ प्रिंसिपल को अलग कर दिया, इंटरेस्ट को अलग कर दिया, प्रिंसिपल को अलग से आप लोन पे दे रहे हैं और इंटरेस्ट को अलग से, दोनों पे इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न अलग होगा. Reconstitution allows combining the strips to recreate original bond necessary to sell individual cash flows. ये सही है सर या नहीं? ये सही है या नहीं? So reconstitution is used to combine strips to recreate the original bond, not to sell individual cash flows. ये क्यों है? To recreate the original bond and it is not necessary to sell individual cash flows. That is not a case. Only state government securities with residual up to 14 years and outstanding of 1,000 crores are eligible for stripping. This is correct. Market participants can place stripping or reconstitution request directly in e-Kuber if they have state government securities. That is correct. इसमें कोई problem नहीं है. Strips in the state government security will have different ISIN nomenclature than that of central government. No sir, obviously it will have the same nomenclature as that of government security. So answer क्या होगा? Central government security. So answer क्या होगा? A option 1, 3, 4 are correct. 1, 3, 4 are correct. ठीक है जी. Let's move on to the next question. अगला क्वेश्चन क्या कहता है देखना जरा. NTPC $750 million loans external commercial borrowing. The company comprises a base issue of $500 million and a green issue option of $250 million. बिल्कुल सही है सर. NTPC is borrowing the funds. This is true. Bank of Baroda was the MLA for green shoe portion while HDFC arranged the base portion. अगर आप बात करेंगे Bank of Baroda, it is for managing your green shoe portion. This is wrong. And HDFC for the base portion. This is wrong. The loan is secured against NTPC asset. No sir, this is not the case. ECB will be executed through IFSC banking units in the gift city. This is correct. ये बिल्कुल सही है. अगला पॉइंट क्या कहता है? The fund raised will be used for capacity addition renewable energy projects. This is also correct. So answer is going to be what? So मेरे हिसाब से इसका आंसर होना चाहिए 1, 4, 5. So C option is the correct answer. C option is the correct answer. क्यों second और third statement wrong है? Is it clear? Is it clear everyone? 500 base है, वो तो सही लिखा है. But banks they will be opposite. ठीक है. अगला. Which of the following statement about credit excess Grameen $100 million external commercial loans are correct? External commercial borrowing loans are correct. तो आंसर क्या होगा? First, the loan facility is multi-currency, structured in US dollar and Japanese yen. So it is multi-currency. ठीक है. Standard Chartered Bank led the syndicated loan facility from London. ये भी सही है. Loan proceeds will be exclusively for refinancing extensive debt. No. Initial planned loan size was $70 million after upgraded to $100 million. That is true. This CA Grameen first syndicated ECB loan is microfinance. In the microfinance sector, ये जो credit excess Grameen है, it is the first syndicated external commercial borrowing loan in the microfinance sector. No sir, this is also not correct.
सो आंसर इज गोइंग टू बी ए ऑप्शन 1 to 4 आर करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स करेक्टली डिस्क्राइब फाइंडिंग ऑफ यूएनसीटीएडी वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट। यूएनसीटीएडी वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट की बात करें, फर्स्ट ग्लोबल एफडीआई फ्लोज in 2024 were reported $1.5 trillion, but after excluding unstable pass-through investments, actual FDI has shown only a decline of 11%. ये बिल्कुल सही है सर, दिखने को लगता है कि ग्रॉस इंक्रीज हुआ बट डिक्लाइन हुआ एक्चुअल में। Second point is with respect to India, India's FDI inflow decreased by 1.9% in 2024, yet the global rank improved to 15th position in case of inflow and 18th position in case of outflow. This is correct. Asian countries registered a 10% decline in FDI. Asian countries has registered a 10% decline in FDI, while China saw a modest increase. No, sir, this is wrong. Greenfield investment in digital economy nearly tripled between 2020 to 2024, with most flows concentrated in 10 developing economies. Correct. Despite a 28% fall in inflows, the energy and gas supply sector has retained its position as top sector by project value, contributing 14% of the total FDIs. This is also correct. So answer is going to be C option 1, 2, 4, 5 are correct. अगला क्वेश्चन देखो, which of the following statement with respect to priority sector lending for small finance bank is correct? Prior to the revision, small finance banks were required to allocate 75%. Now 75% of their A and B, C to priority sector lending, of which 40% was fixed across subsectors and 35% was flexible. Is this point correct? Is this point correct? Yes sir. अब कितना हो गया सर, अब इसको कर दिया 60%, 20% आज भी फिक्स है, सॉरी 40% आज भी फिक्स है, 20% फ्लेक्सिबल है। From financial year 2025-26, the overall priority sector lending targets for small finance bank has been reduced to 60%. This is correct. Under the revised framework, 40% remains mandatory, while 20%, that is correct. Reduction in priority sector lending target brings small finance bank fully in line with scheduled commercial banks whose PLS standard, no sir, scheduled commercial bank का तो 40% है। Non-achievement of PSL requires small finance bank to contribute the shortfall amount to RIDF, and उस RIDF के ऊपर NABARD will pay the interest, and interest will depend on your shortage. जितनी ज्यादा shortage होगी उतना कम rate of interest होगा, और वो rate of interest calculate होगा with respect to bank rate. I hope you remember. Consider the following statement with respect to supervisory data quality index. अगर मैं supervisory data quality index की बात करूं, as per the latest data, जो कि जून 2025 का डेटा है, उसमें जो ओवरऑल स्कोर है दैट इज 89.9 फॉर पब्लिक सेक्टर बैंक्स एंड प्राइवेट बैंक्स। पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट बैंक्स के लिए स्कोर जो है दैट इज कॉमन 90, और उसके बाद अगर मैं बात करूं स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए स्कोर जो है वो है 90.7 फर्स्ट रैंक, और फॉरेन बैंक के लिए लोएस्ट है कितना 89.7। ठीक है जी, याद रहेगा, ये ओवरऑल है। ठीक है, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट। अब क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन कहता है कि SDQI evaluates financial entities for on 4 parameters: accuracy, timeliness, completeness, consistency. That is correct. The framework is applicable to all the commercial banks. No sir, it is not applicable on RRBs. Entity with a score 80 to 90 falls under the category of need improvement. No sir, it does not fall in the category of need improvement. Rather, अगर आपका स्कोर 80 to 90 है, it is acceptable. 80 to 90 एक्सेप्टेबल है, 90 से ऊपर गुड है, 90 से ऊपर गुड है, 70 से नीचे मेजर कंसर्न है, और 70 to 80 नीड्स इंप्रूवमेंट है। सो SDQI रिटर्न्स ये सही है। एंटिटी स्कोरिंग बिलो 70 आर क्लासिफाइड मेजर कंसर्न, बिलो 70 आर क्लासिफाइड मेजर कंसर्न, ये सही है। सो 1, 3, 4, 5, फोर्थ क्या कह रहा है? SDQI covers returns such as this on large credits. अच्छा, थर्ड गलत है ना, ठीक है, तो 1, 4, 5, तो आंसर क्या बनेगा? सी ऑप्शन सही है।
145 आंसर इज सी ऑप्शन, दैट इज करेक्ट. अगला देखो. Consider the following statement with respect to RBI's extension of call money market timings. We all know that 1 जुलाई 2025 से 9 से 7 कर दिया. This is correct. Repo and tri-party transaction market timings have been extended till 6 p.m. No sir, it has been extended till 4 p.m. It has been extended till 4 p.m. Working group recommendation these changes was chaired by RBI's deputy governor. No. जिस वर्किंग ग्रुप ने इसे रिकमेंड किया, दैट वाज नॉट चेयर्ड बाय आरबीआई गवर्नर. इट वाज चेयर्ड बाय whom? Give me the answer. Trading hours for government securities, forex and interest rate derivative markets remain unchanged. True. Call money market access is limited to banks and standalone primary dealers with access to RBI's liquidity facilities. This is also correct. So answer क्या बनेगा? So C option 1, 4, 5 are correct. भाई नाम बताओ. Tell me the name. हाँ जी, any idea? अरे यार 2-4 बार बता चुका हूं मैं आपको, एक बार भी नहीं, 2-4 बार बता चुका हूं. इफ यू डू लाइक दिस मजा नहीं आएगा. ऐसे अगर करोगे तो फिर फायदा क्या हुआ? आरबीआई के एग्जाम में एक ही चीज इंपॉर्टेंट है कि जितना पढ़ा है वो नहीं भूलना चाहिए, जो नहीं पढ़ा वो तो नहीं पढ़ा ना. राधा श्याम राथो इज द करेक्ट आंसर. राधा श्याम राथो इज द करेक्ट आंसर, ये याद रखिएगा. चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े. अगला क्वेश्चन क्या कहता? कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू द एजेंसी कमीशन. जो एजेंसी कमीशन दिया जाता है किसे? सर द एजेंसी कमीशन which is given to the banks which are operating as an agency, तो उस केस में आरबीआई उन्हें एजेंसी कमीशन देता है. भैया आप यू आर वर्किंग एज एन एजेंसी, यू विल बी गेटिंग द कमीशन, as well as RBI provides them with this commission which is transferred into their bank account directly. तो ये सारे points जो हैं you have to remember it. Now moving on to the next point. एक सेकंड का समय देना. हाँ जी. So if I talk about this from the agency commission for pension payment is fixed at 80 rupees per transaction, but this implies only if banks handle both the pension processing and distribution and disbursement. This is correct. उसमें भी 12 plus 2 transactions in a year, ये भी याद होगा. A maximum of 24 pension related transactions can be conducted. No sir, 14. 12 plus 2. Stamp duty collection through challans is commission eligible provided the bank does not separately charge the public or receive payment from the state government. बिल्कुल सही है. Claim for transaction related to GST direct tax must be submitted only to RBI's CAS Nagpur. That is correct. No sir, this is wrong. It will be submitted to the Mumbai RO office. Penalty for wrong or overstated agency commission will be claimed
at a rate of bank rate plus 2%. This is correct. अब इसमें अगर आपको याद रखना हो कुछ कुछ वैल्यूज तो ये याद रखिएगा, 40 रुपए फिजिकल मोड, 12 रुपए ई मोड, 80 रुपए पेंशन ट्रांजेक्शन, 80 रुपीज पेंशन ट्रांजेक्शन, 7 पैसा पर 100 रुपीज फॉर द टर्नओवर वाला पार्ट. ये सारी चीजें याद रखना. ये इंक्रीज हुआ है, ये इंक्रीज हुआ, ये इंक्रीज हुआ और ये सेम रहा है. दिस इज समथिंग विच यू नीड टू रिमेंबर. जितने भी क्लेम्स हैं दैट विल बी सबमिटेड, सेंट्रल गवर्नमेंट क्लेम्स एट CES नागपुर, GST related claims at RBI Mumbai RO office only, state government claims will be requested from the concerned RBI regional office only. Deadline कितना है सर? Within 60 days from the quarter end you have to submit the claims. Next, which of the following statement about the Brand Finance India 100 ranking 2025 and its methodology are correct? इसकी अगर हम बात करें ब्रांड फाइनेंस से रिलेटेड, सो द फर्स्ट पॉइंट वी हैव इज ब्रांड फाइनेंस यूज द रॉयल्टी relief approach to estimate potential licensing revenue of brand. This is correct. Brand strength index measures only the financial performance of a brand at a scale of 0 to 100. At a scale 0 to 100, no sir. BSI measures the marketing investment, stakeholders equity, business performance, not only the financial performance. So this is wrong. Sustainability perception index captures the gap between sustainability perception and actual performance. This is correct. Next point says Adani Group topped SPX 2025 with highest sustainability perception values of 4.3 billion. No sir, it is Tata Group, not Adani Group. Zomato debuted in the top 100 ranking 2025 with brand value of $1 billion. This is correct. So answer क्या बनेगा? 135 is the correct answer. A option is correct. Last question from my side guys. बाकी अगली क्लास में करेंगे. जो आपका फुल डे मैराथन सेशन होगा उसमें 140 क्वेश्चंस ये वाले प्लस लगभग 160 क्वेश्चंस, या मैं कहूँ लगभग 60 to 110 क्वेश्चंस हम कवर करेंगे फ्रॉम एनुअल रिपोर्ट, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, RBI सर्कुलर्स, उसे इंक्लूड करके अगली बार मैं 200 क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आऊंगा एंड आई एम प्रीटी श्योर दे आर गोइंग टू बी हेल्पफुल फॉर यू. All operators of ETP must obtain prior RBI authorization and authorization is non-transferable. सारे के सारे ETPs को they need to take the authorization and authorization is non-transferable. That is correct. Scheduled commercial banks and standalone primary dealers are completely exempted from reporting requirements. They are completely exempted from reporting requirements. That is not correct. The minimum net worth of ETP operator is 5 crores. KMP must have at least 3 years of relevant experience. That is true. ETP operators must obtain trade data for at least 10 years and 3 years even after the investigation. RBI can grant exemptions, impose conditions or selective in authorizing new exchange trade platforms to ensure financial stability. That is correct. So answer will be 1, 3, 4, 5. So B option is the correct answer. ठीक है guys, that will be all. I hope मजा आया होगा. 160 क्वेश्चंस थे और सारे के सारे क्वेश्चन स्टेटमेंट बेस्ड थे, तो ऑब्वियसली टाइम तो मुझे ज़्यादा लगना ही था, बट स्टिल वी हैव डन गुड नंबर ऑफ क्वेश्चंस. बाकी के जो क्वेश्चंस हैं ऐसा नहीं है कि वो छूट जाएंगे, दे विल बी इंक्लूडेड इन द नेक्स्ट सेशन, सो नथिंग टू वरी. अगला सेशन आपका थर्सडे को होगा. इफ़ यू वांट आई कैन शेयर द PDF ऑफ द कंप्लीट 300 क्वेश्चंस. PDF में आपको पूरे 300 क्वेश्चंस की दे दूंगा सो दैट यू कैन रिवाइज इट एट योर लेवल. लेकिन बाकी जो 140 questions I will be discussing in the next session to go. If you haven't hit the like button yet, I would request you do like the session, do share it with your friends. I'll be catching you all in the upcoming sessions to go. Bye bye, take care, good luck. You can download the PDF of this particular session from my Telegram channel. And if I talk about my Telegram channel, it is by the name Economics by Madhav Arora, and even you can search by my handle, that is @Madhav Arora. ठीक है जी, क्लियर हो गया? किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो, अदरवाइज विल कंक्लूड. हाँ, अगर आपको
डायरेक्टली स्कैन करके ज्वाइन करना है टेलीग्राम चैनल, तो ये रहा उसका लिंक, यू कैन डू दैट। ठीक है जी, थैंक यू सो मच, गुड लक, गॉड ब्लेस यू।